Ladies and gentlemen, this is the Rise of Legends Season 3 presented to you by the Blank Esports. And guys, guess what? We are finally in the grand finale, and this is gonna be an amazing matchup because it's IGN versus Team LCF. What more do we need, right? This is gonna be two amazing powerhouses battling it out. But what's even more amazing? It's gonna be the caster deck tonight. As you can see, my boy Ash TZ looking so good onto my, this side. And there's Zevo, of course, whose electricity is there. I kid you not, guys. She's there. It's just her camera might be glitching a little bit, but again, she'll be back. But yes, Zevo and Ash, if you can hear me, how are you? What are your thoughts for this game? Tell me about it. I'm very happy. It's my first time in on cam, guys, and it's a very nice thing to see you all right now. And for the match, I mean, this is the match between the Ancient team versus the Rising Monarchs, as you mentioned, Shinryu today. No, 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 And Ash. It is we all know that. it is the ancient monarch versus the rising rulers, right? So it's gonna be really Okay, amazing, right? okay, the Rising Rulers and the Ancient Monarchs. We can say that a team from mainland and northeast are Hey, going to hey, clash hey, with each other today. I told you hey. I'm going to. Be careful Okay, about what you say, yes, but yes, again, yes. no, yes, and you know what? I mean, today, LCF error told me personally that this game will depict a lot onto the finals of White Feathers Arcadia because they were training a lot for that tournament, and they Mm-hmm. told that they will show the trailer today. Hello, Zivo. Hello, Okay. Shinryu. Mm-hmm. So, how are you, Zivo? What your thought on today's match? I mean, this is the finals. VO7 between LCF versus Team IGN, IGN and the OG LCF. Yep. IGN. We all know them. I mean, one Yes. of the team who is being there when the game was named as Mobile Legends, Bang Bang. So many legends were from those team, if we remember them, I7 and all. The man Mm-hmm. who just get compared with the Lemon, RRQ Lemon. So that team is right now being here, will be clashing with the LCF. What's your You thought know on what, that? guys? You know what, guys? Ash is more of a host than I am, right, Reservo? Yeah, definitely. I agree. He's more cut off to be the host. Yep. And please share your thoughts about the game, Zevo. What do you feel? Well, we all know IGN and LCF. They have been, in the scene for quite a long time. One of the top teams in India, and it's always fun to watch them play. They always bring up something out of the ordinary. Like Mm-hmm. when we finally thought that we already know everything about the team, they just bring up something completely different, right? And that is kind of a surprise element that we see, and they are always improving. Sometimes it's IGN winning, sometimes it's LCF winning, so it's Mm-hmm. kind of like really exciting that we are getting to see the two big teams again face off each other in this grand finals, best of 7, of course. So it Mm-hmm. is quite a big day for them and for us as well. Absolutely. And you know what? We need to find the all answers to our questions by diving into the game, right? So what's better the way than seeing the draft, right? And I kid you not, because team LCF, they have gotten the server, and IGN, they have the first pick, right? And this determines a lot, right? I guess the server is a main issue for teams from the northeast when battling it out against with the teams from the mainland, right? But I don't want to face. I mean, I don't want to term it like that. Northeast versus mainland, but it's just a factor. The ping can be an issue. However, we need to see how well they can, just fight against the odds. There's a lot of factors that's gonna come through. So let's instantly dive into the draft and see what it's gonna be and what heroes would they want to prioritize. But I think most of the times the game is just gonna just rotate around the meta a lot. So I think the metas is gonna shape this game as well. Definitely agree. Every in with the start of every single patch in the ML, new patch, new meta heroes come up every Rocks need single no time. So protection it from the is rain. quite gonna be revolving around the meta, but there are times when we see some off meta heroes, and those are usually like the trump cards that we see for both the teams. And there are still a lot of elements here. If we would be talking about for IGN, then it would be Mirio and his phobias. He just loved that phobias. And of course for LCF as well, they have their signature picks. So overall meta is there, but then again the comfort also comes. I mean, Magic is look at my that. life. IGN going for that Basha ban is just for the Rarin right now.
it's a totally Always respect on ban the onto the way. Raren side, but they should be knowing that Raren is not just being, I mean, Basha only. So many more utility junglers are there in his option, so they shouldn't have went for that Basha bans. I think so, because I mean, I when think. you have a Mm-hmm, big hero pool mm-hmm. jungler in front of your side, then The you should not Immortal take One care of chose him. me to You should take vanquish care the of other shadows heroes that like plague this Boo world. will be Suna will be a big threat to them if he will having the Sicilian into his hand. I think so. You know what? Most people they want to deny the heroes for which the other team is known for, right? The comfort picks as well. I think banning the Baxia is more of a ban onto the comfort side, whereas for Boo, he has a really unique hero pool. This time, he has shown us some heroes which have been, termed as off meta, and he has been still making it work, right? So I'm really excited to see which hero they would be picking for. Again, target bans are already there. Zevo, the Mathilda also being banned from the side of Team IGN at this point. Let's fight Obviously, to our and heart's content! Mm-hmm. yeah, and right now we can say that so they are ready for the match. They are going for the draft, and you can see the Suyu being banned is just a respect ban for the respect, we can say, from the side of Mm-hmm. LCF. And I always think that it's always the server which helps a lot to the LCF side more than anything else. And let's see what will happen right now, because this match really wants a lot of things from LCF as well as from IGN. IGN being a little bit sad right now because they got out from so many big tournaments due to some backlashes. But right now they're into the finals of this Sir, Rise of Legends what's your Season 3, command? powered by Prime Brook. I mean, Black Esports, powered by Yama Esports as well. Yep, yes. And you know what, Ash? Given the fact that they're putting a lot of respect onto the My tail's heroes, been itching they're for a banning out the real farce, fight. not the farce, but the Fanny as well as even the Shuyo onto respect. So you got to put respect on that man. And again, the first pick is gonna be that Kalea. So Kalea is really a new Experience the hero. Again, euphony of really suffering. lot of strategies opens up with that hero, but Butterflies it's just like born a by show, thy right? wish, You use that hero, guided lot of by pick of lantern's potential. light. But again, we need to see how they use that thing. But they give away the Zushin. What do you feel about that here, Zevo? Well, giving away Zushin, I mean, it's kind of a trade that we get to see among the big teams. Like if they're leaving the Zushin open, then they must have something which they are, they might have a plan about the Zushin since they left it out open. Maybe go for a high burst hero, which is our counter, of course. Time to So, drop the like, beat of the they might be flash. thinking that Zushin is not that much of a threat compared to the heroes that they banned out. So, or they might be going for a similar trade, maybe giving the Zushin, maybe playing some mind games. Yes, probably could be, but there's a joy to counter that pick right away, and also Badang. So, A punch Ash, for they're a really getting some punch! good heroes, and there's the Phoveus instantly being locked in as well. Yeah, I mean, right now, if you're gonna see some MPL PH bans and picks, you're gonna see that the most banned hero is Phobius, and the most picked hero is Harith in there. So, I mean, Phobius is right now winning lane EXP. If you're gonna see, I mean, he can just disrupt the backliners, and that's the most important thing you want in a match, because I mean, if you're disrupting the position of the backliners, it will help you a lot to engage onto them Among the and to planes take out some exists kills the in the ganks, because equilibrium, in the end which you I prioritize was the made gold most, for. because if you are farming the early section of the game, you can just jeopardize the Muscle whole of iron, late game as well. bones of steel. That could be the case, but again, with the second banning phase coming in already, some of the beefy boys are being banned from the side of Team Asian, whereas LCF they are prioritizing the mage ban. So, can you think they ban out the hero pool for which he's really known for here, I've Zevo? been waiting for too long. Yep, definitely. Which he is known for that Farsa. Mostly every time I've seen him play the Farsa, he plays it My out to mission her is maximum to protect potential. lives. And it banning out that mage is quite a big respect to IGN Witch, but he See does have value in quite a me? lot of hero pool, so I don't You think he should should. be having much of a problem picking out that mage, because I think his knowledge about mage is quite
vast, and it kind of plays onto his own game, right? So he can pick up almost any mage Where and there is use it light, to the max there are also potential, like we are shadows. seeing right now. The Luo Yi gets picked out. I mean, we're gonna be seeing some quite great diversion plays coming in from Witch. And not only that, it's really good against the Fredden, right? You I use the am yin yang reaction vengeance and he's pretty much incarnate. immobilized, and oh my goodness, they get the Moskov as well. So I like what I see so far. The Moskov can do so well with the split push, and there is the phobias to stop him, but I don't think so it's gonna be enough. But what do they do? What do they go for their, this roamer at this point? So that's gonna be a question here, and I feel Ash might have the answer to this. Let's see if Ash knows it or not. I guess Ash is pretty much not audible right now, so we need to wait for it. So how about Zevo? You tell us. Fight! Well, Fight for I the think ultimate Ash is answer! just waiting for the right time to pop back up. But yes, Yep. as we are talking about right now, if we look at the both the team comps, I think they are mostly just the meta picks and their counters, right? As you said, the yin yang reaction from Luo Yi is gonna be countering out that Fredrin, hopefully Phobius as well, helping Aishian out with taking control over the game quite well. And of course, we can't forget the Joy as well, getting picked up against a Phobius. Phobius is gonna be having the advantage, but still, it is gonna be playing it out all because the players, they have picked the heroes for a reason, right? So they are gonna be using it out to their full potential. Now the draws are complete. We just need to wait about the around the execution that they are gonna be showing us in game, right? Absolutely. And this is going to be Rise of Legends Season 3, the grand finale. And we're going to watch what happened because might be some technical issues that we are facing right now. It's going to be really backed up soon. So, guys, why don't we talk about much more about the draft that we Back towards the back line of your enemy. Oh, So yeah. if you are not careful, then you might just get picked up by the fishtail, and you might just be out all the way back. Man, I love how you put that. You're gonna be like, got taken by the fishtail, and you'll be like brought back to the enemy side with the diversion. And that's a really smart way that you actually like bring it out. What they are trying to do, and I feel that can actually be the case because there's so many possibilities, right? With the diversion, with the rest of the heroes, which can give us set potential, and even the surprise gangs that can go on from the back line. The grandeur is never safe, right? You're never safe while there's Zushin on the map. You can just teleport anytime, anywhere around the map, and boom, your mage is just vanishing, and you cannot do much about that because you won't have so much information where the Louis is actually using the teleport. So Ash, what do you feel about the draft? We haven't heard much from you so far. I'm having so much network issue right now, and that's the problem which I'm facing right now. I don't know why. I mean, not in the device, but from I don't know from what. Even I don't know. I mean, you're seeing my face or not right now here?
That doesn't matter. We can hear your voice and we love your voice, man. You can just tell us your thought. Okay, I mean, I'm asking you, you're seeing in Video Ninja or not? Because it's not showing in the stream right now. Therefore, I'm asking. Is something I can happening? see you, man. I can see you, man. Don't worry about that. But while we are driving into the match, this is going to be the first game, right? So why don't you guys take it away? I can hear your thoughts after the game, right? So good luck for this game, and guys, take it away. Thank Thank you you. so much, Shinru. So, looking at the game so far, it is gonna be the laning phase right now. The teams, they're just gonna be doing a little poking around here and there, especially the Boo on Zushin. She is gonna poke around that Loi quite a lot, and I think she kinda needs to, she needs to position herself so that she does not get caught up in that lantern. Even if it's the early game, she might just be getting taken down. But if we look at the map right now, Ash, they are Team LCF, they are already creating the pressure for IGN. Obviously, and we can see that. I mean, the draft is looking too great from this side of Team IG and Louis and the Moscow. There will be a great diversion as well as the combo of that Moscow Misery as well as Spear of Misery. And if you're going to see the attack speed from Moscow, it will give a lot of damage in the late game. And if we'll talk about the team, LCF, the Boo is having that Jushin. I'm kind of surprised that why he didn't win for the Sicilian, even though I'm sorry, I was not there in the draft due to network connection. Can you tell me, Zivo, is Sicilian was banned at that moment in the draft or not? Actually, I believe Sicilian was taken out. But, with talking about draft is quite pointless right now because the draft has been completed from both the teams, and right now it just comes back to the execution. So if we are about to talk about that, it is past 2 minutes into the game, and so far no first blood yet for either of the teams. So they are playing it out quite safe, and the turtle did spawn right now. So LCF, they are gonna be initiating for the turtle, but again we see IGN coming to contest the turtle, and there is a team fight starting, Ash. Yep, yeah, Turtle Dance already start from the side of LCF right now, giving a lot of CC to the backliners. Look at that. She just managed to stall that Kalea before, so that jungler Rarin will be easily can take the turtle out. I was telling you at that moment that no need to ban the Basha. You are just trading a big hero because Rarin have a great big hero pool in the utility jungler side, but right now yet no first blood, but they are going for the first blood, and it will be Moscow to be slain by the Jushin. The first blood of the grand finale goes to Boo. Asuna will be taking it, and in the meantime, in the middle lane, we can see a lot of damage coming out of the Rudy, but he will be fine. Yep, he will still be fine, but still, look at that respect. Okay, look at that damage coming from the Louis right now with the Ineng reaction. The Hilda, the Rudy will be disappeared from the match right now. I mean, even though the Joy's electrifying beat was a lot of momentum, made a lot of momentum in the match at that moment, and they managed to take one more blood for the side of IGN. It's their first blood, we can say. Yes, definitely. So IGN, they are not quite behind on the score, but still, LCF, since they got a little advantage in the in the starting of the game, they are gonna be leading with a little bit of a goal lead. But IGN, we can say they are following LCF, right? They are almost at the same goal difference. But look at that once again. The body slam is coming, but look at that Jushin with the Crimson Bacon going on to the backliners. The Kalea will be taken out at this moment. No backliners. It will be the frontliner to be diminished at this moment. And LCF is literally showing the trailer. They told me yesterday that they will be showing the trailer today. They're practicing for a big tournament, and the trailer will be done here. Death Sonata on to the mark. Stark TZ into the point right now. They're going for the third tier already. Yep, definitely. So giving Wu the Zushin, I think it was I would say quite a mistake from the side of IGN, because right now she is the one dealing the damage. She is the one, zoning out with her lantern flare, with her lantern just displacing everyone around, right? And IGN, they can't really do anything unless they have a purify or an immune skill. So it is going to be quite hard for them. But look at that, Rarin just takes on that turtle. I mean, just because of Romcom and the fish crack is coming from the Badang right now. 4-man SOD connecting over there. Kalea getting diminished at this moment. Hilda with the power of wilderness.
managed to take down the Kalea again. Okay, Zozen's Kalea is not working at this moment. Crimson Bacon into the action. It will be Death Sonata taking out the Louis and sending her to the heaven side. And at this moment, their jeopard is the jungle of Team IGN. I mean, the jungle is going, turrets are going. It's totally out of the hand from IGN in the first set only. Still, Already. Aaron, he decides to take a trade by popping out that bottom lane. So I think we all know how the game works, right? For at least the big teams, when they are having the early game snowball, they just like to go all the way out, right? Take over your enemy jungle so that they do not have that farm, so that they can't get behind you, get close to you. And I think LCF is playing out quite aggressive, because I think their lineup, they are quite playing it out well, because the Phobius is there, Zushin is there, Hilda is there. Three of them are quite the aggressive players, so I Yep. think they can definitely go all the way out. And Move once out from again, the bush right now. Look at the damage coming from the Badang. The Crimson Bacon will be the safer side for the Jushin. And look at that Phobius Romcom with his main, with his ace. Taking out the IGN members, eating them raw at this point. CC is being provided by this Fredrin to his lord to the Kalea. Kalea wants to be in the safer zone at this moment. Badang with the fish strike again with the wall, but he will be taken out at this position. It will be Kalea as well getting out from the map at this point. Two-man down? No, it's three-man down from the side of IGN again. yep, definitely. Score is in the favor of LCF right now. And if we look at the team comp of IGN, they are quite on to the single target pickup hero, right? Their tank Kalea, she can only mark one target at a time. So you have to be quite decisive as to which target that you need to pick. Maybe the main damage dealer, or maybe something which is really, really important in the game. Because without that, I don't think you would be able to win against any team fight. But once again, respect is down to quite low while LCF goes for the turtle. They goes for the turtle. They managed to take down the third neutral objective, and right now they're going on to the jungle side of the IGN. This is a very bad news for them because they're winning the jungle, but right now at a very bad position. SOD connecting over there, around the creator, about to come. The god is here, but it will be Louis, the witch, will be taking down the Raren at this moment. The jungler, after slaying the turtle, will be fading away from the map. Yep, I think LCF, they kind of made a mistake out by engaging more after they took the turtle. They kind of underestimated IGN and their damage potential. I mean, yes, they do not have much farm compared to LCF, but still they can pick off at least one of them, one of the members of LCF out. So they should not be underestimating LCF quite a bit. Like, look at Rudy here. Yep, look at Rudy here. She is providing the. I mean, Joan. I mean, she is the invasion type hero. I mean, perfect lineup. If we're gonna talk about LCF, they are literally with the perfect lineup. At that moment, I was not able to say that, but right now, it feels like they are. All of them are with their ish, and it's a beautiful thing to watch. Stark Easy and. I mean, IGNs are on the god. My two favorite goal laners are right now playing the match. With the being clashing with each other, and look at that again in a very very bad position. Aaron will be got caught off guard, and it will be a mega kill for the side of LCF's Pooh, and they're going with Kalea right now. Okay, Kalea will be there to save the Louis, which Yep, so right when we thought IGN was about to clap back, LCF just chokes them down with more and more pressure onto their side. And IGN, I think they can only depend on Aaron the creator, because right now I think he is the one who needs the most farm, while others create the setup that they need so that they are able to come over on top of LCF, right? So already 9 minutes have passed and the Lord dance is definitely there. IGN, they are wise. They won't be contesting the Lord right now since they are quite in the disadvantage. Raren will be taking that Lord, while IGN, they just go around the jungle, having to farm out whatever is left so that they are able to prioritize some team fights so that they can have a reverse, I would say a reverse kind out reverse pressure onto LCF.
Yep, and with this, the Lord is right now progressing towards the top side, and we can see that still there is a pressure in the lane from the bot side as well, from the side of LCA because of the goal lead. Look at that, 7K already in the mark, and they are literally going for the jungle also. I mean, at this moment, if you have any chance, I don't think so because the Hilda will again taking out the life of Zozen at this moment. Zozen is falling again and again. This is a very devastating news for the team IGN. Look at that, Blazing is up. Holy Blazings will help a lot to defend this Lord, but right now they are going again onto the mark. A lot of damage. Electrifying beats will be used to be in the safer zone. Minions marching down again. LCF having the time of their life bullying IG and right now putting all of the pressure that they can get onto their side. And if we talk about respect, he is playing quite safe on that Joy despite being at a server disadvantage. But look at that. Body slam, and again the Joy will be taking out the stack TZ at this moment. Zozen will be falling out again. Minions, okay, one hit minion if Romcom will be able to save at this moment. But look at that. I mean, they came back. They trying to fight back, but at this moment, Zero, I don't think there will be any chance they can retaliate. What do you think? So, can they? You know, this is something beautiful about having two of the top teams play against each other. Just when you think that there is no chance for the other team to make a comeback, they just pull out something out of their pockets, right? Maybe one moment is enough to turn the whole tide of the game. So even if LCF is winning right now, they IGN, I think they still have a chance of having that comeback against LCF because we never know how when the tide might turn. And I think LCF, they know, so they are not overextending any of the team fights, just letting the whole game flow onto their own hands, into their own hands, and just letting suppressing IGN little by little while not releasing the pressure at all. Obviously, and right now we can see that LCF is taking on the match with a very easy side, I can say. I mean, they are dominating from the beginning, and still they are keeping the pace on. They're not throwing it yet. But the thing is, what do you think, Zivo? I'm going to ask you something. Will it be 4-0, or do you think we're going to see the seventh set today? I mean, 4-0 is never, 4-0 is never exciting because we want to see the team crash out all the way to their maximum potential. Like, we want them to have a 4-3, right? So, I don't know if we will be getting to see here, but I do hope we get to see maximum 7. But yes, it also kind of depends on how the teams and their shapes are. But right now, LCF does take that Lord again, and IGN won't be contesting at all. Yeah, they didn't contest, and that was a good news from IGN because I mean, look at the farm difference. Look at the aggro coming from LCF side right now. If you're going to engage at this moment, you'll be losing your lives. It's better to stay at the base and try to defend the Lord and try to replenish the gold at this moment so that in the end, we're gonna see a fight back coming from IGN because they got the Moscow, they got the Louis as well. So they can use that late game potential. Look at that diversion play into the action fish crack and a lot of damage, but the Louis got caught off guard right now. The backline is in danger. And a lot of damage is coming from the side of the Ruti. And look at that, Badang will be taking out Raren at this moment. And it's Sodi into the action. Granger managed to take down a turret in the top lane. They're going with the minions to the base. A very gutsy move from the IGN right now. Crimson Bacon on. A lot of damage coming from the IGN at this moment. And look at that, they managed to defend the minions, but the Lord is still up there. Do you think they will manage to defend it? But look at that with the electrifying base, getting down that Granger, but a lot of damage from the Boo will be taking out Respect at this point. And look at that Lord in the base, double kill for the Boo, going for the Kalea. Will it be a triple kill? No, it's a mega kill for the Romcom, and Crystal will be taken down by the side of team LCF. The first set goes to the LCF. They told that they will show the trailer today, and they showed it. They got the server, they got the match, they got everything. Zevo, what do you want to say? Okay, Sunyu will be back again. Yep, Shinru will be back with us. But, before Shinru says anything, I wanted to say, like, in the last moment, that diversion,
we thought it was going to be playing out in the favor of IGN, right? But it did not. I think that was quite a huge mistake that they made going after Raren in on that Fredrin, right? So it when the Lord was marching towards your side, you had your diversion onto the opposite. So I think that was also one of the reasons why you were not able to get back onto your base at all. While the Lord was just targeting your base, three people were there, while the rest of the two they were just away. So it did not quite play in the favor of IG. And what do you say, Shinru? Like when I saw that they picked the Kalea first and they gave away the Zushin, right? I thought they had a plan. We talked about it in the draft as well. However, there was no backup plan because the Kalea could not do much because it was completely dismantled, right? The Zushin was completely on guard. It was not letting him to do anything that they want. Respect did not get the window to go in. There was no chance for him to go in aggressive, right? And the diversion plays, like we were talking about, were not there when it was necessary, right? They did not get most advantage because they were so far behind that getting back from that point would have required a lot of things playing in your hands. A lot of factors had to be going in your favor, right? And the luck was definitely that was not there for the side of team IGN. But again, this was a server for team LCF. They are much stronger in their own server, right? And side team IGN, they tried. The draft was really, I would say, on paper, the draft was really good. They had a lot of things they could have worked with, right? They had the good engage, they had good set potential, but execution was a bit lacking. Perhaps could be the MS the factor. That could be the question, or or like um, Ash mentioned, is LCF better? That is a question, right? They have been practicing, but Team IGN, they need to prove Yeah, themselves, right? They need to prove themselves at this point, isn't it, Ash? I mean, no doubts to IGN. They are the first finalist. They didn't lost anything. They won the upper bracket finals. They are in the finals at this moment. And look at the MVP. They got it, but it's okay. I mean, LCF got a server thing, and they played well. Not only the server, they played well. I mean, the Jushin pick was totally out of the syllabus. They should look after it. They should ban it, and mostly that phobias, because rom-coms ace hero is Phobius. You can't give him the Phobius. The Basha ban, trading the Jushin, trading the Phobius was too bad for them. I mean, they banned the Hadith, so I mean they can go for the Phobius. What if you can think that they could have a chance that the Stark TZ will go for the Hadith as well as Phobius? It will be dangerous combo for the side of LCF if they will try it in the next set. So Mhm. IGN should I look mean, after it. IGN is a very nice mhm. team. They should try to rectify their mistakes. It's just the first set. There will be more six sets, so there may be comeback from them. They are known as the Yeah, comeback kings. I Anything can mean, be don't happen. get me wrong, okay? I'm not trying to take away the credit from Team LCF, right? They are amazing players, amazing set of players, but sometimes the ping difference can also make a lot of difference, right? Because you are on a hero that requires very high skill set, right? And given the fact the delay can work against you, could be one of the factor. But again, IGN, they really need to rethink their draft, re-strategize, and just feel like what can actually work better for them this time around, because the first game is just the starting point. It's just a warm-up game. We talk about it, right? Because it's a best of 7 series. We need to see how the rest of the games would be going. But again, Zushin played amazingly well, I would say. Stopped the entire front line of Team Aichian, gave them so much pressure. And like Zevo mentioned, in the last team fight, the diversion play was the game breaker for Team IGN. That was completely unnecessary. They should have just defended it while they could have, but going for that aggressive play costed that game, wasn't it, Zevo? I mean, Yes, definitely. So, when we saw the Kalea and the Luoi picked out, we kind of assumed that the draft was gonna be in the favor of IGN. But like, let's be honest. Looking at both the teams' draft, they have quite the well matched draft, right? But it was the execution part where IGN lacked. Maybe they are taking it slow because it is a best of seven, so maybe they are just playing some mind games around LCF, maybe try to catch them a bit off guard. But it also quite means that IGN, they kind of gave away maybe a piece of their puzzle, because that Kalea and Loi might
see who knows Granger well, right? So that is, I guess, the plan for both the teams. Therefore, this is the Yes, best and plan. And you know what? We need to give the team some time to plan it out well, whether they want to juggle around the grandeur or whether they want to do something else, right? There's a lot of possibilities, a lot of options opening. And with that, guys, we will take a short break. It was amazing to have Ash TZ and Zevo for this game, but guys, the casting is just gonna get even more. Like there will be more varieties in the casting, so you gotta keep your eyes open for that. And we'll be back real soon, guys. Stay tuned. Don't go anywhere. We'll be back in a heartbeat, and that's a promise. We keep our words, and this is definitely the grand finale for Rise of Legends Season 3, presented to you by Blank Esports, powered by Yama Esports and NXM Gaming Association. So, guys, just go and refill your popcorns and whatever snacks you're eating, because the game is just gonna get even more intense from here on. And don't forget to hit the subscribe button, guys, and like the stream.
Yo, guys, welcome back, ladies and gentlemen, to Rise of Legends. This is the grand finals, and it is just the second round as well. We do have a best of seven, so it's gonna be taking really, really long. So, guys, stay tuned, like and share because this is the final. This is literally the final round for the teams here. It's going to be LCF and IGN. The first round was so beautifully well played by LCF. And IGN, as we all know, they tried to make that TikTok combo, which is the Kalia and the Luo Yi, but it did not work out. And the Zushin had been picked out as well. So, it just absolutely made no sense for IGN to pick out that combo as well. But here we go, ladies and gentlemen. The second round is going to be happening soon. And with me, I have our casters. That's going to be Peachy and Ray. So, hello, guys, ladies and gentlemen. Say welcome to Peachy and Ray Hey, hey, here. Sebastian, you did not Hello. introduce yourself. You should Oh, introduce yourself first. I mean, he's I, looking I, sharp as I'd like, hell. Look at him. I'd like to He's say looking they know sharp. me. I Oh, do okay. like to They know say you. they That's a know flag. me. So, All guys, right. what were your thoughts on the first? Because the Zushin is always the either the first ban or she's always made sure that she's in the first phases of the ban as well. Yeah, exactly, and she's not banned out in the team against LCF and IGN. So what happened? You know, one thing about Zushin is she, She's my just few wife. weeks ago, yep, we do see her behind you. She's yours, don't worry. Today, Asuna took it away for a brief moment, but I believe we might be looking at a respect ban coming in into this match. Now, one thing Hmm. about Zushin is either pick it or ban it. There's no way you can open it. Exactly. She had the highest ban rate all over the world just few weeks ago, and now Exactly. tonight it's 100% win rate. 100% pick rate as well. Let's see if what will Team IGN will do. Maybe they will be trying to capitalize it, which he's Hmm. highly, his hero pool is wide enough to accompany all those heroes that, Asuna also Exactly. plays. But, it was a little disappointing about the Kalia and the Luoi combo. Exactly. That was what I wanted to talk about. And Ray, please tell us. That was a beautiful combos that were played a lot of like in different types of platforms like YouTube and even TikTok as well. So that combo is really insane, but it just didn't work out for IGN. And I would like to ask you why did not? I feel like the main reason, Sebastian. I mean, oh, he's gone, but I will obviously answer him first. The thing is that I feel like could be a little bit of not having good enough synergy, practice, need a lot more communication. I mean, Zushin has been here for like what, six Sir, patches already. what's your So obviously command? they are much more polished. Kalia has just been released this season. So because of that, I feel like they are not that polished yet. They need a little bit more work around. But we're gonna be diving straight into the drafts. Thank you, My tail's Sebastian. been He's gonna itching be in for the a background real waiting for us. fight. But we'll be back with you You as know, we drive straight into the draft pick. Peachy, it's nice to be with you here. let's go, let's go. I want to see what draft Team IGN as well as Team LCF picks up. And one thing about Kalia as well, she's a newborn. She has just been like almost a week there, almost a week. Now, yes, as you have mentioned, The how Immortal One the players chose me have to to, vanquish the get shadows get that it plague very this quickly world. onto them, onto the Always MPO, on the onto the way. Snapdragon series. Yes, you might have seen them. They practice a lot. Come on, man. They literally pour your blood and sweat. But here, Magic they is have It's my so really little. life. focused. Yeah. So with And that draft going in, yes. I feel like right now the meta is it's a little bit of I mean the Hindi term is much better, khichdi. It's very messy everywhere yes, because Butterflies sometimes born you'd by see thy some wish, compositions that really work out well. I guided mean, by Zushin lantern's is a pick light. that works out 99% of the time, but sometimes it feels like that 1% is against you. But that was yes, probably what the other team was aiming for with that Louis Kalia, but it did Experience not the come to fruition. euphony of So I feel like suffering. if whatever they are going to be doing, they have to watch out for. And of course, this criminal, I call him criminal because this guy has not been nerfed yet. He has dominated 2 whole season, and this guy yes. still hasn't been nerfed. This Granger might just be the Death Sonata for the hands of IGN, but since they gave the Granger away, they probably have a plan. Once again, this is the second time
Last first A game, yes, we punch did for see a how punch. it was into the hands of Bonvita guy. But again, this way around, IGN are not giving up the EXP laners. Understandable why. Romcom, very good EXP laner. Arguably My the mission best is EXP to so far protect in the lives. Indian scenario. So let's just see Oh, how bold. they will be moving around. But IGN with the tanky picks already prioritized, that means Team LCF, they might be forced to pick up a Gato. Yeah, but definitely. Picking up the Godot Kacha would basically eliminate the chances of a Eve as well. Or Yeah. maybe it's Team IGN playing the mind games to get the Eve into the hands of LCF so they can come in with a counter pick because, of course, Rocks need there's no respect, right? protection His main from thing the is Assassins. rain. Oh my god, LCF is also pulling up with the Bucks here. Understandable counter for the Hylos, but the reason I wanted to mention is the thing is that, Granger, his thing is that he is a skill shot, right? He cannot hit Yes. the back line. He needs to hit the front. So IGN is obviously going for the textbook counter for that. But it does come at the cost because if the Granger gets fed, this Hylos is not going to be able to sustain any bit. Phobius maybe a little bit more, but Yes. could be a little bit more chunkier, right? But overall, we'll still have to wait out and see what the rest of the picks is before we make a decision. But LCF is coming up obviously strong, but we're taking a slow Let's hear from approach. the It's the crowd. best of 7. Make some Anything can noise for happen. It yours can be 7 truly. games. I don't think it's going to be a clean sweep though. No, come on. Both the teams really did a lot in the Swiss stage. The performance was incredible. We did see a lot of challenges up for them. We did see how Zohunt was the one. Let's not forget our team Sentinels as well. They performed very well. They were almost, I still remember the one Swiss stage. IGN were up against Sentinels and they went away with 2-1. IGN 2-1 Sentinel. So that is one thing very good. But coming I've back to been the draft, waiting for too Raden with the long. classic picks, Bakshia. His Bakshia can never go wrong. Yeah, understandable, of course. It's his specialty, especially Only because love Baxia is and considered one night of those heroes are that has not been like everlasting. meta for like very long, right? The last time we saw it was like M4, M4 series maybe. Yeah, it's been very long. But recently, the adjustments into tank items does make him a little bit more viable. A lot of teams have yet to realize it, and I think Raden cracked the code. But if it's cracked or not, he has to know because he has a turtle shell, and Carry just might be the spear to poke it through. Because look at that. Already we are seeing a lot of HP based and HP based damage dealer on both ends. The carry for the melting of Baxia and CC for the melting of the Hylos. So it's going to be interesting how they're going to be counteracting with each other, Light me especially up and watch into the the ganks because world CC burn! is a single plus duo target, right? But Yes. carry is only single target. So that Agree. could be a little bit of a weakness that LCF can focus on. And one more thing is looking at the draft so far, this is just like the 50, 60, 70, 75% of the draft that we are looking at. Now that Yeah. team IGN wants to play around the mid game to the late game, works out very well, but holding the early game. LCF is one of the teams who loves to capitalize the early game. No matter what, even if they lose one little buff, one little creep, yet they are the ones to capitalize the early game. Unless Among the Team planes IGN really exists picks the it out as equilibrium, a early game which strategy, which I I'm was not made seeing as of for. now. So maybe onto the jungler or maybe onto the mage, Mhm. something like a Vexana. I want to see a Vexana with I feel like the Eternal Guard gives a little bit of a bulletproof thing for avoiding the Granger's bullets, because you can put your Yeah. Eternal Guard in front of you. Funny enough, I feel like that is a composition that was it Zohunt? I feel like I forgot the team, okay, but Yes, someone did that. yes. Yeah, It's they Where did there that. is They basically light, had this same there are composition. Yeah, also they had the shadows. basically the whole reason they picked up the Vexana. We were doubting the Vexana, but the whole reason Yes. was the Eternal Guard to be a sponge to take the impact Payback of the Granger's bullets, time. and they were able to do so. But of course, IGN is just going to be going with the classic Farsa. Understandable why, but I mean also. This is what do you say? This is a jungle. I forgot the name. How can I? We were just talking Boxia. It is jungle Boxia, so it's a very high chance that backline reaching is going to be difficult. But oh my god, there's the Let's hook play coming in. together. It's like okay, which you picked up a hero thinking there's no backliner. Okay, the backliner is here. It's going to Yes. be the hooker Franco, and they're coming up with a Changa as well. 2 HP melters. A lot of people don't Yes. realize, but after the Radiant Armor nerf, Changa melts HP like Yes. it's really smooth. It's like smooth like butter.
Looks like LCF are definitely taking advantage of the new patch. It is Absolutely. showing. It is definitely showing. I really love it. An unexpected pick for Team IGN. Now that Team IGN are thrown off guard. They have to pick Yeah. a Time to jungler. drop the Last beat of pick the jungler, flash. it's a very good. I was expecting a Joy. Yes, I wanted to Yes. see something like a Hayabusa or a Joy, something that could reach the back line, something could get the mobility. But picking a Joy in front of a Franco, in front of a Bakshia, there is stuns. There's so much damage. What is it going to be? There's a lot of stakes for this Joy. Absolutely right, Peachy, because it's gonna be an interesting game because this is just like I mentioned before, it's a slow approach. It's not a best of three. It's not a clean sweep. Sebastian is in the background. Okay, it's not the complete darkness. You just can't see him, but he's with us. He's with us. But till then, I feel like both of the drops are good, and I feel like. I gotta give the win to LCF though. They have the more creative approach, picking up the Changa, the Franco. It is definitely looking a lot more unorthodox, but also very reasonable. Back laners are really comfortable. The Change, the CC, as well as the Granger, I believe they do have enough manpower to give the damage. Now it depends how LCF picks away the early game for themselves. Now into the land of dawn. Here we go, guys. The action is just about to begin, and the mid lane pressure right on time. Now, you know, I am really doubting the Changi pick. I'm not sure. Even though that little buff on her, I'm really not sure. It's gonna be difficult, right, because of the lane clearing. But anyways, as you can clearly see, it's game number 2, ladies and gentlemen. LCF and IGN. Let's see how it approaches. It's a best of 7, so it's gonna be a long night, and you're gonna be sitting here. So get some popcorn, get some water, stay hydrated, or maybe get Coke if you're into it. I'm into it, but yeah. Overall, looking at the laning phase, we can clearly see, of course, the CC is gonna be winning out the laning advantage. Mirio is just buying out time, but we'll have to see how the game works out, right? Overall, though, jungling speed, Joy and Bakshia both are kind of 50-50, but Mirio, that was really close. Too close for comfort. Okay. So far, no first blood coming in. We might be looking at the same around the jungle area. Raren, he needs to take down the turtle. The LCF is one team that really loves to contest for it, and okay, respect into the middle lane, electrifying beats not quite there, almost, but looks like respect wants to play it slow. Yeah, I mean, it has to be a slow game, especially considering the fact that they have Aaron the Creator on the carry. That scaling up is going to be mattering much more into once he has the Trinity build. The Trinity build is what's going to make him go from like pew 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 to brrr, because the damage is going to be really high. But turtle spawned, really nice production here. Nice to see. But yeah, turtle spawned, and LCF has a little bit more ground clearance, but Joy can come in any second. Let's see if it's going to work out, because look at that, which is positioning. Better watch out. Oh, look at Romcom once again into the backline, but Raren with the perfect retribution gets it. Respect looking quite low, has to pop the electrifying beat to get the little bit of a movement speed, but okay, Bloody Hand coming in onto Mirio. He will be the first blood to fall down. Respect looking quite low. Witch looking quite low. What is it going to be? Oh my god. Rudy with a flicker and a hook onto this Fasa. And he will be taken down. That's 2 kills already. 2 kills into the board of LCF. And the turtle, so far, just like you mentioned, early lead, obviously, into the hands of LCF. But we have to watch out, because how long that lead can be sustained, maintain the momentum, the tempo, all of that thing is going to be mattering a lot. But having the Franco basically is an insurance that if Respect does a lot of funny business, they will just be able to flicker Bloody Hunt and go into him and take him down, because Franco is basically an easy shut down anytime you need, and that's something that they would need to watch out for. And okay, Sojan already baited out the Revitalize, but I feel like that is just warning shot. That is just warning shots. No engages. That was quite early, but Romcom, look at him. He's able to, freeze his lane. He's able to give a competition for Mirio. Makes sense. It is. Overall, though, I feel like Romcom, he is a good XP laner, but having the CC is really putting him in an advantage. But until Mirio gets a few more defense items, Romcom is going to be into the lead until he gets chunkier. But if he gets chunkier, the CC is going to get more damage. But there's a hook connecting, but it's not enough. But Bakshia coming in from the back. Do they want to go in? Do they want to commit?
No, Boo with the shower, meteor shower already, but Romcom, he is looking quite low, but dodges. Respect will be dodging it, but Zaujan unfortunately has to go down. So much damage, there was a glorious pathway helping it out to run away, but no, it wasn't enough. Rudy in a bad position. Romcom is there, but he's not revealing his position. That means he can be alive and take down minions on his hands. And Rudy getting taken down there was not big of a trade, right? He just had 3 assists, and he's a roamer. So that's no issue for Team LCF. They still have the lead, as we can see, 2.1k goal lead. Oh, 2.0 into the hands of LCF. But right now, looking at the Turtles' positioning, Oh, looks like they have a little bit more. But into the top lane, it's just, Stark and yep. Aaron just beefing up a little bit. But Baxia looks like he Aaron. wants to go for a little bit. The hook misses. Oh, he does have his ultimate, but okay, Zaujin once again looking quite low. He does have his revitalize now. I believe the last revitalize he popped, it was quite early. He could have waited for a little bit, but LCF once again with the early game. Mirio onto the curtain call. Look at them. The Federer strike dealing so much damage right from the backline. But Boo was able to get shower meteor on them. Now it's looking good for them LCF, definitely. But Team IGN, they have to steal it up. They have to steal the momentum anytime soon. And I think it's not going to be happening at least until the 12-minute mark, because Aaron the Creator needs to come online, and that's basically the moment they can get the green light signal to go for it. And right now, Witch is just going to be looking for the Oh, angle to just use up the ultimate. So, Aaron, better watch out, because you're going to oh, be stuck, sandwiched, and you're gone, smushed. But look at there. Orange Rudy. off. Once again, with very low HP, Mirio onto the backline, dealing so much damage, but Radem gets the kill. One last hit for Romcom, and there we go. It's looking quite good. While Respect, he knows he cannot do anything in a team fight. Even if they accept the invitation from LCF for the team fights, that was the result. That was something you have seen just few minutes ago. One thing about this is Rudy getting it. He's taking in so much damage, but he's always leaving in 1 HP. And looking at the pace of the game, it is actually really impressive how much early snowball that Team LCF has really gotten. It's a change of that hook, and Sojan also gets taken No down way. immediately. The score is 7-1, a goal lead, staggering 5,000 in just 7 minutes. Team LCF really showing their dominance and prowess over this game. And another hook. Mirio No. won't survive it, does he? Yeah. Oh, okay. The Winter Crown is already here, but looks like Mirio looking quite low. Rudy will be taken down. There's like 1-for-1 trade so far, but Stark Easy looking quite low. What is it going to be? Which just run and picks it up, and one by one members are falling down. That's a lot of damage. Now LCF are the ones who picking up this trade. 2-for-3. Looks like they have reached towards the Nexus and trying to take down the tier 2 turrets. Yeah, it is actually really impressive. IGN is getting overwhelmed like massively, and it's not looking good for a simple reason. But Respect wants to go in for a solo kill and gets it, so it's gonna be a positive trade. But Respect, better watch out. What are those moves? Oh. He's not surviving. Romcom. Okay, I really have to give 1,000 aura for the turtle, okay? Look at him stomping around. He needs some attention. And like one thing about Romcom is when his turret is down, he knows what to do. He knows to come through during the team fight. He knows, look at them. Now team IGN are playing around Aaron the Creator. They kind of realize that the only saving grace is Aaron, but it's quite too late. Zaujen going in. He made the invitation for the side of team LCF, and oh my god, which gets hooked in with the bloody on onto him. He will be taken down. Stark is dealing so much damage. Mirio onto the backline. Stark looking for another kill, but that will be the Baksha who picks it up. And the Creator all alone. I believe Romcom, he will be trying to capitalize as much as possible. Now Rudy on the hunt for the scary. And look at that, score 14-5, and the goal lead is still a staggering 7,000 in just under 9 minutes. LCF really doesn't want to lose the momentum of the game that they have carried, and the snowball is actually impressive considering it's not an assassin, it's a tank jungle, and they made it work. Because of course the tank jungle was their initiator, and Rudy with the backup, with the hook, having that aura around him.
I mean, Franco's main thing is intimidation, okay? It doesn't matter Yes. if the hook's gonna land or not, but you have to watch your step. You can't get hooked because if that's gonna happen, your teammate's gonna call skill issue. But oh, look at that. Solution really wants to go in, but doesn't really find the angle just yet. But oh, the damage. Which with the air strike dealing so much damage, but he will be zoned out. Rhapsody is dealing damage right now. Look at them. Look at them. They have a little bit of a range which Team IGN lacks. So this is actually posing a challenge. Now, there should have been a CC ban. They should have taken it right from Yeah. the game number one, because IGN are well aware that Team LCF, they have a RAR, and he mainly prioritizes the jungle. He may be picking up a Xbox or maybe a Vakshia, or something on a tanky note. Very rarely you will be seeing, if you force him onto playing a assassin, I believe Team IGN can take the game away, but as of now, it is into the hands of Team LTF. Looking at the items, stuck with the, Sky Piercer already. That's bonkers. Yeah, and he's gonna be able to stack it up. And I really like the fact that you mentioned the range thing. From the hands of Team IGN, the only range that they have is obviously Witch, and he's a very vulnerable mage. The other one is Joy, who really needs to be in the face up front to dish out the damage. But it's not possible because of the fact of the Rudy just having that presence into the map, and they really want to avoid that. But oh, looks like that's a green light. Carry does have the damage. Is it gonna be enough though? Winter. Oh, the damage is here now, which thus gets a kill. But Saujin, the Rewardless, will be helping him to survive. Now, that was a little bit of a good damage, but the Lord is marching in. No passive from the top lane. Passive's already blown. Now, that means, bam, the Lord's in. Lord's in. And looks like they want to go in for a little bit more. Oh, what is it going to be? What is it going Rom-com. to be? Okay. Oh, respect! What a game! He does gets it, but Godlike picked up by Romcom, and that Aaron the Creator gets a kill. Next on Momentum. the block, it is the Roaring shut down onto him. That means Aaron the Creator is farming up, but at the 11th minute of the game, I was so damn right. I told you right. He's gonna come online at 12 minutes, and he did. I can read IGN like a book. I should be their coach. But yeah, jokes aside though, I feel like that was a little bit of a choke. A little bit of a choke coming in from Team LCF. After, I do understand they wanted the inhibitor, because obviously that's okay, IGN. That is a mistake from their end as well, because they're gonna be losing a lot of health into the bottom, and the mid is also gone. They kind of get the base, but they get the shutdown, right? And that basically means that Ander Crater has come online, and he's going to be able to dish out the damage to your frontliners, which is basically first Raren, second Rudy, and third Romcom. If those three are taken down immediately by the damage that's coming in from Ander Crater right now, they're going to be facing a lot of difficulty into the next stages, because Boo has a lane clear, and so does Stark. But how much? How much can they defend, right? If their frontliners cannot really frontline. agreed. LCF high on the HP, but Raren testing the patience, He just waited off, but I believe they're trying to go in. Romcom goes in with a curtain call. Thus gets connected with Respect, who are unable to go in. Revitalizers here, but no. Will they be able to survive? And no, unfortunately, that is Nice. one bang onto Zaujin. That snipe was tasty, really tasty. Nice. It's nice to see good snipes. I mean, I kind of miss it with the new Granger, because back then the Granger snipes were much more fruitful. But anyways, the score sits at 7-9, and the goal lead is still 5k into the hands of LCF. IGN were able to climb back a little bit with that initial shutdown, but they do lose out two of their inhibitors. Third one also looking in a blink, and that's not gonna be looking good, because look at that, the Lord ground cover is just so much into the hands of LCF, because they don't have the frontliners for IGN. Oh, Rudy, that was close call, but overall still, score 7-9. The goal lead is just gonna be climbing, but this is where it's gonna be mattering a little bit less. But Stark does get the rose gold, make sure it doesn't get bursted out. But IGN, what is gonna be a response? Commit now? Oh, they're going in. Look at that. The Glorious Papa is slowing them down, but Aaron the Creator picks up a mega kill, which is there to stun it up. Saltizi gets stunned up, but look at them. Now it's a 1-for-1 trade. The team IGN, they know they cannot, afford to take more kills. Exactly.
And losing Raden at this point, it doesn't matter. He did his job. He's basically a tank jungler. His job was to initiate. His job was to be the brick wall. And right now, it's done. With the Lord marching in, the score sits at 8 to 10, 14 minutes. Can IGN defend this? Oh, look at that, look at that. Lord still has some kind of HP. The glorious pathway is there to stop them to coming in, but at the same time, the minions is going to be a concern. And 45% of the base already blown out. That's a lot. Yeah, but it's going to be able to regenerate slowly. But the main concern, no inhibitors. Every Lord that LCF is going to be taking, it's going to be a death sentence closer to the hands of IGN. And, the score would just go again into the hands of LCF. So they need to watch out. I feel like they are kind of like losing the game because I feel like they are relying on Aaron a little bit more Yes. than needed. I feel like it's a little bit Agreed. too much reliance, but at the same time, they have made it work before. I do trust them, but the thing is about, is it too late? Because the whole map control no longer in your hands. Have to bite the bullet and play from the base. Can't really go out for any kind of backdoor either because you're not in a position to do so. Instead, you have to watch out for sneaky plays from Romcom or Stark TZ instead. Lord's gonna be coming in 1 minute, and they need to come up with something, cool down their heads, and think of a possible way to clap back this game, or they're gonna be losing out. But oh, Rudy! Okay. He's positioning. He wants to go hunt some one onto the side of Team IGN, but Zaujan once again beefing so much, but he's not able to take it. He will be taken on the Skype, so he's really helping it out. Muriel with the onto him. The bloody hunt will be there now. Team IGN are losing members one by one. Miraka, look at the him. damage! Look at him. Yes, that's what I'm talking about. There was just one more detonate onto him. He would have been down, but which right on time, right on cue. He gets the flicker, but at the same time, respect fends them off. But the minions are pouring in. Mid lane is already here. Romcom looking quite low. Romcom? Aaron, the creator, he pops his wind of nature, but he will be shut down. Look at that damage. Oh, At this point, Aaron picks up immortality, and with that, that's like 3 members down. Is it an easy load for Team IGN? 3 members down. Raden would be up. So that does mean that Retribution competition is still up for the debate. But at the same time, the damage coming in from Aaron the Creator is something that they cannot neglect anymore. But Rudy providing the vision, and Sojan, he really needs to watch out for that. Really needs to make sure, Sojan, you need to check that bush. Because if not, you're going to be in a lot of trouble. But let's see. Lord getting melted down. Oh. The hook doesn't connect. Okay, the melting is Raden! coming. Raden! He has to make the play. He has to come and he get the Lord. He dies. full But at the wipe same out. time, it's a wipeout. Romcom comes in at the right moment, but the minions, that's too much minions. They lost a lot. Team IGN has to go back on defense. They have to go back on defense, but at the same time, they have a little bit of a different idea. They can take a few turrets, maybe get the inhibitor at least, but of course, Stark is going to be dishing out the damage, trying to clear out the waves, but we'll have to see. 1 minute. Is it going to be enough? Oh, I feel like the oh, inhibitor will fall at least. oh. Yep, inhibitor will fall. But Lord. Oh, Romcom. Look at that. Now they Oh, are Joy. on. No way. So close. No way! The Lord will be taken down, but Team IGN did capitalize onto the mid inhibitor. That's a very good thing. Now they can farm up comfortably. Now this is why it worked. It was a very good trade, but Raran, that was too much of a risk. Getting the Lord, funny enough, it did actually buy out their time, because if the Lord wasn't up, I feel like they would have completely lost out the inhibitors. I don't think Stark TZ would have been able to defend that. So I feel like that Retribution sale was actually 100% worth it if you look at it, because they're able to completely, bounce back from what just happened. And Romcom is looking for an angle to find in. Oh, Rudy, that might have been a mistake, but the minion wave's gonna be cleared out. Team IGN still buying out time at 18 minutes in, 21-16, and goal lead is not gonna be mattering, as everybody's gonna be getting their full items at this point of the game, because 60,000 on both ends. But look at the map, look at the control. Both of them do not have their mid inhibitors, so the contention is pretty clear. But IGN doesn't have the side ones either. Better watch out for any kind of wave management coming in from LCF. Because that's the issue. Once you're into the back end PT, you have to constantly recall back. You cannot be into the team fights too much, because you better watch out. Agreed. And
Now the team IGN has to play it on a defense mode. If they go on attack mode, it is Zaujian falling down first, Mirio going down next, which if he's got off guard, that's how the game would be going. It is a vicious cycle as of now. It's been repeating every single team fight. Let's see if Team IGN can make up an invitation as of now. Zaujian scouting for bushes, making sure he gets enough vision for his and his team. But Team LCF, they are growing up. Look at them. They just, pinpoint the location while Team IGN are not giving up the location. So that's one thing to look out for. But river area control already into the hands of Team LCF. The thing that I'm interested in is to say that Franco's one weakness is that, of course, it's hit or miss. But right now, the main thing is that they can overwhelm him. They have a lot of damage to overwhelm Franco as well as Raren on this Baxia. And I feel like that's the only positive way they can go for. I know Boo is causing a lot of trouble by dishing out the damage with that, you know, that ultimate. I call it just machine gun because it's literally a machine gun. Okay, look at the fire. It's like a rainfall. But oh, the conceal play is there. They're looking for Boo, or are they looking for Rudy? Oh, yeah, The look Lord. at that. Rom-com, the law looking quite low. Raren picks it up as usual. Now, Oh, Stark. wait for it off, but the Stark looking quite low. Look at that. Oh, Oh, my God. What just I knew it. happened? This is gone. I've been telling you, right? I have been telling you they need to watch their base. They need to watch their base. There is someone who's going to be aiming for that back end, and that's what we just saw. That's exactly what we saw. They were not prepared. They were like, we have detected Stark TZ. We have detected Romcom. So there's nobody who's going to be doing the back door, right? So they really thought it's going to be okay. It's going to be all right. But it was not. They did not pay attention to Boo. Chang'e just has so much attack speed that she was able to end the base with just a one minion wave. And I feel like that was close, but still, LCF had the game from the minute one. Agree. One advantage they ride on is the early game. And I hope, Sebastian, are you there? Did you enjoy the match? Oh man, hello. Actually, yeah, I did. It was so bloody fun, and I was thinking about how well the first hooks were by Yes. by Rudy, and it worked out so well because Vich kept on being pushed out of the way, even though he has a lot of range for because it is Farsa, the feather airstrike is going to be having a huge ton of range, but that hook has a certain range and he always gets it on time as well. He always makes sure that he was always picked and locked out, and he did get a few which worked out pretty well in the in the early game. But the late game was when IGN truly shined out, but it didn't really work out because Ray, just as you've said, the Chang'e was not kept in check, and she was the one who ended the game. And which I really thought maybe IGN, they're really good on their late games. I would have to give them this. They're really good with the late games, and they were actually coming back on their feet. But Yeah. LCF had a different plan, and Boo just completely annihilated that base there. And I felt really bad because they could have definitely won that round if Respect wasn't really looking too much on the kill to Miraka. But I think that was fine. Yeah, that was fine. But yeah, the response did come in because Respect was the first one to go back to the base, but it was just not enough. It was already 30% health left, and that is basically to enhance basic attack from the Chang'e, and it came in at the nick of time. And I feel like it was a close neck game, just like I mentioned. IGN was able to bounce back quite a bit, but at the same Yes. time, I've been mentioning it, Peachy, I've been mentioning it from the minute one that once you lose out the base, the inhibitors, it's basically very close to losing game because if you do not keep the lanes in check, you're gonna get backdoored. One thing is how we did see the changes about the Lord as well as the minions. Since before you used to be looking at games going out till 20 minutes, 27 minutes as well. Now it has decreased tremendously. You're talking about the decrease around 5 to 6 minutes earlier. So with that, the minions are also amped up. That is definitely a problem. Team IGN did not look at it. They need to make sure, they really need to, because the base was wide open. It was just a hunting ground for Team LCF.
So, guys, with that, oh man, that was one hell of a round though, because they could have made it a really awesome thing as well. But, guys, stay tuned. The third round is going to be happening soon. And will it be IGN getting back on their feet, getting the next round? Or it's going to be, LCF taking them down once again? This is Rise of Legends. We will be going on a short break.
स्वागत है देवियों सज्जनों आप सबको प्राइम ब्रुक यानी कि राइज ऑफ लेजेंड सीजन 3 के इस टूर्नामेंट में जो पावर किया गया है प्राइम ब्रुक के द्वारा, ब्लैंक ई स्पोर्ट्स के द्वारा और यामा ई स्पोर्ट्स के द्वारा। तीनों ई स्पोर्ट्स मिलकर इस सुनहरे टूर्नामेंट को लाए हैं और आज जो है सुनहरा मैच यानी कि ग्रैंड फिनाले, आखिरी मोमेंट जिसको जीतने के लिए तड़प रही है दो टीमें। और ये दो टीमें पता है कौन है? एक है हमारी IGN जिसको हम बोल रहे हैं द राइजिंग मोनार्क, नहीं राइजिंग मोनार्क तो वो नहीं, राइजिंग रूलर है LCF, यानी कि वो नया सम्राट जो है वो बनने वाला है, जीतने वाला है यहाँ पर। या फिर जो पुराने साम्राज्य को संभाल के रखे थे, 2019 से अपना नाम बनाए थे, जिनका नाम में बहुत सारे लेजेंड्स का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, जैसे कि I7 जिनको RRQ के लेमन के साथ जो है कंपेयर किया जाता था उस टाइम। मोबाइल लेजेंड्स जरूर मोबाइल लेजेंड्स बन गया, लेकिन ये टीम जो है अभी भी बनी है, अभी भी मतलब रही है इस जगह पे और अपना नाम बनाने के लिए तड़प रही है। इस फाइनल्स में अभी तक एक छोटा सा इंसाइट अगर दूं तो ये कुछ ऐसा चल रहा है कि LCF ने 2 मैच में मात दे दिया IGN को। ये तीसरा मैच है और अगर इस मैच में भी LCF मात देती है तो LCF सीधा खुद को ड्राइविंग सीट में नहीं बल्कि पैसेंजर सीट में मिलेगी देखने के लिए। और IGN को इस मैच में जीतना पड़ेगा, कमबैक करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मेरे इस कास्टिंग डेस्क में आप सबको मनोरंजन करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे दोनों प्यारे प्यारे भाई, एक जिनसे मैं हिंदी कास्टिंग सीखा हूं और एक जिनके साथ मैं हिंदी कास्टिंग करता हूं, SM भाई और जय भाई। थैंक यू एसटीजी भाई, आपने इतना अच्छा सा जो है इंट्रो दिया, इतना अच्छा खासा जो यहाँ पे हमें मैच की जो यहाँ पे दर्शन कराया कि बहुत अच्छा मैच यहाँ पे अभी जो पैसेंजर सीट में बैठने के लिए जो LCF का मौका है वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो SM भाई क्या लगता है आपको जो इस मैच में जो होने वाला है, जो अभी जिस तरीके से LCF 2-0 के से आगे है, क्या लगता है कि इस मैच में IGN जो है कुछ जादू दिखाएंगे, जादू दिखाकर जो यहाँ पे कभी ना कभी जो एक मौका मिलता है उनको कि एक मैच में जो घुमाया जाए मैच को, फिर उनका जो है 2-0 हमें IGN की तरफ से देखने को मिले, ऐसा लगता है कि उनको ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए होने को काफी कुछ हो सकता है। कहा जाता है कि मोबा लेजेंड्स 5v5 ये अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे पासे कभी भी पलट सकते हैं, बट जिस हिसाब से जो करंट फॉर्म चल रहा है वो काफी कमाल का चल रहा है LCF का। बट हमने फर्स्ट गेम में देखा कि थोड़ा डोमिनेट ज्यादा कर रहे थे वो, बट सेकंड गेम में हमने देखा कि उछल पड़ाव तो हो रहे थे, कभी मैच LCF की तरफ जा रहा था, कभी IGN की तरफ जा रहा था, तो कमाल का एक मुकाबला वहां पे रस्ता हुआ दिख रहा था। बट अंत में जो है वो LCF वापस जीत के ही गए। अब तीसरी बार चलिए अब ये डू और डाई होता जा रहा है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 7 का मुकाबला जरूर है। ग्रैंड फिनाले के लिए यहाँ पे दोनों टीम्स लड़ने के लिए तैनात हो चुकी है, बट 2 अंक गवा चुकी है टीम IGN। अब IGN जो है थोड़े से सिर्फ यहाँ की बात नहीं करें तो प्रॉपरली मोबा 5v5 के जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं वहां पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना वो कर रहे हैं। पर आज उनके पास मौका है, क्योंकि आप किस लेवल पे मतलब कुछ राउंड पे गलतियां कर रहे हो उसको माफ की जा सकती है, लेकिन ग्रैंड फिनाले के अंदर आपके पास वो मौका होता है कि आपकी जो पिछली गलतियां ना वो सब बुलाई जाती है। अब यहाँ पे डू और डाई है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने कर दिखाया, मतलब आपकी पुरानी गलतियां माफ है, आपके पुराने पाप जो है वो माफ है, तो उनको डू और डाई की सिचुएशन में आगे आना पड़ेगा। अब यहाँ से उनको लगातार जीतना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैच हारे हैं। अब यहाँ से जीते हैं तो थोड़ा सा मनोबल उनका भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा स्ट्रांग। अगर हारते हैं तो फिर यार एक पूरा, जैसे हमारे दोस्त STG हमारे साथ थे अब तक, उन्होंने बताया कि बैक सीट के ऊपर सवार होते हुए दिख जा रहे हैं, वो फिर बैक सीट से भी बाहर चले जाएंगे। ऐसा आ जाएगा कि बस औपचारिकता रह जाएगी, वो इंतजार करेंगे कि कब गेम खत्म हो, तो उस तरह के माहौल पे वो आ जाएंगे फिर। जी आपको पता है ऐसे भाई, अगर जब 3 मैच आप हार जाते हो लगातार, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लाना, वो वापसी करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मैंने बहुत कम बार देखा है कि उस मोमेंट में, मतलब 3 मैच लगातार हारने के बाद एक BO7 में फिर 4 मैच लगातार जीतना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जो सामने वाली टीम होती है वो खुशी खुशी खेलती है, उसको पता है बस एक मैच जीतनी है फिर मतलब चैंपियंस बन जाएंगे। लेकिन IGN की मनोबल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा उत्तम स्तर पे है, वो कमबैक करना जानती है, वो अच्छा खेल प्रदर्शन करना जानती है। तो इस मैच में वो दिखेगा और आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी दिख रहा है। हैरिथ फैनी सुयू का बैन दिखा LCF की तरफ से। सुयू रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट के लिए, और फैनी भी जो है वो रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट के लिए।
लेकिन आईजीएन की तरफ से आप देख सकते हो बादशाह 3 मैचों से हम देख रहे हैं बादशाह बैन हो रहा है। आपको बादशाह बैन दिखता नहीं होगा हर टूर्नामेंट में, लेकिन यहां दिख रहा है क्योंकि उधर जो है मोबा आरएन खेल रहा है। जी हाँ, मैं उनको मोबा आरएन बोलता हूं क्योंकि मोबा जेन जो है वो जरूर एनएससिटी के यूटिलिटी जंगलर स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन हमारे इंडिया के अगर यूटिलिटी जंगलर स्पेशलिस्ट कोई है डस्टी मीजो के बाद तो वो रारन भैया है। रारन भैया हमेशा वो टैंकी जंगलर पिक करते हैं और वहां देख लीजिए एसएम भाई फोबियस, जय भाई फोबियस, रोमकोम ने फोबियस ले लिया अपना एस पिक फिर से सर्वर एलसीएफ का, एस पिक एलसीएफ का। क्या लग रहा है जय भाई क्या होगा? यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक चीज ये भी देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे आइजन की तरफ से जो है माथिल्डा भी पिक कर लिया गया। जो उड़न खटोला है एसटीजी भाई आपका, वो जो अच्छा खासा डैश मोबिलिटी देते यहाँ पे जो नॉन डैश हीरोज को होता है, उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा गेम में कभी भी हमें देखने को मिलता है कि एडवांटेज मिल जाता है जो खुद की टीम को, जो यहाँ पे जो माथिल्डा टीम है। लेकिन यहाँ पे फोवियस जो है उनका तो एस हीरो है, ऑब्वियसली पिक हुआ है। साथ यहाँ पे खेली जो अर्ली गेम जो होता है, अर्ली गेम पे बहुत ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है फाइट में जाकर जो एग्रेसिवली खेल सकते हैं, क्योंकि उनका सेकंड स्किल के बाद जो उनको हीलिंग मिलती है उसकी वजह से उनको ज्यादा एडवांटेज मिलता है, उनको ज्यादातर बेस की तरफ वापस जाना नहीं पड़ता है। तो अच्छा खासा जो पे हीरो पिक हमें देखने को मिला। स्पेशली मुझे लगता है कि यहाँ पे माथिल्डा जो है थोड़ा बहुत अर्ली टू मिड गेम जो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। इसी के साथ जो हमारे घोड़ा मानव यहाँ पे हाइलोस और इसी के साथ जो अल्फा ट्रू डेमेजर है उनको भी पिक कर लिया गया। तो ये गेम जो है आईजीएन की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा एसटीजी भाई जी जरूर। और साथ ही साथ आप देख सकते हो वो अल्फा का पिक इस बार जा रहा है टीम आईजीएन की तरफ, मतलब वो भी कहीं ना कहीं सस्टेन बिल्ड के लिए जा रहे हैं। और वहां देख सकते हैं पिछले मैच में आपको पता है एसएम भाई फ्रैंको और चैंगी लेके खेला गया था वो मैच। मतलब हम ये सारे हीरोज इतना देखते नहीं है टूर्नामेंट में, लेकिन एलसीएफ जो है कुछ कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही है। और एक्सपेरिमेंट जो है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स, अगर आपको याद होगा गौतम गंभीर ने छोड़ा था नारिन को ओपनिंग के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे काम किया था वैसे वाला काम कर रहा है एलसीएफ के लिए। सारे एक्सपेरिमेंट जो है उनका साथ दे रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कैरी पिक हुआ है और वहां पे ग्रेंजर जो है वो बैन है। तो ये मतलब पूरा मतलब ऐलान है कि लो जो लेना है, हम कैरी खेलेंगे, शॉर्ट रेंज खेलेंगे, फिर भी पेलेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपकी बात से मैं सहमत होना चाहूंगा कि अब देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि अब आप उस स्टेज के ऊपर आ सकते हो कि अब इसके आगे कुछ नहीं है। आपके पिछले पाप यहाँ पे सारे भुला दिए जाएंगे। अगर आप ये जीत के जाते हो तो आपके पास अब और कुछ बचा नहीं है करने के लिए। एलसीएफ ने एक्सपेरिमेंट किया, पहला अंक ले लिखे, तो उनका मनोबल थोड़ा ज्यादा था। फिर उसके बाद उनको लगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उनके जो पिटारे के अंदर उन्होंने जो दाव छुपा के रखे हैं उनको सामने लाने का मौका यहाँ पे हो जाता है। हो सकता है कि इसमें और भी एक्सपेरिमेंट करते दिखे, लेकिन अभी तक जो पिक्स दिखा रहे हैं वो कमाल के पिक्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि आईजीएन की तरफ से मैथिल्डा एयरलाइंस ने उनके साथ जिस तरह से कॉम्बो बैठता है अल्फा का, वो कमाल का रहता है। और उसके साथ घोड़ा मानव, जैसे हमारे दोस्त बता रहे हैं हाइलोस, तो वो भी एक ऐसे हीरोज है, देखने जाए तो टैंकी हीरोज हैं। तो उनको जैसे आपने बताया कि शॉर्ट रेंज मारने के लिए तैयार रहते हैं। वहां पे कैरी जो है तो वो टैंक को पिघला देने के लिए भी एक अच्छे मार्क्समैन माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चांस देखने को मिल रहा है। बाकी तो बैंड्स आपके सामने है। क्या कहेंगे होस्ट एक्सपर्ट, क्या लग रहा है आपको कि और पिक्स कौन से आएंगे अब? लुई जो है वो तो वीच के लिए बैन किया गया है। और एक रीजन है लुई को बैन करने का, क्योंकि इरिथल अभी भी खुला है। तो इरिथल अगर पिक हो जाता है इस स्तर पे एलसी आईजीएन की तरफ से, तो लुई का जो डाइवर्जन है उसके साथ जो इरिथल का कॉम्बो बैठेगा वो बहुत ही अच्छा बैठ रहा है, बहुत ही सुनहरे तरीके से बैठ रहा है। और एमपीएल पीएच की अगर बात करूं, मैं आज ही देख रहा था बैनिंग रेट क्या है। लुई का बैनिंग रेट बहुत ज्यादा है एलसी वहां पे एमपीएल पीएच में। फोवियस का बैनिंग रेट वहां पे ज्यादा है। ये सारी चीजें इंडियन कम्युनिटी टूर्नामेंट में इतना देखने को नहीं मिल रहा है, आगे जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि एलसीएफ दिखा रही है आजकल। तो ये देखिए, मैं बोल रहा था, ये देखिए, ये हमने सोचा भी नहीं होगा कि कगुरा पिक होगा। यहाँ कगुरा पिक हो रहा है एलसीएफ की तरफ से। मतलब वो आउट ऑफ द ब्लू अगर मैं बात करूं, वैसा कुछ पिक्स दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी फाइनल्स के स्टेज में, और सक्सेस भी हो रहे हैं उसमें। ये पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रणनीति, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। क्योंकि आपका उतना एक्सपीरियंस है, आपको उतना मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर मेरा कंफर्ट हीरो पिक कर रहा हूं ना, तो ये मेटा वगैरह कुछ नहीं है बेटा, ये सब हमारे सामने तुच्छ हो जाएंगे। उसके साथ साथ फासा यहाँ पे पिक किया गया है। वो जो बर्स्ट मिलने का मौका है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा फासा की तरफ से। जय भाई आपको क्या लग रहा है, ये मॉस्को जो है क्या ये रोक पाएगा कैरी का जो अटैक स्पीड वाला डैमेज?
All who dare stand यहाँ in पे मैं my ये way कहना will be चाहूंगा कि मुझे devoured. एक चीज यहाँ पे देखने को मिला है, इसके बाद हैंजो भी पीक हुआ है बहुत ही अच्छा जो अभी बफ के बाद मिला है, लेकिन एक चीज बढ़िया है दोनों टीम की तरफ से कि यहाँ पे अल्फा जो लिया गया है वो ट्रू डैमेज हीरो, यहाँ पे फोवियस और खालिद के अगेंस्ट मिड टू लेट गेम बहुत ज्यादा काम आएगा उनका ट्रू डैमेज, क्योंकि ट्रू डैमेज के लिए आप कोई डिफेंस आइटम ले नहीं सकते, वो प्रॉपर डैमेज देता है। सेम देखे तो हम कैरी के साथ भी देख सकते हैं, कैरी का जो ट्रू डैमेज होता है हर 4 बेसिक अटैक के बाद वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे को एक चीज ये है कि यहाँ पे बहुत सारे टैंकी हीरो उठा लिया गया है, तो यहाँ पे कागुड़ा जो है, कागुड़ा की तरफ से थोड़ा सा टफ नहीं हो जाएगा कागुड़ा को, कि थोड़ा सा यहाँ पे फाइट करने के टाइम जब थोड़ा सा एडवांटेज जो होगा वो कम मिलेगा, ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि कागुड़ा टैंकी हीरो के अगेंस्ट वो स्क्विशी को इजीली बस्ट कर सकते हैं, लेकिन टैंकी के टाइम पे थोड़ा दिक्कत जो हमें पे देखने को मिल सकता है। देखिए कगुरा जो है, कगुरा का काम यहाँ पे पता है क्या होगा एसएम भाई, कगुरा यहाँ पे बैकलाइनर्स को डिसरप्ट करेगी, बैकलाइनर को पकड़ेगी, यानी कि मॉस्को को पकड़ना, फारसा को पकड़ना, ये सब कगुरा का काम रहेगा, क्योंकि कगुरा जो है क्राउड कंट्रोल दे सकती है और सिंगल बेस टारगेट भी कर सकती है, तो वो एग्जीक्यूट करेगी अपना प्लान उन डैमेज होल्डर्स के ऊपर जो डैमेज देकर टीम में तहलका मचा सकता है। और इसी के साथ जो है हम वापस आ चुके हैं युद्ध भूमि में। यह है एलसीएफ बनाम आईजीएन का मैच, यह है राइज ऑफ लेजेंड सीजन 3 पावर्ड बाय प्राइम ब्रुक इन कोलैबोरेशन विद यामा ई स्पोर्ट्स। जी हाँ, ये टूर्नामेंट का फाइनल स्टेज है और यहां पर रणनीतियां नहीं, यहां पर जो है दिखाना पड़ेगा आईजीएन को अपना दम, दिखाना पड़ेगा अपना जोर। और मेरे दो कास्टर्स को मैं अभी दे दूंगा वो मतलब पल की वो बात करे इस गेम के बारे में, और मैं विदाई लूंगा और मैं मिलूंगा आपसे लास्ट में। उससे पहले तो मुझे पहला खून देखने को मौका मिल गया, वो भी कगुरा से। कगुरा, चलिए पहला खून जो कहते हैं, आप जब तक हमारे पास आते तब तक वो देखने को मिल चुका, हम इसके बारे में बात भी जरूर करते। तो देवी और सजनों, चलिए मनोभूमि का युद्ध जो है वो तो खत्म हो चुका है, तीसरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ चुके हैं, 2 अंक अर्जित कर लिए हैं टीम लक्ष्मी चिट फंड ने यहाँ पे इन गेम नेम। टीम आईजीएन जो है वो अभी भी अपने पहले अंक की तलाश में, उनको चाहिए वो अंक, उसके लिए वो लड़ते हुए लीथो का चलिए विजन सिक्योर जरूर कर लिया था, बट जब तक लॉर्ड नहीं आता है थोड़ा सा फाइट में इंतजार देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे रोम कॉम कुछ बाधाओं से जूझ रहे हैं या तो फिर कुछ अपनी टीम को संदेश दे रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ से एक्सपर्ट। जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पहला खून जो एलसीएफ दे चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने 2 गेम खेला है इसके बाद ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा गेम प्ले हमें आईजीएन की तरफ से देखने को मिला, वो लोग एग्रेसिव खेल रहे हैं यहाँ पे इस बार जो है थोड़ा बहुत ही ज्यादा सीरियसली गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ देखिएगा कि हैंजो जो है मुझे लग रहा है टॉप लेन की तरफ जो जंगल है वो बफ लेके वो सीधा शायद केरी की तरफ जाएंगे की फोकस करने, ताकि केरी को अर्ली गेम पे फार्म ना मिले। केरी को अगर फार्म मिलता है तो मिड टू लेट गेम जो होगा थोड़ा सा उनको दिक्कत दे सकता है केरी, तो वो फोकस करेगा शायद केरी की तरफ तो बेटर रहेगा। इसका जो टर्टल है यहाँ पे कछु हमारा जो है इसका आगमन हो चुका है एसएम भाई, तो यहाँ पे जो एक फाइट होने के आगाज हमें देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि इस फाइट में जो किस तरफ निकलेगा विजेता? फाइट चलिए टर्टल आया जरूर है, तो उनके इर्द गिर्द अब दोनों टीम पधारती हुई दिखेगी। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पता है कि यहाँ से एक आध हीरो गवा दिया तो डेफिनेटली फाइट हारी जाएगी, लेकिन कैरी वो मॉस्को के ऊपर वहां पे दबाव पूरा बनाए बैठे हैं, कोशिश उनकी वही चल रही है, अप्रोच उनका वही है, लेकिन उसी दौरान यहाँ पे फाइट का आगाज चढ़ चुका है। यहाँ पे फेदर स्ट्राइक बीच की तरफ से इस्तेमाल जरूर होगा, उसी के साथ बू एक और किल निकालने में कामयाबी हासिल करेंगे, रोम कॉम को फिर मिलेगा किल, रारेन सिक्योर करेंगे टर्टल को दूसरे किल के साथ, वो आगे बढ़ते हुए कमाल का फ्लेम शॉट, बेहतरीन चलिए गेम प्लेन की तरफ से तीसरा किल भी वो निकाल के जा चुके हैं। 0-5 अंक देखिए इनका कमाल का है, स्कोर बोर्ड भी कमाल का, एक किल मिल सकता है कैरी को भी। मीरा का स्टार्कजी वो भी कमाल के साथ खेलते हुए देखते ही देखते एक आक्रोश वाला गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है टीम एलसीएफ की तरफ से। प्रतीत तो वही हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने आखिरी गेम अंत किया था उसको वहीं से खदेड़ते हुए आगे लेके जा रहे हैं। ये पारी जो उनकी है, ये जो गेम उनका बन रहा है वो कमाल का बेहतरीन बनता हुआ दिख रहा है दोस्त। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है एलसी को, जिस तरह से दबाव बनाकर रखा है आईजीएन के ऊपर, ऐसा फील नहीं हो रहा कि जो आईजीएन है हमारे टॉप इंडिया की टीम्स में आते हैं, जिस तरीके से प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे आईजीएन को दिक्कत का सामना करना, बहुत ही अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही किस तरीके से फाइट हो रहा है, मैं कह रहा था अर्ली गेम पे कि कागुड़ा जो टैंकी हीरो के आगे थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, लेकिन उसको जो गलत प्रूफ करते हुए कितना अच्छे से हमें कागुड़ा की तरफ से गेम प्ले 4-0-1 पे देखने को मिला। इसका देखिए हैंजो जो है यहाँ पे नीरज चोपड़ा के ऊपर जो यहाँ पे प्रहार करने की कोशिश करेगी, हैंजो को मिलेगा नीरज चोपड़ा का किल, तो उनको फार्मिंग की कोई मौका नहीं मिल रहा है। केरी को जो टॉप लेन की गोल्ड लेन की जो शील्ड की गोल्ड है वो मिलता जा रहा है, केरी फार्म पे फार्म होते जा रहा है, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जिनको अगर यहाँ पे केरी को प्रॉपर फार्म मिल जाए तो एसएम भाई। जो बिल्कुल कैरी के साथ साथ आप कागुरा को भी देखे, सवाल वही बढ़ते थे कि ये नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ रोमकोम को घेरा जा सकता है, वो आगे जरूर बढ़ रहे हैं, ग्लोरियस पाथवे है, रिस्पेक्ट चलिए वो अपनी टीम के रिस्पेक्ट के लिए एक किल
निकालने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। आवश्यकता थी उस अंक की, और वो अंक अपनी टीम को प्रदान करने में वो कामयाबी हासिल जरूर करेंगे। लेकिन एक बार वो चलिए वो किल निकालना चाहते हैं, वो आगे बढ़ते हुए, कैरी उनके साथ तैयार है, स्टार्कजी उनके साथ तैयार है, रूडी और रूड चलिए आगे बढ़ते हुए जरूर दिखेंगे। विच काफी कम एचपी एंड मिर्रा का एक बार फिर कमाल करते हुए एक और किल, रेंजिंग सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल, और उसी के साथ जोजेन काफी कम एचपी, एक बार फिर फ्लैम शॉट था, लेकिन बीच में अराउंड द क्रिएटर थे, वो चलिए थोड़ा सा मदद करेंगे। लेकिन क्या जोजेन इस समय पे वापस आना सही, वो गलती हो सकती है क्या? और रूडी चलिए उस गलती का फायदा उठाएंगे, मारेंगे मौके पे चौका, एंड वो किल लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए। 9 किल निकाल चुके हैं, रारायण इस फाइट के अंदर आ सकता है। अराउंड द क्रिएटर कोशिश अच्छी, एंड जो आगे बढ़ते हुए विच को वो टारगेट करना चाहते हैं, काफी कम एचपी उनकी, वो बचने में आके निकलने की कोशिश, लेकिन रिस्पेक्ट एक बार फिर से आते हुए स्पॉट किया, यहाँ पे एम्बुश थे और उसको पकड़ के वो किल लिया। अब इंतजार रहेगा, लेकिन आप स्टार्क जी को देखें, 5 मिनट का जो गेम है उस दौरान उन्होंने 2 टावर निकाल दिया एक्सपर्ट। अब देखते देखते के लिए आपको टर्टल उन्होंने दे दिया, बट टीम फाइट उन्होंने जीती। उसके साथ साथ आप देखें कि टावर्स की जो फाइट है वो भी वो जीतते जा रहे हैं दोस्त। जी बिल्कुल, यहाँ पे टर्टल चला भी जाए तब भी जो उनका गोल्ड है ऑलरेडी 4000 के आसपास जो डिफरेंस पे चल रहा है, तो एक टर्टल से उतना कुछ खास डिफरेंस आएगा नहीं। इसी के साथ टॉप लाइन पे जो नीरज चोपड़ा को जिस तरीके से फंसा के यहाँ पे फार्मिंग का मौका नहीं मिला, टर्ट पुश और बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने को मिला। यहाँ पे केडी का जो है फ्लिकर का यूज हो चुका है, केडी पीछे की तरफ जाएंगे, रॉम कॉम जो है यहाँ पे अपनी टीम को बचाने की पूरा कोशिश करेंगे। इसी के साथ हैंजो आ चुके हैं, मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हैंजो को दिक्कत मिल सकता है। मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा गेम प्ले हमें रॉमकॉम की तरफ से देखने को मिला, जिस तरीके से मिड लेन पे उन्होंने कागुरा को बचाया। फाइट देखिए यहाँ पे शायद मुश्किल से किलिंग स्प्री मिलेगा यहाँ पे अल्फा को, यहाँ पे हैंजो को थोड़ा दिक्कत हमें देखने को मिल रहा है। एसएम बाइक अनस्टॉपेबल कागुरा लेते हुए बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले जो है दिखा रहे, लो एचपी में भी जो उन्होंने अच्छा खासा किल उठाया। रॉमकॉम का गेम प्ले का क्या ही बोलो, सामने लेकर जिस तरीके से डिफेंस प्रदान कर रहे हैं, अपनी टीम को बचा रहे, फिर एग्रेसिव खेल रहे, उसका क्या ही कहना है। एलसीएफ जैसे इस अभी का जो टूर्नामेंट, इस मैच जो तीनों मैच में ऐसा लग रहा है कि पूरा रेडी हो गया है भाई, हम मौका नहीं देंगे चौका मारने की बिल्कुल भी। कोशिश तो उनकी वही चल रही है, लेकिन चलिए मध्यम मार्ग में देखें, मिड लेन की तरफ देखें तो टीम आईजीएन कमबैक करने की कोशिश जरूर कर रहे थे। हालांकि ये गेम माना जाता है कमबैक के लिए, लेकिन आज कमबैक अगर यहां से कर दिखाते हैं तो कहा जाता है चमत्कार को नमस्कार। ये वो वाली सिचुएशन हो जाएगी कि ये करवाएंगे चमत्कार को नमस्कार। पॉसिबल काफी कुछ है, लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन चल रही है, पूरे के पूरे जो बादल है वो संकट के बरसते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे टीम आईजीएन की तरफ से। चलिए विच जो है फेदर स्ट्राइक का इस्तेमाल करके मिनियंस वेव को रोकने में कामयाब तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन टीम एलसीएफ की जो रौद्र अवतार वाली, ये जो ताबड़तोड़ मार पिटाई वाली जो गेम प्ले चल रहा है, ये जो पारी चल रही है, क्या उसको रोकने में कोई कामयाब हो पाएंगे? मिरियो वो आगे जाते हुए, बट उनको उसी समय ग्लोरियस पाथवे का इस्तेमाल करके पीछे आना पड़ेगा। वो चाहते थे कि एक अग्रेशन के साथ आगे जाएं, वहां से किसी को टारगेट करें, लेकिन आप फ्लैम शॉट देखे, कमाल के फ्लैम शॉट आ रहे हैं, उनको वापस से रिकॉल करने के लिए परेशान जरूर किया जाएगा। रारायण आए जरूर थे, बट उनको चलिए वो योग्यता और जो किल है वो मिल नहीं पाएगा। एक बार फिर टर्टल, और टर्टल के इर्द गिर्द दोनों टीम पताड़ते हुए दिखेगी, टर्टल के आसपास ही फाइट का आगाज देखने को मिलने वाला है। उसी दौरान एक कमाल कर रहे हैं ऑन द क्रिएटर, वो जा रहे हैं स्प्लिट पुश के लिए। ये अच्छा दाव है उनकी तरफ से वैसे कि टर्टल फाइट तो आप हार जाओगे, बट आप दूसरी साइड से कोशिश अच्छी कर लोगे, वो एक अच्छा सिचुएशन वो दिखाने की पूरी कोशिश, बट उसी साथ वो सही समय पे आ सकते हैं। चलिए उन्होंने आएंगे जरूर, एक किल निकालेंगे कागुरा का। रारायण वो टर्टल को सिक्योर कर लेंगे, सही समय पे आए हैं, मिनियन वेव क्लियर कर दी थी, एंड एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ वो आते हुए टीम आईजीएन, ये सही मौका उनके पास, मिड लेन का टावर निकालने में उनको कामयाबी मिली। जंगल एरिया हो जाएगा उनके लिए थोड़ा सा बड़ा, कमबैक पॉसिबल जरूर है। ये कहते हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है दोस्त, काफी कुछ हो सकता है यहाँ पे जय। जी बिल्कुल, ऐसे में यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरीके से आईजीएन कमबैक कर रहे हैं उससे पता चलता है उनका एक्सपीरियंस, उनका गेम प्ले जो है बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जो केडी है, उनको अगर शट डाउन प्रॉपर्ली 2-3 बार और किया नहीं गया तो काफी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि केडी का जब अगर आप ट्रू डैमेज धीरे धीरे आने लगा, उनका ट्रू रिबिल्ड खत्म हो जाएगा, तो इजीली मेल्ट डाउन कर सकते हैं अल्फा हाइलोस जैसे हीरोज को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केडी को शट डाउन जरूरी है। इसके साथ जिस तरीके से बू यहाँ पे हमें दिखा रहे गेम प्ले, यहाँ पे जो एक मतलब क्या बोलूं इस गेम प्ले के बारे में, उन्होंने जिस तरह से अर्ली गेम से डोमिनेट किया, बहुत ही अच्छा गेम प्ले। इसके बाद हमें यहाँ पे छोटा सा फाइट देखने को मिला। देखिए बू का फीड से किस तरीके से मात्रिना को मौका नहीं मिला, जिनको कहा जाता है उड़न खटोला डैश की रानी, उनको डैश करने की भी मौका नहीं मिला, शट डाउन कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा गेम प्ले। यहाँ पे हैंजो जो है
हमेशा कोशिश करे नीरज चोपड़ा को मारने की, लेकिन यहाँ पे शायद उनको लॉक करने में मिस्टेक हुआ होगा। आइलोस की तरफ आइलोस ग्लोरियस पाथ का यूज करके पीछे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अल्फा ने जो अपना अल्टीमेट का यूज कर लिया, लेकिन फ्लिकर मार के फोकस पीछे की तरफ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे मैं करना हो जाऊंगा। हांसो जो है मैंने देखा 2-3 बार जो है उन्होंने प्रॉपर मार्क करने की कोशिश करे फास्टा या नीरज चोपड़ा जो हमारे मॉस्कोव जी को, तो यहाँ पे मिड लेन जो है बच नहीं पाएगा। किस तरह से एग्रेसिव जो मिड लेन का एक एडवांटेज मिला तो पीछे की तरफ जा रहा है। अल्फा अपना अल्टीमेट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे अल्फा को बचना मुश्किल हो सकता है। शट डाउन किया है बू ने फिर से अल्फा को। तो बहुत ही सपोर्टिव गेम प्ले जो हमें, मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था। जिस तरह से कागुरा का उन्होंने गेम प्ले दिखाया वो बहुत ही शानदार गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, एक शानदार गेम प्ले देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से उनको पता है कि यहाँ पे वो 2 अंक लेके जा चुके हैं। एलसीएफ 2 गेम जीत चुके हैं, एक जीते हैं तो तीसरा हो सकता है। आईजीएन को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है, वो अभी भी चाहते हैं पहला अंक उनको मिल जाए, लेकिन आयरन द क्रिएटर वो कोशिश अच्छी करते हुए, लेकिन छतरी वाली दी का गूरा वो इतनी जल्दी चलिए फंसने वाले तो नहीं है। किलिंग स्प्री उनको मिल जाएगी, काफी कम एचपी थी उनकी। तागजी आते हुए मेरियो को अपना शिकार बनाएंगे, उसी के साथ फेदर एक स्ट्राइक जरूर है, लेकिन रूडी उनको मौका देंगे नहीं। रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं टीम को, बट उनको भी पीछे आना पड़ेगा। उनको भी चलिए ये फाइट के अंदर जाते तो गवा देते अपने किल, उनको पता था उस चीज के बारे में। ऐसे हालात में सही यही रहता है कि आदमी सतर्क होकर पीछे हट जाए, पीछे जरूर हटे हैं। 2 योद्धा अभी भी तैनात, टीम एलसीएफ वो आगे बढ़ते हुए। होली सेल चलिए वो टूटेगी जरूर, लेकिन इसी के साथ साथ आप देखें तो मैच फिसलता हुआ दिख रहा है। मैच यहाँ पे एलसीएफ जिस तरह से खेल रहे हैं, पहले 2 अंक वो जीत लिए हैं, तीसरे मैच में भी उस तरह से खेल रहे हैं जैसे बटर के ऊपर वो चाकू घुमा रहे हैं दोस्त। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मॉस्कोव जो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जो अभी जिस तरीके से उन्होंने वाला फेंका था, अगर 2 सेकंड बाद वो वाला फेंका जाता तो यहाँ पे शायद लॉर्ड जो हमारे नीरज चोपड़ा जी का नाम हो जाता। अच्छा खासा टाइमिंग था उनका, बस थोड़ा 2 सेकंड की फर्क रहेगा। इसी के साथ देखिए किस तरीके से रूडी जो है या फिर रिवर कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है। शिव शंभू आ रहे हैं और रिवर कंट्रोल कर रहे हैं कि बुश में कोई छुपा तो नहीं है, जानबूझ के यहाँ पे अपने आप को शो ऑफ करे ताकि जो बुश में छुपा हुआ नहीं है उनको यहाँ पे विजिबिलिटी मिल जाए। लेकिन इसके साथ कोई ना कोई थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उनको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। हैंजर जो यहाँ पे फिर से आएंगे, किसी का हेल्थ कम करेंगे या तो यहाँ पे पोक करने की कोशिश करेंगे। अब जब लॉर्ड बीच मिड लेन पे आएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, टॉप लेन और बॉट लेन की टर्रेट जो है लक्ष्मण रेखा टूटने की बहुत ज्यादा चांस है। लॉर्ड अभी लेवल 1 पे है एसएम भाई, तो ऐसा कुछ दिक्कत होगा, लेकिन टर्रेट जाने की चांसेस बहुत ज्यादा संभावना है। कैरी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव गेम प्ले कर रही है यहाँ पे। लॉर्ड जो है मिड लेन के टर्रेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हैंजो यहाँ पे में अल्ट्रा लेन के मतलब बेस के अंदर गए। फास्टा का जो यहाँ पे किल मिला है उनको, इसके साथ मिड लेन का टर्रेट खत्म हो चुका है। फास्टा जो यहाँ पे सपोर्ट के लिए फेदर स्ट्राइक के लिए है नहीं, ग्लोरियस पाथ का यूज किया गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल अगर वाइप आउट होते किसी भी रीजन से, तो यहाँ पे गेम जो एंड होने की देखने को मिल सकती है। 4 भी शट डाउन दिया है, फाइनली बुक को डबल किल मिला है हमारे नीरज चोपड़ा जी को। तो बहुत ही अच्छा गेम प्ले जो यहाँ पे आईजीएन जो कमबैक कर रही है धीरे धीरे वो हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, कम बैक थोड़ा सा यहाँ पे देखने को तो जरूर मिला, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे एक वो कहते हैं आखिरी हेड के ऊपर अब रह चुका है। अगर यहाँ से एक टीम फाइट हारते हैं तो तीसरा जो गेम है वो भी गवा बैठेंगे, तो सिचुएशन उनके लिए तो काफी परेशानी वाली है। अब यहाँ से वो हो चुका है कि आप फाइट भी नहीं हार सकते हो। अगर फाइट हारते हो तो यहाँ से आप जो ये 60,000 डायमंड के लिए जो गेम खेला जा रहा है ना, उसका फर्स्ट प्लेस आप गवा दोगे दोस्त। तो वो भी उनको अपने जहन में लेके चलना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अब इंतजार देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन सैंडस्टॉर्म का शिकार बनेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे मीरा का स्टाक जी थे तो किल वो सिक्योर जरूर करेंगे। रूडी की तरफ से कमाल का सैंडस्टॉर्म देखने को जरूर मिला, फेदर एक्स स्ट्राइक, लेकिन उसके चंगुल में कोई फंसेगा नहीं। रेस्पेक्ट को घेरा जाएगा, अबू एक और किल निकालने में कामयाबी हासिल करेंगे। अराउंड द क्रिएटर वो क्या कुछ क्रिएट कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो भी आगे जा नहीं पाएंगे, मुसीबत उनके ऊपर भी आएगी जरूर। एक बार फिर अराउंड द क्रिएटर्स, उनके ऊपर सारे सवाल, क्या वो रोक पाएंगे इस एलसीएफ के युद्ध चक्रव्यूह को? क्या एलसीएफ के इस योद्धाओं को रोकने में वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे? टीम आईजीएन वो क्रिस्टल के ऊपर बचे हैं, उनका बचा है बेस, उनका बचा है गढ़, अब आखिरी किला उनका। अगर वो टूटता है तो मुसीबत तो जरूर आएगी, क्योंकि बॉटम लेन में अभी एक उनके पास एक हथियार, एक डिफेंस, एक टावर, एक टरेट जरूर बचा है। अगर वो भी जाता है तो फिर वो लड़ेंगे सिर्फ अपने गढ़ के लिए, अपने किले के लिए। अगर क्रिस्टल टूटा तो तीसरा अंक भी जाएगा एक्सपर्ट। जी बिल्कुल, यहाँ पे उनको थोड़ा सेफ करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एरन क्रिएटर जो है मॉस्को को अगर सही पोजीशनिंग मिलता है और प्रॉपर आगे थोड़ा सा जो है डिफेंस में हाइलोस या जो यहाँ पे सस्टेन करते हैं माथिल्डा या अल्फा, तो कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिलेगा जरूर यहाँ पे जो है अच्छा खासा गेम प्ले दिखाने का। जो लॉर्ड है यहाँ पे, लॉर्ड पे एक हमें अच्छा खासा फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही रिस्की हो सकता है ये फाइट आईजीएन के लिए, बिकॉज अगर लॉर्ड के साथ लेते हुए उनका जो
वाइप आउट होता है या 2-3 हीरो का डेथ होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लॉर्ड को रोकना। इसका जो गेम है हमें गेम पलटता हुआ दिखेगा और यहाँ पे आईजीएन जो यहाँ पे 3-0 से हारने की भी जो चांसेस हमें देखने को मिलेगा। तो अभी लॉर्ड ना लेके, लॉर्ड अभी लेवल 2 पे है, उतना कुछ जो है तो उनका पावर जो अभी तक बढ़ा नहीं है, तो थोड़ा बहुत ठीक है वो संभाल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एरन द क्रिएटर को संभाल के खेलना पड़ेगा। हैंजो आए थे यहाँ पे, उनको कुछ मिलेगा नहीं हाथ में, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा हेल्थ थोड़ा सा अपना जो हेल्थ बढ़ाते हुए। तो अभी बहुत ही ज्यादा संभाल के यहाँ पे मॉस्को को खेलने की जरूरत है। यहाँ पे एक मॉस्को भी है जो आके सही पोजीशन पे खेलते, सही पोजीशन पे उनको मिलता है, और कागुरा जो उनको बस डैमेज से वाइप आउट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं एक नीरज चोपड़ा जी जो हमारे मॉस्को पे, उनको एक मौका मिल जाएगा कि गेम को डिफेंड करने का। लेकिन अगर इस गेम पे मॉस्को जो है वो पहले ही मारे जाते तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे लगता है इनसे भाई कि यहाँ पे जो है गेम को जीत पाना। चलिए कोशिश तो वही चल रही है, लेकिन शायद ये अच्छा अप्रोच हो सकता है। रोमकोम को घेरने की पूरी कोशिश है, लेकिन फ्लीकर का सही समय पे इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पे रूडी आए हैं, रूडी क्या जाएंगे, लेकिन चलिए सेकंड स्किल के इस्तेमाल से वो अपने आप को वापस इस गेम के अंदर लाने के लिए मजबूर कर देंगे। दूसरी तरफ एरॉन द क्रिएटर वो अपनी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं मिनियंस वेव को क्लियर करने के लिए, लेकिन 12 मिनट का रॉड, रुद्र अवतार वाला रॉड, रूडी भी आएंगे रेंजिंग सैंडस्टॉर्म के साथ, रेस्पेक्ट का गुरा को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, किल मीरियो भी निकालेंगे। यहाँ पे बूंद बूंद से समुंदर भरने की कोशिश है, कमाल है ऑन द क्रिएटर, वो रैरन को रोकने में कामयाबी हासिल करेंगे। एक और किल, स्टार्क्सी अकेले, उनके पीछे आईजीएन के 4 योद्धा, लेकिन मिनियन वेव उनके ऊपर पड़ेगी भारी। मिनियन वेव पहुंच चुकी है, तो एक योद्धा को पीछे हटना पड़ेगा। मीरियो चलिए वो जा रहे हैं यहाँ पे मिनियन वेव को क्लियर करने के लिए, दूसरी तरफ वो कोशिश करेंगे कि यहाँ से कितने टावर्स, कितने टरेट्स आप बटोर पाते हो। उसके साथ साथ पहली कोशिश यही रहने वाली है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आपके प्रतिद्वंदी के जंगल के अंदर जितने आप निकाल सकते हैं बफ निकाल लीजिए। आपने पहले कोशिश किया ऑरेंज का, वो चलिए निकाल लिया है। कोशिश यही कर सकते हैं कि मिनियन वेव में मार खा गए दोस्त आप, तो उस चक्कर में जो है टावर नहीं निकाल पाए, तो जंगल निकाल के वापस आ जाइए, क्योंकि वही ये युद्ध है कि एक टीम फाइट आप हारे एंड चक्रव्यूह घूम जाएगा यहाँ से, क्योंकि अब 16 मिनट का गेम हो चुका है। अब जहां पे शटडाउन आएगा तो कूल डाउन लंबा जाएगा। एक्सपर्ट क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि उनको बॉटलिन की तरफ थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं, यहाँ पे अगर जैसे फार्शा जो है यहाँ पे फार्शा अपना बेस को बचाते हैं और हाइलोस या कोई जाके यहाँ पे अगर बॉटलिन को थोड़ा सा प्रेशर देके बॉटलिन का टर्रेट लेते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज उनको मिल सकता था। लेकिन वो लोग जो है जंगल की तरफ फोकस किए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद बॉटलिन की तरफ 2 हीरो या 1 हीरो जाके बॉटलिन का मिनियंस क्लियर करते, कहीं ना कहीं उनको ज्यादा एडवांटेज मिल पाता है सब भाई। इसी के साथ देखिए यहाँ पे गेम पे कूल डाउन पीरियड बढ़ने वाला है, लॉर्ड भी आने वाले हैं, अभी शिवशम मुझे 30 सेकंड में आ जाएंगे। तो अभी 16 में 17 मिनट है, 18 मिनट का लॉर्ड जो होगा वो ज्यादा मतलब भयंकर अपने रुद्र रूप से आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे एरन द क्रिएटर ने गेम प्ले दिखाया है, वो गेम प्ले हमें फिर से देखने को मिलता है। जो प्रेशर है वो प्रेशर को अगर अच्छा खासा मैनेज कर पाते तो कहीं ना कहीं आईजीएन जो है यहाँ पे जीतने के चांसेस अभी भी रखता है, क्योंकि मॉस्को एक ऐसा हीरो है कभी भी जो पाशा पलट सकता है। अच्छा खासा उनको अगर जो है प्रॉपर उनको जो अटैक करने के लिए मौका मिले, थोड़ा सा पीछे लेके खेले, उनके ऊपर हमला ना हो, उनके ऊपर हाइलो जो है आपका हांजो अटैक ना करे, उनके ऊपर अगर कागुड़ा जो अपना बर्स्ट डैमेज ना दे, तो कहीं ना कहीं जीतने की चांस अभी भी आईजीएन के पास है। मॉस्को अकेला गेम को निकालने में बहुत ही ज्यादा सक्षम रहता है एसएम भाई। बात तो बिल्कुल आपने पते की है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें स्टार्कजी वो आज तांडव बन के बैठे हैं, क्योंकि अभी तक वो एक भी बार मरे नहीं है, तो वो भी दिक्कत होगी। मीरियो को घेरने की कोशिश है, लेकिन जुजैन क्या कमाल का रेस्क्यू किया है वहां पे, रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल। मीरियो को निकाला है मौत के घाट से, लेकिन क्या टीम आईजीएन को वो मौत के घाट से निकाल पाएंगे, क्योंकि 18 मिनट का समय हो चुका है एंड लॉर्ड हो चुके हैं इवॉल्व। इसी के साथ एक फाइट का आगाज हो सकता है, कोशिश अच्छी उनकी चल रही है, बट रॉम कॉम वो आगे जाते हुए वो किल निकालना चाहते हैं। मीरियो फंसते हुए काफी कम एचपी, लेकिन एरॉन द क्रिएटर वो किल निकाल चुके हैं, रिस्पेक्ट किल निकाल चुके हैं। 2 योद्धा यहाँ पे धराशायी हो चुके हैं टीम एलसीएफ के। बू को घेरा जा सकता है, बू के ऊपर इनकी निगाह, इनकी नजरें टिकी हुई है। जुजैन आगे बढ़ते हुए उनके साथ रिस्पेक्ट, ये किल के लिए चेस कर रहे हैं या अपनी जीत के लिए, लेकिन उसके साथ रारैन वो आए जरूर थे परेशान करने के लिए थोड़ा, उनको चलिए रोकने में कामयाब हो चुके हैं। बट आपके पास अभी समय है क्या? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि रेटरी यूज हो चुकी है, रिस्पेक्ट के पास रेटरी अवेलेबल है। इवॉल्व लॉर्ड टीम आईजीएन सिक्योर कर सकती है या बू उनके बीच बनेगी बाधा, पता चलेगा कुछ ही समय के अंदर, क्योंकि ये युद्ध ये माहौल छिड़ चुका है। रारैन वो आगे आते हुए, कुछ रेटरी बैटल तो होने वाला है दोस्त, क्योंकि 4 सेकंड में उनकी भी रेटरी आ जाएगी। तो एक बार फिर तराजू 50-50 के ऊपर,
एक बार फिर तराजू जय यहाँ पे जा पहुंचा है कि लॉर्ड कौन लेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। जी बिल्कुल, बट यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा एसएम भाई, आईजीएन के पास अच्छा खासा मौका था लॉर्ड लेने का, लेकिन वो लोग किल के पीछे की तरफ गए थे। अगर यहाँ पे किल की जगह यहाँ पे लॉर्ड ले लेते कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज उनको मिल पाता, क्योंकि अभी इजीली जो लॉर्ड है वो एलसीएफ को मिल जाएगा। इसका तो हाई लॉस जो भागने की कोशिश करेंगे, उनके पास शायद गोली स्पात है नहीं, तो बचने में थोड़ा दिक्कत हुआ जो यहाँ पे हो सकता है। इसका मातिल्डा जो लोग गए थे यहाँ पे बू को फॉलो करके गए थे कि उनको एक किल मिल जाए बू का या कुछ डैमेज दे पाए, लेकिन बू ने उल्टा पासा पलट दिया और इसका जो जिस तरह से मातिल्डा का यहाँ पे किल ले कहीं ना कहीं आईजीएन का जो है डिसएडवांटेज बन गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा सा जो एक गलती आईजीएन की तरफ से हुआ, अगर वो लॉर्ड पे फोकस करते, बू की तरफ किल के लिए लेके नहीं जाते, तो उनके पास कम से कम 10 से 15 सेकंड मौका था कि लॉर्ड जो आसानी से मॉस्को के पास कैपेसिटी था कि लॉर्ड जो 15 से 20 सेकंड के अंदर क्लियर कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको किल की जरूरत थी शायद, या वो फोकस कर रहे थे बू को मौका ना मिले, इसलिए लॉर्ड जो उनके हाथ से गया। अब लॉर्ड आ रहा है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक धमाकेदार फाइट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे शायद गेम जो यहाँ पे हमें वो भी देखने को मिले एंड की तरफ से ऐसा भाई। बिल्कुल, यहाँ पे चलिए लॉर्ड जा चुके हैं, मीरा का एक किल निकाल चुके हैं, अनस्टॉपेबल मीरा का स्टार्क जी, अनस्टॉपेबल टीम एलसीएफ। एक समय के लिए फंसा गेम जरूर था, लेकिन एक बार फिर टीम एलसीएफ ने वो कर दिखाया है जो लगातार वो 2 मैच से करते आ रहे हैं। टीम आईजीएन ने उम्मीद की किरण जरूर जगाई थी इस मैच के अंदर, एक समय के लिए लगा जरूर था कि वो कमबैक करेंगे, क्योंकि ये गेम माना जाता है कमबैक के लिए, लेकिन ऐतिहासिक वापसी के ऊपर रोका जाएगा। मीरा का स्टार्क जी वो ग्रहण बन के आए हैं टीम आईजीएन के लिए, एंड उनकी वजह से चलिए एक बार फिर टीम एलसीएफ तीसरे मुकाबले में भी अपनी जीत हासिल करेंगे। कमाल का गेम प्ले टीम एलसीएफ की तरफ से भी, लड़े जरूर थे आखिरी दम तक, आईजीएन ने कोशिश अच्छी की, लेकिन दोस्त मुसीबत के बादल आपके ऊपर यह भी है कि स्कोर बोर्ड जो है ना वो कुछ और ही कह रहा है। अब स्कोर बोर्ड जो है वो पहुंच चुका है 0-3 की तरफ, आईजीएन जो है वो अभी भी 0 की तरफ है, टीम एलसीएफ जो है वो 3 अंक निकाल चुके हैं। अब एक गेम एंड आज का ये जो मुकाबला है वो खत्म, टीम एलसीएफ जो है वो बन जाएंगे मोबा लेजेंड्स के सर्वश्रेष्ठ टीम राइस ऑफ लेजेंड सीजन 3 की दोस्त। तो बस एक मंजिल दूर है इस कप से, इस सीढ़ी में वो आखिरी दम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कहता है ना सांप सीढ़ी में 99 नंबर वाली जब आप सीढ़ी चलते हो ना तो सांप ऐसा ढसता है कि सीधा आप पहली मंजिल पे आके गिरते हो। तो क्या आईजीएन के पास वो सांप है? क्या आईजीएन वो ढसने में कामयाब हो पाएंगे? वो काफी सारे सवाल निकल के आते हैं, बट वो कहते हैं कि मौत भी उनकी दहलीज पे आके खड़ी हो गई है। तो हो सकता है कि एक नंबर गिर गया तो सीधा आर्या पार है। ये टूर्नामेंट लेके जाएंगे टीम एलसीएफ, ये जीत के जाएंगे, चैंपियंस बन जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ टीम का जो खिताब है वो लेके जाएंगे। जय जी जय भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा बोल दूं बीच में, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। पता है जय भाई क्या, ऐसे मैंने बोला सांप की बात, 99 सीढ़ी की बात, सांप जो है वो डसता भी है और सांप जो है वो बाबा जी का ठुल्लू भी दिखाता है। तो क्या पता वो सांप अगर खुद को बाबा जी का ठुल्लू दिखा दे तो फिर आईजीएन की हालत थोड़ी सी पतली हो जाएगी। लेकिन कगूरा 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 क्यारी 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 2-2 के वालों ने आज जो है खेल कर दिया है यहाँ पर एलसीएफ के लिए। 2 एक्सपेरिमेंटल पिक था कगूरा वाला, और पूरे चैट्स पे मैं देख रहा था कि कगूरा का गुणगान हो रहा था, कगूरा जी, क्योंकि वो कगूरा का गेम प्ले था वो मस्त था एलसीएफ की तरफ से। और अभी जो है एलसीएफ चंगा खेल रही है, मैं बोलूंगा इतना अच्छा कैपिटलाइज कर रही है हर एक मोमेंट को। इवन दो थोड़ा सा नोकझोंक हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा फर्स्ट मैच जैसा हो रहा है, थोड़ा सा मतलब गेम स्पिरिट हमें देखने को मिल रहा है। आईजीएन भी अपना फुल टक्कर दे रही है, लेकिन एलसीएफ आखिरी मोमेंट में जो है चुरा रही है। जय भाई आप क्या बोलेंगे उस बारे में? नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा एसटीजी भाई कि यहाँ पे जो गेम प्ले था, यहाँ पे ऑप्शन था उनके पास। ऐसा भाई आप भी नोटिस करना कि जो इवॉल्व लॉर्ड आया हुआ था वो लोग बू के पीछे गए कि बू को यहाँ पे फोकस करते, बू के पीछे उनके पास 10 से 15 सेकंड था, जो मैंने आपको बोला वही फोकस अगर बू के पीछे ना करके इवॉल्व लॉर्ड लेते, जो हैंड्स है उनके पास रिट्रीब्यूशन नहीं था, इजीली लॉर्ड 20 सेकंड में ले सकते हैं, मॉस्को का ट्रिनिटी बिल्ड कंप्लीट था, तो यहाँ पे एडवांटेज मिलता आईजीएन को। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आईजीएन जैसा बड़े प्लेयर, जो बड़े टीम है, वो ऐसे मतलब फोकस क्यों किया अचानक से बू के ऊपर लॉर्ड के लिए बिना, जहां पे आपको एडवांटेज लॉर्ड दे सकता है, इवॉल्व लॉर्ड है, बहुत ज्यादा सस्टेन कर सकता है, आपको दूसरे ट्रायर्स पुश करने की मौका मिलेगा लॉर्ड अगर मिड लेन से जाते। तो उस जगह पे मुझे समझ में नहीं आईजीएन का क्या फोकस था, मैं वो जानना चाहूंगा बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा फोकस थोड़ा सा कम है, मुझे लगा क्योंकि ऐसे आईजीएन। हाँ जी, मैं आपको बोलूं क्या हो रहा है, डर, ये होता है डर।
उनको लगा कि अगर लॉर्ड के लिए जाएंगे और क्या पता कागुरा आ गई, 3 लोगों को पकड़ ली, जकड़ ली अपने छाते से, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मिड लेनर को निकालते हैं, फिर लॉर्ड के लिए जाते हैं। मतलब सोच अच्छी थी, लेकिन वो मतलब मैं हमेशा कहता हूं ना कि आपका ड्राफ्ट चाहे कितना अच्छा हो, आप चाहे इतना सारे मेटा हीरोज पकड़ लो, लेकिन एग्जीक्यूशन वो मैटर करता है बहुत ज्यादा, कितना परफेक्टली आप एग्जीक्यूट करते हो। देखिए कागुरा मेटा में नहीं है, मिथिक में जरूर पिक किया जाता है, लेकिन मेटा में नहीं है। कैरी हाँ कहीं हद तक मेटा में है, उसको बफ मिला है, आप बोल सकते हो यूटिलिटी जंगलर का खेल था, लेकिन रारेन ने इस बार हैंड्स लिया था, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर था उनकी तरफ से। सर्वर उनके हाथों में था, एग्जीक्यूशन प्रॉपर था, खेला भी अच्छा दिखाया, मैच को जकड़ा। लेकिन आईजीएन, उनको कम मत सोचिए। कोई दर्शकगण आप अगर सोच रहे हो कि आईजीएन कम है, बिल्कुल मत सोचिए, ये भी उतना ही नामी दामी टीम है। इनके पास भी वो जज्बा है, इनके पास भी वो रणनीति है, और इनको पता है कि कैसे वापसी किया जा सकता है। इस मोमेंट में भी वो वापसी करने का सोच रहे होंगे, वो फाइट बैक देंगे, और क्या पता गेम आखिरी मोमेंट तक जाए, सातवें गेम पर जाए, और मैं क्या सब लोग यहाँ पे, एसएम भाई, यहाँ पे जितने भी क्रू मेंबर्स बैठे हैं, जय भाई, आप लोग, सभी लोग, एलसीएफ भी कहीं ना कहीं चाहती होगी गेम 7वें नंबर पे जाए, क्योंकि कंटेस्ट मिले उन्हें। और लेकिन एरर जी ने मुझे एक बात बोला था कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं व्हाइट फेदर्स आर्केडिया के लिए, वहां के लिए, और आज जो है हम अपना ट्रेलर दिखाएंगे वो प्रैक्टिस का। तो कहीं हद तक एरर भैया अगर आप देख रहे हो तो आपने वो ट्रेलर दिखाया है और मुझे खुश करवाया है, तो मैं मानूंगा आपने ट्रेलर दिखाया, आपने जरूर प्रैक्टिस किया है। लेकिन अभी आईजीएन की बारी है, आईजीएन आपको भी ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। एसएम भाई आपको क्या लग रहा है, क्या एक कमबैक होगा, क्या एक वापसी होगा, या फिर 4-0 से जो है केजरीवाल आकर झाड़ू सफाई कर देंगे? देखिए वो अब की बार चौथी पार करेंगे या तो फिर झाड़ू लगेगा यहाँ पे, वो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन आपने बताया ट्रेलर के बारे में, तो ट्रेलर नहीं, अगर वो 4 मैच अब जीतते हैं लगातार तो वो पूरा सिनेमा हो जाएगा, ये पूरा एकदम फिल्म बन जाएगा इनके ऊपर कि भाई ये कर दिखाया है अनहोनी को होनी। वो कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, तो गुरु यहाँ पे हमारा पूरा क्रू टीम आपको करेगा चमत्कार को नमस्कार। जैसे आपने बताया एलसीएफ भी चाहेंगे साथ में, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे भाई, वो चाहेंगे खत्म करो यार, अपना एसी चालू करो, चद्दर ओढ़ो और सो जाओ, या फिर प्रैक्टिस करो अगले टूर्नामेंट के लिए, यहाँ पे जितना भी धनराशि बन रहा है उसको अपनी जेब के अंदर अंदर करो, तो वो तो यही चाहेंगे। लेकिन काफी सारे फैंस की उम्मीदें अभी भी टिकी हुई है, आईजीएन के प्लेयर्स की उम्मीदें अभी टिकी हुई है। एक आखिरी मौका, एक आखिरी लड़ाई, एक आखिरी दाव, लड़ेंगे अपने अस्तित्व के लिए, लड़ेंगे अपने वर्चस्व के लिए, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो खैर समय के साथ पता चलेगा। लेकिन अभी भी उनकी उम्मीदें बरकरार है, अभी भी वो चाहते हैं कि यहां से एक ऐतिहासिक वापसी, एक ऐतिहासिक कमबैक, अनहोनी को होनी वो आज करके दिखाएं। लेकिन आज जो है स्टार्क टीजी प्रूव कर रहे हैं कि कोई गॉड काम नहीं करता मेरे सामने। एरन द गॉड जरूर होगा गॉड, लेकिन मैं भी हूँ स्टार्क टीजी, मैं भी हूँ वो पुराना सितारा जो 2021 से अपना नाम बनाया है। जरूर एरन द क्रिएटर ने अपना नाम बनाया है, ग्रेंजर से बनाया है, अलग अलग हीरो से बनाया है, इरिथल से बनाया है, लेकिन मैं भी एमएम में, गोल्ड लेन में कोई फेट या फिर काइल से कम नहीं हूं। मैं भी अपना नाम बनाने आया हूं, मैं भी अपने खुद को जो है यहाँ पे पहचान देने आया हूं, और उसने आज दिखाया है, एमवीपी लिया है, दो मैचों में अपना जो मतलब दबदबा है वो शो करवाया है। बू ने भी शो करवाया। अभी बाकी है कि एरॉन, जिसके भरोसे पूरा आईजीएन टिका होता है, जिसके भरोसे पूरे आईजीएन के फैंस टिके होते हैं, क्या वो चमत्कार दिखाएंगे? जय भाई आखिरी बात आपसे सुनूंगा, क्या एरन अपना चमत्कार दिखाएंगे इस मैच में, चौथे वाले? यहाँ पे मौका तो था, बहुत ही अच्छा खासा जो है एरन ने गेम प्ले दिखाया। उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट की ज्यादा जरूरत था, तो सपोर्ट प्रॉपर थोड़ा सा जो है मिल नहीं पाया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे एरन के पास कैपेबिलिटी है, और हमें ऐसा बहुत बार देखने को मिला है भाई कि जहाँ पे मैच जो है 3-0 से 4 जो है यहाँ पे 4-3 पे भी जाते हुए देखा है। 3 बेस्ट ऑफ 3 में जो है एक जीतने के बाद 2-1 पे भी हमें जाते हुए देखा है बहुत सारे मैच। तो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसको आप बोल नहीं सकते। स्पेशली आईजीएन जैसा टीम जो है इतने इंडिया के टॉप टीम में आया था, उनके पास जो कैपेबिलिटी है, क्या पता होता अभी जो है हमें मैच जो है यहाँ पे 4-3 भी देखने को मिले, क्या पता 3-3 हो, फिर उसके बाद हमें 7वां मैच भी देखने को मिले, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बारे में कोई कमेंट अभी नहीं, बस अभी हम लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो आईजीएन और एलसीएफ का जो अभी होने वाला है 4th मैच, उसमें क्या होने वाला है। या तो सिनेमा बनेगा या तो एब्सोल्यूट सिनेमा, जो बोला है हमारे एसएम भाई ने वो तो हमें देखने को मिलेगा, ट्रेलर या एब्सोल्यूट सिनेमा। तो इसके साथ जो है अभी हम लोग लेते हैं विदा। मैं हूँ जय, और हमारे एसएम भाई, और हमारे साथ है हमारे होस्ट एसटी जी। जरूर जरूर विदाई लेने का टाइम आ गया। विनय कास्टर्स आएंगे, वो भी मनोरंजन करेंगे आपका, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, कमेंट डाउन कर दीजिए, वहां पे आईजीएन के फैंस हो तो आईजीएन लिख दीजिए, एलसीएफ के फैन हो तो एलसीएफ लिख दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और बस इतना ही, विदाई लेते हैं हम लोग। बट आ रहे हैं दूसरे कास्टर्स, मैच भी आ रहा है, देखते हैं कौन जीतता है।
Welcome back, ladies and gentlemen and viewers, right here, because right now we are gonna be going into the fourth game, into the grand finals of Rise of Legends Season 3. And yes, you have your favorite teams onto the screen right now. It's gonna be IZN versus LCF, and unfortunately for IZN, they are still, I mean, 0 wins, and LCF are leading with the match point as of now. So this is gonna be very, very crucial for IZN to take this game, or else, you know what, your champions might be here into this game, and it can be a lastly possible game. So yes, there's no saying that. But before we go into any kind of games, let me introduce you to the casters for today for this game. It's gonna be your voices here for the possible last game. It's gonna be Yuina and Root. So Yuina, what do you think? What do you think will happen? Will IZN be able to take this game? I mean, looking into the situation, of the both of the states, LCF have already 3 matches. It's exciting fact for the team, all the eyes, and I have top to make a right something miracle, all save up all of pressure just on there. They have to back and want to win night. This is the finals, how the victory crown. So really you're in team I. Actually, for Yuina, I think we have to come back to you, because I think Root wants to have an answer for that. Yes, well. Yes, thank you for the warm welcome, Debbie. And this is, of course, the Rise of Legends, where we have already seen three of the most emphatic matches we have seen, and LCF has been thoroughly dominating IGN here. I mean, I saw the IGN camp right now. They are a little bit in dismay. They are trying to think out of strategies. They are trying to think what they did wrong and what they did right. But right now, I think there is a big difference in the draft right now, as we saw in the last game as well. The Kagura was a great counter to the Fasa, and they literally didn't have anyone to punish the Kagura, who just escaped without any scratches or claws. So this has just been the story of this whole series. But as we know, IGN are people with the golden hearts. They do not back down. They want to make a comeback here. They are ready. They are trying to fight, and that is exactly their mentality right now is off. And let's see how it goes though, because 60,000 diamonds are on the line here, and they are just not just fighting for the diamonds, they're fighting for their pride and legacy. So Debbie, what do you think IGN should do next? I think the possibility is that if they try to give out their comfort picks here, and yes, one thing to mention is actually they're gonna be playing into the Bengal server now, so that just means that it's gonna be really easy for IGN to try to go for their comfort picks. So that has to be something they have to do. So yeah, that has to be it. And if they want to play into the weird picks that LCF are picking in, I think they can have a better answer. They do have their kit, they do have their chances and skills and mechanics to try to go for it. So that they have to be mindful of the draft as well. So yeah, that has to be it. But I think we have to go into the drafting, because yeah, we are going to be waiting out we have been waiting out quite a lot. So let's see what are the chances are going to be into the draft right now, because LCF are going to be into the first pick, and IZN with 0 wins as of now will be onto the second pick. So Sir, what are what's your your thoughts, command? you know? Should there be any kind of different bands or same bands here? Rocks need no protection I from mean, the there rain. is, a lot of chances that they The will be going immortal for one the chose same me to band, but I vanquish the guess, shadows a that different band plague can this be seen world. into this match. But right now, we can see Always the on the team way. LCF, just panning out to of the good team junglers, and also a good band Magic is coming up from my the side of the team life. IGN. That will be the Matilda as well, the Nolan. I think it's really Butterflies cool. It's really born by cool to thy see that wish, there's no guided change for by IGN. lantern's They are light. respect banning these routes. Experience the Yes, euphony definitely. of So I think suffering. there are respect bans coming all of the sides, especially as LCF knows that IGN right now are playing on the Bengal server. My So they tail's are been trying to itching for a respect real the fight. respect
picks which are coming in. So the Soyu, that is the reason the Soyu is banned, the Fanny is banned as well, and the Harit is banned as well. Both of those heroes are really well played by Respect as well as Aaron. And as we can see, the Granger has been picked up simultaneously, and that is the hero which Stark TC prefers a lot. So it is going to be interesting to see how IGN are going to counter it, because this is just the last When you opportunity gaze into they're the going to get. abyss, The Kali and the Selena the coming in. I abyss mean, gazes IGN, back. while I was talking to them, they said they are going to do something new. And I told them, yes, you have to do something new to come out of it. And Yeah. this is just looking like what they want to do. Debbie, what do you think so far of the draft? Yeah, I think for IZN they are trying to make this Kalia work the second time, because the first time when they were using it they weren't able to do it, and I think it's a high chance that there are gonna be possibility that they can go put it into the XP also, because Kalia has always been a prior here. No one can escape So that has to be it. But fists. Yuina right now, I think we're gonna be seeing a rom-com pick again. Oh my gosh. And also we can see the, the tank pick coming, and that will be with the Farsa over there, a really good mage into the middle lane. Her, the range is so beautiful with the feather airstrike, dealing a lot of damage from the early phase only. And also there will be the Batang to the zone out, a good answer towards Akelia. So it's gonna be a really interesting match as well. A good picks are coming from the side of the team IGN. So let's see which will be the next pick coming in. Yeah, the next pick has to be very, very important, because IZN, will they secure Muscle of CC or iron, will they put it into the bones last of one? But oh, look steel. at that! The Gatot cats are coming through. So is it still a flex route, or is it, is the Gatot still going to be going into the XP? I mean, this has to be an XP Gatut Kacha if they are looking for a pick of composition, which they can very well do, because the Selena, they are directly complements the pick of composition. So the Kalia can use a tsunami, and there's the abyssal arrows of the Selena as well. So these two can work in tandem, and that can bring a lot of destruction in the early game. But Selena is a two-edged sword, and if you do not connect, do not make a statement within the first few minutes, it is just going to be just vision play from there. Selena, once upon a time, was considered Let's the fight to our counter to heart's a Fasa. content. Let's see how that goes though, because they have the Gatut Kacha as well to counter this Fasa. So right now, I'm actually happy that IGN are trying Let's to draft go. their best against LCF now, as their backs are against the wall. Lucas ban coming through for IZN. Yes, they have to ban away the Lucas, because it's Raden here. He can try to utilize this Lucas into the jungle as much as possible. But it is still ban coming through just to give Stark a good time into the gold lane side. But what are the options, IZN? Should they ban out any My jungle mission here, or is is to it going to be protect another lives. tanky frontliners ban here? Okay, Hylos coming through. So what are the chances that LCF are going to be banning another jungle, Yuina? I mean, right now, looking onto the side of the team IGN, they already have two of the really good frontliners as well, the milliners. So they're gonna pan out, I think, a jungler or maybe another goal laner. But I guess, the traits for the I've been Granger is waiting for already too out that long. will be the height and the retail. So another jungler can be, but no, they are banning out the carry. Okay, I think I really like a carry ban here, because for Raren, most of the time he goes for the tanky jungles, right? So if you have a true damage a shredder like a carry into the hands of Aaron, that has to be a problem for LCF. So they are doing their Time to homework drop quite the well. beat And of the flash. what are the choices Aizen are gonna be picking? Okay, there we go, another Joy here. Will it be a different story this time, Roots? I might not Definitely be a not. I lightning think man, but I this do is know just my IGN playing traits. their cards right for now, because they are trying to get a pick off here, and they are trying to dominate the early game, because they know LCF come late game, come mid to late game, they are really unstoppable. They're just trying to stop the snowball effect here. And I think what LCF Fight. are trying to do Fight with for their the bans is ultimate they're answer. trying to force this Aaron onto the Moskov, because they know that the Moskov will have a hard time come at the Badang, come at the Halda, and come at this Come Barracks on, right here. Dexter. It's our So we have to showtime. see what it goes. But there we go. We are seeing something different, guys. This is gonna be the art of thievery. This is Claude on Aaron, the creator. Debbie, what do you think of this draft right now?
Oh my goodness, I think LCF, they are playing this so well. Look at that. The band coming through. Just because they want the barrage, they want the heal on top of that. So they are playing their cards so well. Meanwhile, for the Squisher, IZN's lineup, they're trying to go for the pickoffs and to the late game as well. Aaron did not have any choice but to go for the card because the Moskov was a no into that position. If he goes for the Moskov, he's gonna be bullied quite a lot. So yes, this will be the draft for the game, ladies and gentlemen. And you know what? I'm gonna be waiting for this because Roots and Yuina, please take it away. Thank you, Debbie, for the beautiful intro and the beautiful anchoring. As we are live into the land of dawn, maybe the last time. Well, IGN might hope this is not the last time, but this is gonna be Rise of Legends, brought to you by Prime Brook, as well as Yama Esports, and it is sponsored by, of course, Vista Games. This is gonna be LCF and IGN facing each other off. It is gonna be the match 4, and this is match point for LCF. One more victory will take them to glory, while one more victory for IGN will secure that they still have what it takes to go toe to toe with the big boys. And this is Roots Official. Along with me is Yuena. And Yuena, what do you think? Who is gonna get the first blood? I mean, it's kind of depend on the situation as well. Positions they will be into it. And right now, both of the teams are playing out safe. They don't want to give the first blood. They don't want to give away the tries. But right now, looking onto the river area, it's a little bit of conflicts are happening. But I guess they are just falling back, not overextending any fights. Yes, definitely true. And they are just looking for the perfect sort of initiation here, because there is Rudy. Look at that. She is trying to chase down the Selena so well. But we have to see where this first blood comes from. Look at that, though. This is an EXP Kalia. So this is just a plan of them. As we see, the Abyssal Arrow strikes. And this is IGN striking first blood against LCF already. So, Yuena, what do you think of the chances that IGN can take this game now? Finally, maybe a comeback, which we have all been thinking of. I mean, yeah, they have started off pretty good as well. They got the first neutral objective for themselves as well as the first blood. So, they are going in a really good track. So maybe, the team IGN can make a good comeback. Right now, the Selena arrows are kind of annoying as well. There is a carrier, just around giving us sustain as well the damage. And looking on to the board, then we can see that Aaron the Crate is going with the Blazing 2-8 over onto the Grange, taking down the HP so low. But right now, he also need to be really careful because there is someone is waiting for him inside the bus. Yes, both the team roamers are currently trying to get in the goal lane, but in the mid lane though, Mirio is so low, gets taken down by Rudy, and this is just gonna be the Selena who is gonna get the kill as well. Selena, which on the Selena is showing back shades of 2019. And he is here to say that, hey, Indian mages are one of the best in the world. And that is just the story right now. But right now, this is what IGN were counting on. You need to strike with the Selena and you need to strike early. So this is just one checkpoint they have clicked on. We have to see what else comes in. Because there is LCF, of course. And if anybody does, it is LCF who knows how to control the tempo of the game, Yuena. Definitely, as we can see, a good matches going on for the team IGN. It's going in a really smooth way, but also they have to be a little bit careful about everything they're gonna do it. Every execution, every team fight they will be going in right now, looking onto the ball and the ball. Oh my god! EO just popping out for the survival. That was a really close call. Definitely so, and this is what IGN need to be capable of. And they need to avoid is getting caught off guard one too many times, as Mirio is stuck in a bad place, but she does use the tsunami, which results in just getting herself killed. This is gonna be the second turtle spawning in, and let's see who is gonna get this one, because this is gonna be really important for the goal lead for both the teams here, Yuena.
Definitely, and also we can see, the team LCF are having a good river control, and I guess, the team IGN already knew that they won't be able to get this one, so they didn't, just engage onto that. But right now we can see that also the Gato Kasha getting shut down, though he tried to, steal away, though he tried to create the distraction, but his teammates, they didn't, went into team fight. So yep, he was taken down as well. The neutral objective, but looking on to the both side, we can see the really fine bits. My God, so long too. Just surviving on the tsunami slam by Kelly. Wow! Taken down by the Selena. The abyssal arrows are coming from onto the hill. My God, the Selena is not stopping over there, but the witch also needs to fall back because in that situation anything can happen because there are also parts present out there, and we can see another team fight breaking in. The Kalia is diving in onto the hills, and he is getting surrounded by 4 other people. The electrifying bits as well. The EOG popping in, and the hill is using the flicker and surviving from the situation. This is just IGN coming for whatever they have. LCF are in trouble for now as IGN are playing their cards wonderfully, right? That was a wonderful escape by respect, and there is no respect for Rudy as he gets destroyed. This is gonna be stuck easy. Next on the chopping block. Yes, everybody is going in. They are not gonna let you live a life, stuck easy. You are taken down, and so will your turret go away. This is IGN trying to fight back here. And Yuena, why do you think they are having such an amazing game here? What are they doing different from the previous games? I mean, the pressure is too much onto their heads, and as well, they don't want to lose this match, As well, they have a really good competition onto their hands. They are the two, initiators. They have a good sustain as well. There's Selena over there with the abyssal arrows onto the middle. We can see another, fight happening, but right on the hills is going back with the flying bits coming in from their back, dealing a lot of damage from the partner. The sword is onto the point, but no damage has coming from the Granger as well. The back Selena onto the hills. Oh my God, the IGN are making a good comeback. This is just the IGN we have seen so far. This is just like how they play, and I think a little bit of pep talk has definitely helped them out because they are doing what they need. And when I was looking at the draft, I was just thinking, what will this LCF lineup do with this kind of mobility which just the IGN has? And this is what it's showing off. Look at that. You do the air feather strike, but IGN will be nowhere near the place you want to be. But here is the turtle. This is going to be secured by Barats. There is a fight going on in the turtle region. Barats just jump it on. There is the blazing duet connecting onto Boo. He's going to get taken down. This is going to be roaring in between 4 people of IGN. Make it 5, and nobody's safe apparently because everybody is having a hard time. Tuck easy. Somehow going to survive cause, but dang, Rom-Com comes in with clutch Chris cracks there. Else it was gonna be a disaster for a lot of people in LCF. Look at that, Rudy being chased down. He is supposed to be the counter to assassins, but he is being chased down himself. So this is just how IGN need to play exactly to make a comeback situation here. This Predator strike didn't do much at all. So I think LCF are playing on the wrong foot here because they are not just playing with the draft. They have just drafted. They need to play in tandem with what they have got in the arsenal. My gosh, the joy damage is so good, the way the respect is diving with the electrifying dispelsion, and we can see the Granger along with getting taken down inside the turret, the respect taking down the Granger as well. We can see the Rudy just going for the joy, but she won't. The Beda strike is onto the play. The one hit onto the respect. He can only 5,000. Look at this is going to the point, but the Hilda is surviving out and also onto the top lane. Oh my God. Down so long to that's the parts of the surviving from the situation. My God, but no, the Rudy won't be able to survive one basic attack by the Selena. He was taken down. Did you just see how Respect just survived there? The Feather strike was used, Hilda burned the flicker, and look at that! Mirio is not gonna let you go, Boo, because he is running, and he is gonna throw this kitchen sink at you, literally. This is what is happening right now, and this is a complete
changeover from the gameplay we were seeing so far. We are not used to this kind of IGN, and so isn't LCF clearly, because they are facing so much of problems here. Maybe they need to regroup because they are having a hell of an issue. Look at that AOD perfectly connecting on the barrage. How much can you sustain with the blazing duet coming right in the face of Boo? And he is not going to survive as well. Claude is online, and that is just sparking a lot of worries for IGN. Look at that. Stark Cheesy caught in a bad position. The BMI will come in clutch. He will be cleaned out as well. And this is how LCF is going right now. I think IGN will be looking towards the anti-heal items though, because they need to survive the mid to late game as well, which is proceeding. Look at the face crack coming in though. Claude will be shut down. He overstepped his boundaries, and LCF know better than that to punish him off. Yuena, the Lord is coming in, but can IGN take any advantage of that? I mean, the Elemental Lord is marching from the middle as well. We can see the territory falling down, but I guess it's a first lot, so they won't be able to take that much of advantage. But looking onto the top lane, the Padang with the first crack over there, just taking onto the mirror as well. We can see the Hilda joining into the team fight, not letting the Kelia go back as well. We can see Zozan into the team fight. Oh my god, Space Wind taking a lot of damage onto the Kelia as well. The parts are getting the kill. That was so beautiful onto the point as well. The whistle arrows were sent onto the Padang, but he is doing great as well. The Feather Airstrike is onto the plate to clear out minions as well to give the vision. Yes, and then I think Aaron dying on that occasion was the bad situation here. But here comes IGN once again. Boo is going to survive because the Wings by Wings is by his side. But I think Meteor should have been supported a little bit more in the top lane so that his death wouldn't just be a byproduct. It would have resulted in something better. For right now, though, LCF is in the driver's seat. They are trying to take away the momentum, and IGN are not in a very good position, so they have to back up here. Is it gonna be a kill landing, or will IGN turn it back around? Look at Respect in between 4 people, takes down Stark Easy. That is the green signal for IGN to go in all the way in. Look at Claude though, he is gonna be MI in. He has to be MI out, but there's Respect to clean up the kills. Do not worry, Aaron, he says. I'm there to have your back, and that is exactly how you need to play this game. MOBA 5v5, you need to have each other's backs if you have a chance of getting this teamwork involved. My gosh. I mean, already, the team IGN lost 3 of the matches, but still, they are making a good comeback as well. They got the ring onto their head, and the call has been connected onto themselves, and right now they are cooking up so well, as well. The Respect just diving into team fights, just using the advantage up there, the electrifying beats giving a lot of damage as well. The Rhythm of Joy giving a lot of dashes, and also the Aaron the Creator is creating up something for his team, so it's really, amazing as well, looking so beautiful as the team IGN is making a comeback. The LCF are also playing very well, but the thing is, they have a 3 tanky frontliners onto themselves as well. The Barrett doesn't have that much mobility, though the Badang can dive in, but still, he need to be really careful because he has that tankiness, he has the sustain, but, like looking onto the late game, we can see the quad is dealing a lot of damage and he will be melting down. Yes, definitely so. And the Abyssal Zarus just keep shining as Tsunami being popped out by Mario, and there's just gonna be Respect who will join the party. He was just waiting for the Feather Death Strike for faster to connect, and this is just what LCF were doing to IGN last game. They were like, okay, Fasa, go for your ultimate, and there's the Kagura with the umbrella thrown at your head, and this is just IGN returning the favor to LCF. They learned from them, and they have outgrown them. The goal lead right now currently is at a 5k. They're going to secure the lot as well, and this is the second lot secured by IGN. I would like to look at some of the items though, because there needs to be some anti-heal items made on the part of IGN if they want to continue this dominance, because there's a lot of region on the side of LCF. Yes, we can see one anti-heal already made, and I think they will need one more. Hopefully there's going to be somebody who is going to be building it up. For now though, IGN have gotten all of the outer turrets gone, and this is going to be the Lord marching down the top lane. Yuena, do you think IGN has gotten what it takes to close this out right now? I mean, yeah, they're having a good advantage, but also, they need to be very careful, engaging into the team fight, because it's a really crucial moment for themselves as well. We can see the Elemental Lord is there, just, onto the inhibitor, the AOG pop
dinosaurs, and over there as well, he has been eaten away by the dinosaur as well. The batang has been taken down. The Zosan is in the trap. The hills are not stopping over there. But no, the Ronin has been taken in. The blazing to it is on through the play by Arrow the Grinch. By the Grinch looking onto the waves. The IGN just wins this match. Oh my gosh, it was so close call to the team IGN, but they were able to make the comeback. Picture perfect gameplay from IGN right there. Every movement, right from the macro to the micro, was on point, and that is just what we were trying to witness here. We were wrapping our heads around that. And right now, we would like to call upon Debbie. And Debbie, what do you think of this match right now? Are you as amazed as you and I were? I am actually very, very flabbergasted, Roots. To be honest, I did not in the back of my mind I saw that Selena wouldn't work with this composition, but look who's signing. Look who's showing their case, who's showing that they are not far behind. They want to get their redemption back. So even though it's one win that they have, IGN want to come back that they were making because look at that. Stark Tools has been so amazing onto the ground. They weren't able to do anything, nothing at all, and there's no true damage coming out from the side of IGN, but they made it work. They do have so many chances, so many stuns coming through, for which so many escapism made by Respect. This is such an amazing thing to see, and Roots, I think they have what it takes. Playing in the server as well has to be something good. I mean, the mobility, the drafting, everything was just outclassing LCF at this point. LCF might have had the laugh in the first three matches, but this is just pure classic IGN, which we have seen time and time again for years. And they are just living up to their names. Look at that 29% damage on Aaron, 20 and 27 on Witch and respectively. And that is just exactly how they needed to play it. Their drafting was made to the T, and I cannot be more proud of their comeback here. LCF are definitely still in the lead with a 3-0-1, but they have to see what happens next because IGN are right now in the momentum. They have caught on the momentum, and a victory like that, I mean, you're losing three matches in a row, but a victory like that has to place you somewhere, right, Debbie? Yeah, that has to be true. And you know what? Mentalism is also something that they have to look to, right? For I think LCF, they need to have a comeback. They need to, redraft their style again. What do you think, The team LCF, they had already won the three of the matches. If they have won this match, they could have got the victory, got the crown. But the thing was, they had three of already tanky heroes onto themselves who can sustain a lot into the late game. But the thing was, the late game was not given to them as well. They didn't have that much mobility, and Barrett is really good, but still he doesn't have that mobility. And also the Respect just diving in with the joy, he can melt on the front lines as well. He can dive onto the back line. I mean, having that advantage, having that mobility onto themselves, onto their drafts, it was so good. Right now the team LCF, they need to get some good drafting onto themselves, pick up a good lineup, and they can just win this match. So let's see what's gonna happen into the next, because already the IGN has just made the comeback for themselves. I mean, I don't know, something magic just happened for them. I think, we're going to be seeing another game because Yuna said that I would never be able to do that. But yes, that was your game. This was your fourth game, ladies and gentlemen. We are going to be seeing another game because LCF, they are still sitting in a match point, but for IZN, they are surely making a comeback. So we're going to be having another match. So we have to see what are the possibilities going to be there for IZN. Will they have another win, or will LCF take this trophy? So before that, let us take a little short break and we will be coming back for more. The fight is still alive, and so is the grand finals. You are watching two of the best teams fight it out here, guys. So stay tuned, don't go anywhere. You will not want to miss what this is. This is the best that Indian esports has presented, and we'll be back soon. This is Rhodes Official, that was Yuana, and this is our beautiful host Debbie, and we'll be back just in a few seconds with game number 5.
So, see ya.
Hello and welcome back, everyone. This is the Rise of Legends by Blanky Sports and Prime Brook. And with this, we are at the finals today. It's gonna be LCF versus Team IGN, and the scoreboard is already 3-1. With the first three matches directly gone to Team LCF, the final match was a game changer. It was a comeback starting point for Team IGN. Will this be a complete comeback for IGN? Will this be a BTK 180-degree Uno reverse? We'll have to see. But for that, with me, I have none other than Debbie and Sebastian. Welcome, both of you. So, starting off, Debbie, how do you feel about this? I am very excited, Miko, because they were down for IC and they were down to 3 games, so they are showing signs of life. So if they can try to take a new more game, it has to be so good for them. So this is a do or die situation for them. But for LCF, they can take one win and they are good to go. So it's gonna be a very very interesting match, and they are gonna be bloodthirsty. Definitely understandable. And what do you think, Sebastian? I've always seen IGN and they've played so exceptionally well. And just I think they're trying to repeat what happened with, against ABM. They were going in on a 3-0 losing, and then they just came back up on a 4-3 win. So I'm kind of hoping maybe this would work out for them, but they're playing so aggressively. And even though they did, like lose out on three of the rounds, I have to say they're getting back on their feet. They never like they're doing so well in the late game phases. So I'm so proud of them right now. Definitely. Now, once I know that both of you, how you guys feel, I must definitely say I feel the same thing. This is gonna be so interesting. At the same time, it's also gonna be hard for us casters to digest, and like, well, the audience are gonna have to stay up again because after all, this is such an exciting match. But then again, we will be moving on to the draft phase soon enough. So after the last game, Debbie, who do you think, what extra bans or picks do you think we will be able to see here? I think IZN they might still stick to Raren's ban. I mean, Raren's hero ban because he's been so exceptionally performing so well onto the Baxia. Again, not many of the teams or junglers use this Baxia in this meta, but he is the guy who always make it work. So I think there are gonna be chances that Lucas ban or maybe a possibility for Baxia ban coming through. So I think there shouldn't be a chance that they might stick to that. Definitely understandable. Now, we do realize that in this meta, the mages have a lot to play, but then again, the mages are supporting the supports and the jungles. So, the utility jungler, their utility has completely skyrocketed. And comparing against respects like, the assassin junglers, I feel like the junglers which Raren uses and can be a bit of an issue. So with that, we have already started off with the draft phase. So Sebastian, who do you think will be the priority pick among these teams? Rocks need That no is hard to say protection because from the the rain. junglers and the roamers are doing so exceptionally well, and it all kind of goes down. It depends on them, especially in the group fights. Because if the tank does not set it up well, the roamer, like how here it's gonna be Zoshin, and it is against Rudy as well. So these two, they're so exceptionally well. I have to say, I've never seen plays like these, but they are doing so good, and it's working out for the team. But they have to either ban out, respec ban out either the opponent's jungler heroes, or it's gonna be the roamers, because the mages you can kind of take care of them a little bit ish, and even the marksmen they're like quite a number of counters for them, so they you don't really need to look out for those two unless you have to gank in their lane to not get the farm out well. But I'm not looking through here because the if the roamer The or the Immortal jungler One does not chose do me to well, it's an vanquish the easy loss for either shadows of the that teams. plague this world. Definitely understandable. But here I do see that Zushin has been banned, even though IGN does have the first pick. They do not play Always on the Bashia, way. and as Debbie said, that is completely understandable. But do you Mhm. really think Zushin was necessary to be banned? Because I feel like they might have been like prioritizing some other hero.
also, I do realize that this match Magic is is gonna my be in the life. Mumbai server, so I do feel like Fanny is kind of a wasted ban because I don't think respect might have gone for that. Experience the But then again, we euphony of do see the amount of suffering. respect that the ban holds. Debbie, what do you think about this? Granger has also been locked as the first pick. Oh my goodness, this is actually so good, Mako, because for IGN, most of My their tail's wins been has itching been for a provided real fight. by Aaron, the creator of the When you Granger. But gaze when into you the abyss, prioritize your Granger, the you are gonna be abyss losing out to stays a important spark. heroes. That has to be those Kalia and the Selena being picked away. So I think this is a Oh. change up. This is a change up for the previous game because into the previous game, IGN they got the Kalea and the Selena combination, but the Kalea went to the XP side, and they also made it Muscle work of because iron, yeah they were bones of trying to go steel. all over the map, but right now they are denying pick for IGN because look at that, they go for the Gatot for themselves. Definitely. Now, that was technically a complete repeat telecast of the last match, like the first big Ranger, the trade off with Let's fight to Selena our heart's Kalea. But content. then again, we do see, look at that. Now, these are really interesting picks, Sebastian. We see the Beast Boy with Gatot Kacha onto the hands of IGN. Oh man, I love that he might, or he could be going to the XP lane because he does exceptionally well, I've and he's been being. waiting for We're too seeing a long. huge, amount of EXP players playing Gatot instead of the usual Terizla or the Deroth that we do see Where in the there XP is lane. light, But I there love that are even also Lucas here might shadows. be a versatile pick here because he can either go into A the jungle punch for or a he could punch. go into the EXP lane. But I do love that Reren would be picking out the carry over here to counter out such heroes, and it is a good spot here considering the fact that they do have a really good single target heroes like Selena and that Kalia as well. So it Time might to work out drop for the them beat this of the time. flash. Definitely, we do know that Stark is pretty much comfortable with Carrie, as well as, Carrie being the tank killer. She is also Let's hear from pretty the good crowd. against Make Lucas some or noise for Gatotkacha. yours So, truly. Debbie, who do you suggest here as a marksman, like, the gold laner to be played against a Carrie? I think they already got the Granger for themselves, so yeah, I feel like for LCF, I think they can secure Romcom's pick here because already IGN they already banned out the CC and the Fomis. The My only mission option I see is to is protect the Latang, lives. but okay, they still go for the Hylos. And I think LCF they want to put the Kalea onto the XP or try to put these Hylos into the room. That has to be something that's more suited for the playstyle of Romcom because he loved going for the sets, he loved going for the pickles. So if it's like a different kind of draft, I'm not sure. But right now for IZN, it's still a flex, right? Because look at this, Lucas can still go into the jungle. Hmm. That is understandable. Then again, we do see Hylos and Kalea on the side of Team LCF. I feel like both of them has a lot of sustain. The only things left are okay, they are not the only things left. So there's a mage left from IGN. And for LCF it's Payback gonna be time. their All who dare stand in my way Okay, will I be love devoured. that. I think Zoshin is gonna go for the art, the art of the ejector. That's gonna be Jawhead himself. It's gonna be working out well because I think now they're gonna be targeting out either the Kalia or the Selena from too much from coming in too much a little from singling out their heroes and taking them away from the fight when it is needed. But then the Hanzo pick, I think this could be a really good counter against that Lucas and the Jawhead as well because they're not going to be able to deal as much damage as they thought they would, and he's always going to be able to escape unless the feathered airstrike is always ready to take him down instead. Definitely not. That is completely understandable. Sebastian, as you said, Jawhead will be there to take them away. But you know what, right now? It is time for you guys to take us away and take the audience away into the land of dawn because we will be back after the match.
Yep. Thank you, Miko, for that. And we'll be seeing you right after this game because right now this is gonna be a do or die situation for IGN and a win or a take it away for LCS. So we have to see who's gonna be coming out on top because the draft is looking so spicy. There are baits, there are pickoffs, there are rains. So we have to see who executes it better. Because look at that, Sebastian. It's actually Rudy onto the Kalea instead. I do like that because Kalea works so well as a roamer. You could either go put her into the EXP lane and kind of, punish, use the punish zone more often, but it's not really gonna work out on a hero like Lucas or on that Farsha as well. So it is pretty good that Hylos is still a respect pick. I would say. Oh no, sorry. What was it called? Flex pick. Yes, that was the word. I was Like looking for. My bad. that is weird because look at the trap set everywhere by Boo here onto the Selena. And you know one thing I like Sebastian about the high lows into the XP side is that with the ring of punishment, he's gonna be stopping the constant amount of passive coming out from Miro onto the Gato Kacha here, and the basic attacks are gonna be slowed down quite a lot. So he might be struggling just a little bit because look at the rotation coming out from LCF. They do understand that their winning side is actually the XP, and the turtle will be spawned here, so they have to be starting to give pressure into the XP side. Alright, the arrow does hit, but will they be wandering soon? Because the turtle has finally been spawned in. Rudy trying to get that level 4 as soon as possible, but I don't think he will be able to get that enough. The EXP lane looking like it might be, time for war here, as it is the final match, possibly for IGN and LCF. If LCF does take the win over here as Rudy here trying to initiate the fight onto thing here. He does take him away, but the flicker saves Zoshin instead. The AOG connects, stealing away the purple buff coming in once again. Romcom not looking good here. Zoshin pulling them off, and I think he might get the first blood. He does get the first blood onto Hanzo as well. Boo looking like he's in trouble, and he had to pop that flicker off and get away from that instead. Like I said, the ejector on the early game is dealing too much damage, and it's going to work out well for a hero like, Hanzo, because he has exceptionally low HP, considering the fact that he's going to be able to spam that ultimate skill every single time. Yeah, he can do that, but still he's gonna be so vulnerable when he's back into his body. And I think the position is gonna be so important for Josen here onto the Joe hat. And I think for the early game, even though they have a Selena and a Kalea combination, LCF they have to play this so safe because they cannot take the chances to lower down. Look at the sun connecting onto bits, but it was so far away, just a spot of a vision. But yes, we can see the mid might be under the pressure here. What the heck is up with Boo's predictions? Did you see those arrows? My goodness me. It's either he hits or he does not hit, but it's always such a close call. Oh my goodness me, Miraka almost being taken down. Rudy is able to save him from that possible outcome, but Zoshin might be able to take him down here. He gets flown away by Rudy himself, and I think the ejector might be working out well as Rudy does get them away. Aaron gets to escape that off, but Romcom looks like he's in trouble, and Aaron does take him down instead. Oh man. Oh my goodness. Shockwave on your face, Raren able to survive that shockwave coming out from Respect here, but he's taken quite low. Will he be dying into that buff? I think it's so low, but look at that meteor rotating very early on onto the goal side. This is an omnipresent kind of movement coming out from your XP lane, and if your XP lane is rotating very early, your mid is going to be having a good time, especially onto the start of this neutral objective as well. So IZN right now, they are having the map controls. They can try to get this second neutral objective into their hands, and maybe there's a possibility that there won't be any contest coming soon for LCF. But look at the top side. Ooh, once again, Aaron trying to be picked off by that Rudy, but Zoshin gets taken away instead, and I think he's going to be the one being taken down. The ejector works beautifully, and the taunt coming in from Gatot. Once again, Vivich taking the single hit to take him down. This is looking good. This is on a 5-1 already within 5 minutes. IGN coming back on their feet as the Bissell arrow does get, a little advantage
onto the side of Zoshin for Hanzo to get that away, but I think Respec here will be getting that easy turtle for their side. Debbie, I just have to ask you, man. We've seen Yeah. IGN do this again against ABM. I've mentioned it before. They almost, Yeah. it's just too good, I would say, and Respec and all are Oh. having a comeback, but Zoshin is taken down instead by Miraka and Aaron the Creator. Looking like he might be in onto trouble here as he does not have the Purifier to save himself. Along with Boo and Miraka, they do finally get him to, you know, stop the stacks coming in as the late game is gonna be where Aaron is dominating the whole bloody game. Yeah, I mean, they do not want to sit and wait out for stock to come online, so they want to have this into the mid game too. So let's see. For IZN, they are actually losing out the controls that they have just because they lose out Aaron onto the top side as well. And the big rotation coming out onto the bot side where Respect was meant to clear out the lane or try to push out just a little bit onto the XP lane, meanwhile making Mirio rotate quite a lot. But a good read LCF did there because they were able to defend it. Kalea was there. Rudy, along with Raren, were able to defend onto that bot side. And I think this is a part where both of these teams understands each other rotation, so they are just mirroring each other. So it's gonna be very hard to see who's gonna be having the control into the mid side, because even if we talk about the gold lead, actually ICN does have the lead, but still, look at the coming through. In for Aaron, and I think he might be able to get this, but no. Oh, he taking down his head. Zoshin look like he's gonna be in trouble, and I think Kalia definitely get that kill onto him as well. That was a beautiful, single elimination coming up from LCF. They have to start doing this, otherwise Zoshin is just gonna throw them off away again and again. And he always does get the right hero as well. But look at that Boo once again. Who's catching Muriel? Yeah, this guy has been providing so much of vision for LCF that even if they try to go for the ambushes, they weren't able to do it, because look at that, another vision into the bush there. And Mirio, I don't think he will be taunting anyone from the bush anytime soon, but look. And I'm not sure for the airstrike right there, but still, the zoning potential coming out from IZN is so good that they might be able to take this turtle. Exactly, and there we have it. At least they are getting back the turtle over here. It's already 2 right now, so the EXP and the gold buff, sorry, the buff, I would say kind of a buff right now, because, you get a lot of advantage coming out from that. But Mirio once again catching Miraka, but there we have it. Kalia with a single shot showdown, and Hanzo trying to deal as much damage as possible, but look at the damage coming in from Lucas as well. The mid lane here, so important, and oh my goodness me, the Purify has been popped up. No more Purify for Aaron right there. And they do get that bottom lane turret as well. This is looking good. This is a good trade, because the flickers had been popped off. Rudy does not have that single target, the further range that he's going to be able to have to take away either Lucas or even that Jawhead from dealing, a little too much annoyance on the side as well. And I think already third build onto the hands of this Aaron here is going to be cooking quite a lot, but Raren, look at him. Once again, Zoshin look like he's in trouble. He does get taken down by that punish zone. But Vivage, he might be in trouble over here, but the Phoenix, he saves him instead. There we have it. Lucas dealing in as much damage as possible as well. Boo! Oh no! Boo flickering into the wrong position over there, in hopes of getting Vich away from the fight. But he gets down instead. Oh my goodness me, what? You know what, Sebastian? There's so many fights everywhere. I thought this was going to be a slow game, but yes, still a fight, very, very chaotic on top of that, but a little bit lesser deaths than we did see into the previous game. So they are supposedly showing signs of understanding that all and nothing is all about the brawl. And ICN, they have a playstyle where they do not go for many team fights, but LCF, they try to stay in fights as much as possible. But right now, onto the bot side, I think the turret will be onto the focus, but a good clearance coming out. And look at that, all teams are gathering into the bot side here, because they are going to be focusing on the lore here at the start. I have to say Aaron is so careful, and for a good reason as well. The Selena and the Kalia are not looking good here. The Lord being targeted by Hanzo himself. Kalia once again lifting them off with Zoshin, pushing them off. The Retribution, beautifully placed timing as well.
And get double kill coming in from Aaron as the Rhapsody hits once Whoa. again. Ooh, looking like he might be in trouble, but there we have it. He does get away, and I think it was for a good decision. They've lost the Lord, and they lost two heroes coming up as well. Hanzo Oh trying to make my a difference a goodness. little bit here and clear out that wave lord, but I don't think it's working out well. They might be able to get this, third tier turret over here, and for a very good reason as well. The Oh lord my still goodness. marching in as the gold shield here might be taken away a little more quickly than the lord, and yes, it does. The shield here takes so much HP away from the lord, and they're going to be able to Lord? enjoy a second wave of Lord minions as well. So this is looking good for Team IGN. Yeah, look at the AOC again. Lucas once again, Zoshin with the Art of Ejector coming up. Rudy trying to be taken down here, but the Flicker saves him up from IGN instead. But there we have it. And I think this might be a possible win coming up, but the damage coming in from Aaron once again with the Rhapsody. Oh my goodness me, and I think they're trying to end this as quickly as possible. As Hanzo here, Aaron with the double kill. Oh Coming my up goodness, once again, he's maniac! taken down. A maniac from Aaron. What? Not only Sebastian, did I'm they make a very. comeback of their career, Oh my god. another This is one, crazy. another maniac. Oh man. Aaron does not disappoint when it comes to Granger, and he played it so well. But I have to give hats off. The real MVP here was Zoshin. True. Yeah, definitely. Um, Crazy. So, would you care to explain what the heck just happened to LCF? IGN are coming back on their feet. This is straight up weird because they always do this. They love doing this. They love toying around with their opponents. And IGN right here are doing exactly that right now to LCF, proving them once again who deserves to be on that final spot as the winner. Yeah, that has to be. But I think we will be needing Miko for this because I can't grasp what's happening here. Yes, Mako. Hello, Mako. Are you still with us? Of course I am. And as expected, that was such an interesting match. I feel like IGN definitely knows how to pace themselves because they have been trying to be aggressive. And, they did know that Selena would have an advantage in the early, but at the same time, they did not let them take the early at all. We did not Exactly. even see the vertical jungling coming in from Hanzo. So everything was completely at pace. The momentum was completely guided by IGN. The itemizations as well, Debbie. What do you think about these? Itemization wise, I would say I think for Rudy, he definitely went for the antique caress very very early because it's also gonna be understandable, but he might eventually be needing the dominance eyes, because even if you look at Romcom, he was on the pathway to going for the dominance eyes, but he prioritized the Thunderbelt first. That has to be the main thing here because they have for the side of IGN, they have Meteor onto the Gatot Kaza, Respect onto the Lucas again. They are going to be healing quite a lot. So I think they did not think it's going to be a very early end, so they prioritized other items. But I would have hoped that they could have gone for the dominance instead. I see. Now, definitely that is understandable. Look at the damage though. Looks like Selena and Carrie did try their best, but then again, Granger with so much damage, about 74,000 damage. So now we definitely know Aaron likes the brick as well as he's comfortable with it, and now we understand why. So we will be going on to another round of the matches with the scoreboard at 3-2. We definitely are wondering now, what do you think, Sebastian? Is this going to be a complete comeback? The way Zoshin and the way Aaron are dominating the battlefield right now, it is a possibility, but it's still a 50-50 chance for them as well because if LCF does win, they're going to be taking home the trophy and the certificates as well. So I would say that if they do manage this, come on, man, hats off once again, IGN. They make Yeah. plays like this every single time. Definitely. Well, then, guys, don't worry because we will be taking a short break and we will be back with the next match of the series soon enough.
सुस्वागतम, वेलकम बैक गाइस। अभी बज रहे रात के 12:05, आधी रात हो चुकी है, पर पार्टी अभी बाकी है। एंड शायद यही कहना है आईजीएन का, क्योंकि जो हम लोग देख पा रहे हैं, मनोरंजन जो आपका हो रहा है, इसीलिए शायद आप इतनी खचाखच भीड़ में है। एंड आई थिंक यही आप चाहते थे कि एक टक्कर का मैच मिले। एंड भाई टक्कर की बात करें तो क्या ही सीरीज देखने को मिली है। ये गेम ऑन हो चुकी है। करंट स्कोर लाइन है एलसीएफ 3 पे एंड आईजीएन लगातार 2 बार जीतने के बाद 2 पे आ चुकी है। एक और मैच एंड ये सीरीज टाई हो सकती है। ऑल्दो एलसीएफ अगर ये वाला मैच जीतती है तो वो बनेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ विजेता। इसी के साथ हम चाहेंगे आपका ध्यान थोड़ा सा दो शख्स के ओर बढ़ाने का। एंड दोनों ही शख्स ने आज कास्टिंग तो की थी। एंड दोनों शख्स से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आज जो देखने को मिला हमें, जब आप देख रहे थे आईजीएन के मैच को, एलसीएफ के मैच को, दोनों के गेम प्ले क्या सुधार आया है। अगर ऐश आपसे बात की जाए तो क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन आया है यहाँ पे कि ऐसा एक कमबैक देखने को मिला हमें। सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, यकीन रख अपने आप पर और आज ये मैच को जिता कर दिखा तू। यही मैं बोलना चाहूंगा आईजीएन के लिए। इस मैच को अगर जीतना है उन्हें, इस मैच में अगर उन्हें वापसी करना है, तो उनको आज अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। फुल पोटेंशियल इस मैच पे उन्हें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी एलसीएफ पैसेंजर सीट पे बैठी है। अगर उसको खींच के ड्राइवर सीट पे लाना है, सीट बेल्ट बांधना है, तो इस मैच को जिताना पड़ेगा उन्हें। वाह 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 एसटीसी भाई, आपने तो दिल जीत लिया अपने शायरी से। पर यार फिलहाल हम पूछेंगे एसएम भाई को, क्या लगता है वो जो बोलते हैं एक शब्द एनालिस्ट। एसएम भाई, आप अगर इसकी एनालिसिस करेंगे तो क्या लगता है, क्या बदल गया आपके जाने के बाद। देखिए, जाने के बाद तो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए टीम एलसीएफ के। क्योंकि यार वो जिस तरह से डोमिनेट कर रहे थे, हम जाते जाते कह भी गए थे कि ये सांप सीढ़ी का खेल है जोश। अब पहुंच तो गए वो 99 नंबर पे, पर वो 99 नंबर वाला सांप जब डसता है ना तो काफी जहरीला डसता है। और उस तरह का डसा है कि यहाँ पे अब स्कोर जो है ना वो 3-2 पे आ चुका है। अब एक और जीत एंड फिर तराजू बराबरी के ऊपर, तो वो सिचुएशन आ चुकी है। बट अभी होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक जीत यहाँ से लेके चले गए तो हो जाएंगे वो चैंपियन। चैंपियन की सीढ़ी से 1 कदम दूर है और 2 कदम दूर है अब टीम आईजीएन। कमबैक हो चुका है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मोबा 5v5 का गेम है वो ऐतिहासिक वापसी के लिए जाना जाता है। चमत्कार को नमस्कार है दोस्त यहाँ पे। जी बिल्कुल एसएम भाई, एंड क्या बात बोली अपने। निनिवान में से जो सांप दसता है तो काफी गहरी चोट लगती है। एंड शायद ऐसी ही गहरी चोट एंड सदमे में अभी एलसीएफ फिलहाल हो सकते हैं, क्योंकि वो अभी बैक टू बैक 2 मैचेस हार चुके हैं। एंड आईडीएन का जो गेम है वो काफी अग्रेसिव हो चुका है। बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है हमें, इसीलिए शायद ये दोनों ही टीम्स अभी बहुत ही टक्कर के मामले में आ चुके हैं। ऐश, अगर ड्राफ्ट की बात की जाए तो क्या लगता है इस बार एलसीएफ और आईजीएन को क्या गौर में रखना चाहिए ताकि वो ये मैच जीत पाए। What's your command? यहाँ पे आईजीएन बोल रही थी, क्या लगा था नहीं आएंगे क्या, आ गए लो, आ गए हम लोग वापस, आ गए, वापसी कर लिया। अभी जो है ड्राफ्ट का जो खेल है वो बहुत ज्यादा पेचीदा रहेगा। 80% मैं हमेशा कहता हूँ ड्राफ्ट जो है वो 80% गेम को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे वो डिसाइड करेगा। देखिए आज शाम से रात में आ गई बात है, लेकिन अभी तक वो आईजीएन का बादशाह बैन बंद नहीं हुआ। वो तब से बादशाह को बैन कर रहे पहले मैच से। मतलब रारेन को एक बार आज मौका नहीं मिला बादशाह यूज करने का। मतलब वो रारेन ने ट्रेडमार्क लगा दिया है कि आई एम अ बादशाह यूजर, मैं हूं बादशाह अपने बादशाह में। तो इसीलिए उसके बादशाह को निकाल दिया गया। और साथ ही साथ हैरिथ, फैनी, सुयू, प्रिटी सेम बैन हमें देखने को मिल रहा है एलसीएफ की तरफ भी, क्योंकि आप रेस्पेक्ट को उसका सुयू नहीं देना चाहते, आप रेस्पेक्ट को उसका फैनी नहीं देना चाहते, वो उस तरफ से रारेन को उसका बादशाह नहीं देना चाहते। और इस बार तो उन्होंने ग्रेंजर को भी बैन कर दिया, एरन को ग्रेंजर भी देना नहीं चाहते। तो पूरा टारगेटेड बैन्स दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है हमें। बिल्कुल ऐश, बिल्कुल। एंड अगर हम बात करें तो जब आईजीएन 3-0 डाउन थे, उन्होंने बोला था हमें कुछ नया करना है, कुछ नया दिखाना है, हम जाएंगे तो लड़के वापस जाएंगे, हम हार मान के अभी पीछे अपने पैर नहीं डालेंगे। एंड शायद इसीलिए वो कुछ नया ट्राई कर रहे थे। पर यहाँ पे तो लगता है एलसीएफ My tail's been itching for a real fight. जो स्ट्रेटेजी है पास की वही अप्लाई करते हुए
उन्होंने अपने बैन्स किए हैं। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स मटिल्डा तो बैन होना ही था आईजीन की तरफ से, क्योंकि एलसीएफ जो मटिल्डा खेलती है वो लाजवाब तारीफ होती है। When you तो अभी gaze के लिए into अगर the देखा abyss, जाए तो कालिया the एंड सलीना abyss पिकअप कर लिया gazes आईजीन ने फिर back. से। हम जानते हैं कि ये बंगाल सर्वर होने वाला है, जो सबसे मस्त सर्वर होता है आईजीएन के लिए। एसएम क्या लगता है, 2 बार क्या यहाँ पे लाइटनिंग एक ही जगह पे कड़क सकती है? जी बिल्कुल, होने को तो वैसे कुछ भी हो सकता है इस गेम के अंदर, क्योंकि कह नहीं सकते हैं यार, यहाँ पे अनिश्चितताओं का दावा वाला ये गेम कभी भी बन के निकल आता है। अब देखते हैं कि सर्वर एडवांटेज तो चलिए रहेगा, तो वो फायदा तो डेफिनेटली उनको होना चाहिए, उनके अंदर वो पोटेंशियल है जरूर। चलिए, वो उन्होंने See जो value मोमेंटम in me? खोया था, वो बात हो रही है मोमेंटम की, तो You मोमेंटम तो should. उनको मिला है। अब उसका कितना भरपूर इस्तेमाल कर पाते हैं वो भी देखना रहेगा, क्योंकि आप देखें तो काफी समय से खेल रहे हैं वो। अब 5 मैच खेल चुके हैं, थोड़ा सा वो होता है ना, मेंटल प्रेशर्स भी यहाँ पे दोनों टीम्स के ऊपर आ रहे होंगे, प्लेयर्स के ऊपर भी आ रहे होंगे कि आप एग्जाम्पल के लिए इतने ज्यादा गेम्स खेल लेते हैं ना, तो स्ट्रेटेजीज में भी थोड़े से एक होता है कि आपका ज्यादा पिक बढ़ जाते हैं कि आप जो करना चाहते हो ना वो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ ये भी होता है कि आपका डोपामिन उस तरह से साला रिलीज होता है कि जो भी I've हो been देखा waiting जाएगा, for too long. खत्म करो इसको अब। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग स्ट्रेस को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे ही जो फोकस होता है, जो मेंटल एप्टीट्यूड होती है वो भी घटती जाती है, जो मेंटल स्टैमिना होता है वो डिक्रीज होती जाती है। एंड अभी के लिए अगर बात की जाए ये पांचों गेम खेलने के Sand बाद, rises तो when I give the एलसीएफ word. थोड़ी सी जरूर मायूस होगी, क्योंकि वो अभी फिलहाल हार रही है। एंड आईजीएन जो है उनके लेवल में एड्रेनलिन काफी अच्छा दौड़ रहा होगा, रगों में उनका खून बहुत ज्यादा बह रहा होगा, क्योंकि वो लोग अभी 2-2 विक्ट्रीज पे है। तो अभी के लिए जी अगर देखा जाए तो कैरी के साथ कालिया Hayabusa, एंड सलीना पिक हो Sanjo. चुकी है। एंड एलसीएफ ने उठा लिया है अपनी ढाल वाला है अपना हीरो जो है फेडरिन। तो स्टार एसटीसी क्या लगता है, क्या ये रारेन का जो फेडरिन है, जिनको हम इंडियन वाइस के नाम से भी कभी कभार जानते हैं, क्या ये हो सकता है एक वेपन अगेंस्ट ये जो ऑनस्लॉट क्रिएट करते हैं ये सलीना एंड कालिया की जो जोड़ी है, क्या ये घातक साबित हो सकता है? घातक साबित की बात तो दिख तो रही है, क्योंकि कैरी एक टैंक किलर के नाम से जानी जाती है, वो टैंक को तबाह करने के लिए जानी जाती है। तो कैरी पिक यहाँ पे इसीलिए किया गया है, और हम देख रहे हैं कि कैरी पिक आजकल बहुत अच्छे से काम दे रही है। लेकिन मोबा रारेन, आपने जरूर उन्हें इंडियन वॉइस बोला, मैं तो उनको मोबा रारेन बुलाता हूँ। मोबा रारेन का भी उनका एस पिक है, और रोम कॉम ने भी अपना एस पिक लिया है बैकलाइनर्स को डिसरप्ट My करने के लिए, mission उन्हें तबाह is करने to के लिए। वो protect फोबियस का पिक lives. भी हो गया है। एड्रेनालिन की बात हुई, डोपामिन की भी बात हुई। एड्रेनालिन यहाँ पर आईजीएन में चल रही है, डोपामिन यहाँ पर एलसीएफ में चले, लेकिन दोनों के साथ साथ कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ता है रूट्स भाई। और एक बार कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ता है ना, तो स्ट्रेस हार्मोन इतना अच्छे से बढ़ता है कि स्ट्रेस अपने आप जो है Muscle पिक रेट of में होता है। iron, तो वो स्ट्रेस को bones भी of कमाना पड़ेगा, steel. वो कॉर्टिसोल लेवल को भी कमाना पड़ेगा। सिर्फ एड्रेनालिन बढ़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर काम रह के दुरुस्त रह के जो है सोच कर समझकर मंजी हुई जो कदम है वो लेनी पड़ेगी आईजीएन को, क्योंकि ये अभी भी वो लोग ड्राइवर सीट में बैठे हैं। उन्हें कुछ भी करके या तो पैसेंजर सीट तो और जा नहीं सकते, कभी भी ड्राइवर सीट में ही रहना पड़ेगा आज पूरे दिन। अभी बात यह है कि अभी सीधा खींच के लाना है एलसीएफ को पीछे से आगे, कि तू भी हमारे साथ बैठेगा, डू और डाई खेलेंगे तो एक साथ खेलेंगे आखिरी मैच में। तो अभी उस चीज के लिए ड्राफ्ट चल रहा है, और अभी देख सकते हैं कि सेकंड बैनिंग फेज में कितना बढ़िया सुंदर सा बैन देखने को मिला टीम आईजीएन की तरफ से। रोमर हाई लॉस को क्यों बैन किया इतना पता नहीं, क्योंकि कैरी था हाई लॉस का काउंटर, लेकिन खलीद का बैन एक समझी हुई बैन है। नहीं चाहते कि इन्वेजन हो जंगल पर, नहीं चाहते कि कैरी पे वो इन्वेजन हो, रोटेशन ज्यादा मिले, इसीलिए जो है खलीद को यहाँ पे सीधा स्टॉप किया है, उधर से हायाबुसा को निकाल दिया है। रेस्पेक्ट क्या पिक करेंगे, अभी रेस्पेक्ट के लिए बहुत बड़ा सवाल है। नोलन ही खुला है यहाँ पर से। Let's go. जी हाँ, अगर खुले चीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट का जॉय भी खुला हुआ है। एक लियोनिन बच गया है जो कि यहाँ पे पिक जरूर हो सकता है, एंड वही देखना पड़ेगा क्या रिस्पेक्ट फिर से लेंगे वो, क्योंकि अगर यहाँ पे पिक्स की बात की जाए दोनों भाई लोग, तो यहाँ पे फोवियस आ चुके हैं मैदान में। जैसा कि हमने आईजन का गेम प्ले में देखा है, बहुत ज्यादा डैश हीरोज की यूजेज वो लोग करते हैं, जो ब्लिंक स्किल्स है वो बहुत यूज होते हैं, एंड उसी के लिए शायद ये फोवियस उन्होंने चुन लिया है। एंड जैसा कि एसएम भाई ने भी कहा, फोवियस काफी एक अच्छा वेपन है जो एलसीएफ काफी बार यूज करती है, एंड इसके साथ लॉकडाउन करने के लिए बडैंग भी आ चुका है। तो देखना पड़ेगा क्या आईजीएन एक और डैश हीरो लेके चांस लेगी या फिर कुछ और उठाना चाहेंगी। एसएम भाई आपका क्या कहना है?
चलिए चांस लेंगे नहीं लेंगे 29 सेकंड्स में उसका जवाब जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ एलसीएफ वो चलिए सज धज के तैयार हो चुकी है, उनके योद्धा अब आ चुके हैं। अब वो किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि वो एक कदम जो है ना वो परेशान तो करके रख रहा है उनको। एंड दूसरी तरफ टीम आईजीएन उनके 4 योद्धा तैयार हो चुके हैं। अब एक आखिरी पिक, एक आखिरी दाव, लेकिन ऐसा दाव उनको चलना होगा कि वो फिर तराजू जो है बराबरी पे लेके चला जाए। बस एक जीत जो है दूर है वो एक बराबरी से। एंड लूकस चलिए वो आ जाएगा तो मजा तो चलिए उसमें बिल्कुल आने वाला है। बीस्ट मोड के साथ वो परेशान करते हुए दिखेंगे तो थोड़े ही समय में हम लोग जो है मैच की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्सपर्ट आपके पास कुछ ही टाइम्स बचा है, कुछ कहना चाहें तो आप ड्राफ्ट के बारे में या तो फिर ये जो गेम है उस गेम के बारे में। जी हाँ, एंड ये लूकस पिक जो है ये काफी आउट ऑफ द सिलेबस है। मैं और एस तो सोच रहे थे कि कोई असैसिन पिक होगा, पर यहाँ पे ये लूकस जो है एक तरीके से स्टेबिलिटी भी देता है आईजीएन को, क्योंकि उनके पास थोड़े स्क्विशी प्लेयर्स जरूर थे। पर अभी अगर ड्राफ्ट की बात की जाए तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा शायद एलसीएफ का पल्ला भारी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काउंटर पिक्स काफी उठाए हैं। पर ऐश, आपका क्या कहना है यहाँ पे क्या होने वाला है? वो तो हम गेम पे ही देख पाएंगे, पर फिलहाल के लिए मैं लूंगा अपना विदा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं राइज ऑफ लेजेंड सीजन 3 एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय यामा esports in collaboration with of course Blank, and we are gonna see ये होने वाला है गेम छठवा अपने मैच का। ये सीरीज जो डिटरमाइन करेगी 60,000 डायमंड कौन लेगा। एश एंड एसएम, इट इज ओवर टू यू। लीजिए इस गेम का आगमन एंड हमें दिखाइए कि क्या हो सकता है गेम में। गेम है छठवा, लेकिन किसको पड़ेगा वो फटवा, वो देखना है इस मैच पे। कौन ले रहा है इस मैच को अपने दम पे। दोनों तरफ से यूटिलिटी जंगलर का हुआ है खेला। रेस्पेक्ट, जिसको मैं कभी इतना देखता नहीं हूँ यूटिलिटी जंगलर के साथ, हमेशा सुयू, फैनी, जॉय, सब असैसिन वाले मेटा हीरोज वो पकड़ता है। वो आज मोबा रारेन के सामने यूटिलिटी जंगलर लेके खड़ा है और अभी ये मैच देखने का मजा आ जाएगा, क्योंकि 4 सस्टेन हीरो, अगर जूशिन सस्टेन में जाती है तो 4 सस्टेन हीरो एलसीएफ की तरफ से खेल रहे हैं और इधर एक कैरी। एसएम भाई, एक कैरी या फिर 4 सस्टेन हीरो? चलिए वो कहते हैं कि एक जो फल होता है ना वो भी कभी कभी भारी पड़ जाता है अगर देखने जाओ तो। चलिए तो आप देखते हैं कि वो फल भारी पड़ेगा तो फिर दिक्कतें होगी और खैर समय के साथ पता चलेगा, लेकिन फल को आज भारी तो पड़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ चलिए मीरियो कोशिश कर रहे हैं रोमकॉम को परेशान करने की, लेकिन रोमकॉम उनको राम राम करके पीछे आने में कामयाब हो जाएंगे। एंड ये जो स्कोर चल रहा है 3-2 का, वो 3-3 के लिए आईजीएन कोशिश कर जरूर रहे हैं। दोनों टीम अपनी खेती बाड़ी में थोड़ा सा बिजी रहेंगे थोड़े समय के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ पे गलती की जाए दोस्त। चलिए आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पहला खून, फर्स्ट ब्लड जो होता है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है, तो कौन वो चखेगा आज? ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि ये अप्रेजर्स रेत मिस हो जाएगा। मुझे लगा था लग जाएगा, उसके बाद केलिया वो बनेगी पहली खून का शिकार, लेकिन अभी तक पहला खून मिला नहीं है। दोनों तरफ से जो है थोड़ी सी डिफेंसिव गेम प्ले देखने को मिल रहा है। टर्टल पे होगा तमाशम वाला युद्ध। यहाँ पर कछुआ महाराज का आलिंगन हो चुका है। देखते कौन कछुआ महाराज को प्रसन्न करता है, कौन लेता है कछुआ महाराज को अपने तरफ। पहला न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ देखिए बहुत ही समझी हुई सोची हुई कदम यहाँ पर लेते हुए लूकस बफ लिया, अपना रिट्री का जो लेवल बढ़ाया और इसी के साथ साथ कछुआ महाराज का नाचना शुरू कर चुके हैं। लेकिन फाइट हो चुका है एसएमआई। टर्टल डांस चलिए होता जरूर हुआ, लेकिन रोमकॉम को घेरा जा सकता है। रिस्पेक्ट को चलिए घेरा जाएगा मोबरारेन की तरफ से। फर्स्ट ब्लड से क्योर, लेकिन जवाबी हमला दूसरी तरफ से रारेन एक और किल के साथ। चलिए 2-1 का स्कोर यहाँ पे और उसी के साथ उनको मौका मिल चुका है। अब वो जा सकते हैं टर्टल के लिए, लेकिन मीरियो वो बाधा बनना चाहते हैं। वहां पे विच जो है वो भी उनके लिए बाधा बनना चाहते हैं। वो आएंगे जरूर, लेकिन चलिए कनेक्शन बैठेगा नहीं, पीछे हटना पड़ेगा। दुविधाएं उतनी हो सकती नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। कोशिश रेटरी यूज जरूर किया, लेकिन कनेक्शन चलिए बैठ नहीं पाएगा। तो कोशिश अच्छी थी दोस्त उनकी। वैसे ऐसा है कि जब मैच ना आखिरी मोमेंट में होता है, जब अपना मतलब मैं बोला ना कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, उस टाइम रेस्पेक्ट जैसे जंगलर का रिट्री मिस होता है। मतलब वो देखने के लिए बहुत ऐसा देखने को हमेशा नहीं मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो वो आज रिट्री मिस कर रहा है मोबा रारेन के अगेंस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से वो जो थप्पड़ लगाया अप्रेजर्स रेत से और सीधा डबल किल चुराया। ये अभी फेडरिन का गेम चल रहा है पूरा। क्या कोई रोक सकेगा? क्या कैरी को वो अर्ली स्नोबॉल मिलेगा? ये देखने लायक होगा यहाँ पर। यहाँ देखिए कितने अच्छे से छुपे हुए हैं। जोजन वेट किए हैं एक मोमेंट का जब वो एरर को पकड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ा जो है लिया गया है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन।
स्ट्रैटेजी के जगह एरर यहाँ पे आए, खुद चाणक्य अभी जो है उतरे हैं फील्ड पे, तो वो कैसा खेलता है। और ये देखिए पकड़ लिया है और इसके साथ फिश की कोशिश, बॉडी स्लैम से अंदर लिया है उनको और कैरी लेंगे यहाँ पर, खून चखेंगे बदांग का, बदांग को भेजेंगे स्वर्ग के द्वार। एसएम भाई बिल्कुल, चलिए उनको स्वर्ग की सीढ़ी जरूर मिले, लेकिन एरर का आगमन उस कमाल का, चलिए वो कुछ बदलाव करवा पाएंगे नहीं, क्योंकि अब थाला खुद उछू चुके हैं। तो एरर द टेरर, लेकिन उनके सामने चलिए विविच है, वो कहते हैं ना कि रोको को रोको, तो यहाँ पे कहते हैं विविच को कौन रोक पाएगा, क्या वो थाला अपने इनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन विच वो आगे बढ़ते हुए जूजैन कमाल के साथ बू, चलिए लेकिन वो किल निकालने की कोशिश अच्छी थी, लेकिन बू के लहू पे वो खून चलिए लगा जरूर है उनको। और उसी के साथ उनका जो कॉन्फिडेंट है वो आगे बढ़ता हुआ, रारन आगे बढ़ते हुए, एरन द क्रिएटर उनको पीछे रहना पड़ेगा। यहाँ पे एरर तैयार है अपना आतंक मचाने के लिए, टेरर मचाने के लिए, लेकिन अभी के लिए 5 मिनट का समय चली हुआ नहीं है। तो वो पहले तो गोल्ड जो भी था, स्वर्ण मुद्राएं जितनी मिल रही थी वो सिक्योर की, उसके बाद टावर लेने में कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन फाइट में अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रेस्पेक्ट आ चुका है और फाइट एंगेज कर चुके हैं, एरर को घेरने की पूरी कोशिश, एरर को पीछे हटना पड़ेगा, रूडी को भी भागना पड़ेगा, रारेन को भी धराशायी किया जाएगा। एंड रेस्पेक्ट ने कमाल का आक्रोश के साथ, वो एक अटैक के साथ यहाँ पे दाव जो है वो बदल दिए। अब मैं बोलने वाला था कि जहां मैटर बड़ा होता है वहां एरर खड़ा होता है, लेकिन यहां तो रेस्पेक्ट खड़ा हो रहा है। सीधा टूट पड़े टर्टल, फाइट से पहले 2 जनों का शिकार किया, उसके बाद टर्टल का भी शिकार किया, और साथ ही साथ अभी जो है न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव क्या पूरी जो समा है, जो मोमेंटम है, उसको कहीं ना कहीं संतुलन में ले आया आईजीएन। जरूर जो तीसरी स्तंभ है ऊपरी स्तर का वो खो दिया गया है, लेकिन अभी भी वो फाइट चल रही है। ये देखिए रेस्पेक्ट बनाम रोम जो है वो रोम खड़ा कर देते हैं सबका, लेकिन आज क्या वो चल पाएंगे या नहीं। अभी देखिए एविशल एरो कनेक्ट हुआ है और इसी के साथ पीछे हटे हैं, मतलब एल्स मुझे ऐसा लगा कि वहां पे ले सकते, लेकिन कल्लेया यहाँ पर चार्ज करते हुए इरिथल एरर को यहाँ पे नीचे डालते हुए डबल किल, बदांग को मार दिया गया है, यहाँ पर अपने मास्टर के साथ खिलवाड़ कर दिया है। जरूर यहाँ पे क्रिम्सन बेकन का यूज हुआ था, लेकिन इतना डैमेज नहीं पड़ेगा बू के तरफ से टीम आईजीएन को। आईजीएन वापसी करती हुई इस मैच में, और अगर आपने तीसरा स्तर तीसरा स्तंभ उड़ाया था ऊपरी स्तर पे, तो निचली भाग पर जो है तीसरा स्तंभ उड़ा दिया है आईजीएन ने। जी बिल्कुल, वो स्तर के साथ साथ उनके फैंस की उम्मीदें भी जगी हुई। अभी भी इस मैच के अंदर रोमांच बना हुआ, ये मैच गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ। लिया जूजैन एक बार फिर आते हुए, लेकिन उछल कूद के बदले उछल कूद, पहला दाव आपका, दूसरा दाव हमारा, लेकिन मिरियो को वो किल चाहिए था, मिरियो ने वो किल निकाला है। 7 किल टीम आईजीएन के पास, जवाबी हमले में टीम एलसीएफ के पास 3 है। बैक सीट के ऊपर वो इस मैच के अंदर थोड़ा सा जरूर आए हैं, लेकिन जब शेर अपने कदम पीछे हटाता है तो एक लंबी छलांग जरूर लगाता है। क्या वो ये लंबी छलांग के लिए कदम पीछे हटे हैं, या फिर आपके सामने एक ऐसा प्राणी आया है जो आपको हटने के लिए मजबूर कर दे रहा है, उस तरह की यह सिचुएशन। लेकिन थोड़ी ही देर में एक बार फिर कछुए महाराज का आगमन होगा, टर्टल का आगमन एक बार फिर। कौन लेके जाएगा ये टर्टल दोस्त? रिवर कंट्रोल तो अपने हाथों में रखी है आईजीएन, और इसी के साथ वहां पे फाइट छिड़ गई है मिड लेन पर, लेकिन लूकस यहाँ पे बीच फॉर्म में आते हुए, और ये देखिए फिश क्रैक से उनका स्वागत किया है बदांग ने। बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ पीछे हटना पड़ेगा, डैमेज उन्होंने भी दिया है, लेकिन वेंजेंस वहां पे ऑन हो चुका है सीसी की तरफ से, वो आगमन करते हुए, लेकिन फिर से उनको रोका है। इस बार एरर का टेरर बचाया है दम, यहाँ पर केलिया के बाद दिया है सीसी का दम, ये डबल किल मिलता हुआ इन्हें, यहाँ पर ट्रिपल किल देखने को मिलेगा क्या? उससे पहले मोबर आर ने किया है यहाँ पे लूकस का देहांत, और साथ ही साथ टर्टल को भी चुराया, और तीसरे किल के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे फ्लिकर यहाँ पे खेलते हुए। एरन द गॉड पीछे हटेंगे, और इसी के साथ मध्यम स्तर का तीसरा स्तंभ टूटता हुआ। मध्यम स्तर टूटता है मतलब दिल पे वो वार लगती है, जंगल पे वो वार लगती है, जंगल पे वो एतवार होता है दूसरे टीम का। काफी हद तक ये बहुत ही बड़ा लॉस था टीम आईजीएन के लिए। टर्टल खोया, टीम फाइट खोया, और मध्यम स्तर का एक स्तंभ भी खोया। बिल्कुल, क्योंकि आप जो आपने बिल्कुल बखूबी बहुत अच्छी तरीके से कहा कि यार जब मिड लेन का टावर आप गवाते हैं ना, तो जंगल एरिया जो आप बड़ा कर देते हो अपने प्रतिद्वंदी के लिए, तो वही चीज है कि अब थोड़ा सा यहाँ पर रारैन को फायदा तो जरूर मिलेगा जिस हिसाब से खेल रहे हैं। लेकिन कल लिया सूजन एक बार फिर और रूडी को घेरा गया है अराउंड द क्रिएटर, वो क्रिएट कर सकते हैं क्या? जी हाँ, किलिंग स्प्री उन्होंने क्रिएट किया है, लेकिन द टेरर वो आतंक को ठंडा किया जाएगा।
थोड़ी देर के लिए उनको रुकने के लिए मजबूर जरूर किया जाएगा, वो सही समय पे आए, वो किल चाहिए था, किल निकाला देवी। और सचनो ये जो मुकाबला है वो कमाल का बन चुका है। ये मुकाबला जो है वो नेल बाइटिंग सिचुएशंस आपके लिए लाते हुआ, पॉपकॉर्न रेडी रखिएगा क्योंकि ये सिनेमा जो है यहीं पे दिखने वाला है आपको, क्योंकि ब्लैंक ई स्पोर्ट्स राइट्स ऑफ लेजेंड्स कमाल का ये युद्ध, ऐसे युद्ध के अंदर दोनों टीम्स अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए लड़ रहे हैं, दोनों अपने वर्चस्व के लिए, एक जीत के लिए, दूसरा स्कोर बराबरी के लिए। तो आईजीएन चलिए वो इस बार क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार दूसरे 2 मुकाबले जीते पहले 3 हारने के बाद। तो ये चमत्कार को नमस्कार ही था एसटीजी। जी हाँ, जहाँ राह है वहाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और वो राह यहाँ पे देखने को मिल रहा है आईजीएन की तरफ से। वो हार नहीं मान रहे, वो पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि इस मैच को अपना बनाने के लिए, लेकिन एरर द टेरर वहां पे टर्रेट चुरा रहे हैं। दूसरा स्तंभ उड़ा दिया है उन्होंने निचली भाग का, और इसी के साथ साथ देखिए बू वहां पर थोड़ा सा क्लियर अप कर रहे हैं, लेकिन आईजीएन वेट कर रही है लॉर्ड का। ये देखिए आ गए यमराज जी, शिव शंभू जी, कौन प्रसन्न करेगा उन्हें, कौन यहाँ पे नारियल तोड़ेगा? आपको क्या लग रहा है एसएम भाई? अभी तक तो कंट्रोल दिख रहा है पूरा एलसीएफ की तरफ से। एबिशल एरो से जोन करने की कोशिश की थी, कर भी लिए हैं, यहाँ पर रिस्पेक्ट जुड़ रहे हैं। लॉर्ड फाइट जल्दी से स्टार्ट होने वाला है फिर से, और एक एबिशल एरो बॉडी स्लैम यहाँ पर। बहुत अच्छी कोशिश थी उनकी तरफ से, लेकिन कौन नारियल फोड़ेगा? तो रिस्पेक्ट, वो अपनी टीम को क्या रिस्पेक्ट दिला पाएंगे? वो आए थे लेकिन एरर, वो अपना काम कर गए हैं। हाइपर निकाल लिया है आपने, मौका बन सकता है, लेकिन विच वो बन सकते हैं अपनी टीम के लिए वो योद्धा जो इस मैच के अंदर एक बार फिर रोमांच लाएंगे। विच को चलिए नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। दोनों टीम अपने हाइपर गवा चुके हैं। सहनशाह एमएल लॉर्ड शिव शंभू अभी भी मैच के अंदर बरकरार रहेंगे, वो अपने त्रिशूल के साथ तैनात जरूर है, लेकिन उनको प्रश्न करने के लिए कोई जाएंगे नहीं इस बार। चलिए थाला के सामने विराट थे, उस तरह की सिचुएशन स्टन लगा था एरर को, बट पीछे हटने के लिए चलिए उनको भी मजबूर किया जाएगा। जूजेन आएंगे, उनको कोशिश है एक बार बॉडी स्लैम, कमाल का परफॉर्मेंस उनकी तरफ से, शटडाउन मिलेगा एरर को, उनके टेरर को रोका जाएगा। रोम कॉम के ऊपर निगाह है, नजरे टीम एलसीएफ की, लेकिन आईजीएन के रिस्पेक्ट वो लॉर्ड को सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। लॉर्ड के पास उतनी ताकत, उतनी पावर अभी होगी नहीं, टावर इनके पास ज्यादा है, तो सवाल वो निकल के आता है यहाँ पे कि कितने टावर वो और अपनी टीम के लिए बरामद कर पाते हैं। यहाँ से मध्यम स्तर का स्तंभ क्या वो उड़ाने में कामयाबी हासिल करेंगे? क्या वो अपने लिए जंगल एरिया बड़ा करेंगे? कितने टावर, कितने किल यहाँ पे दोस्त? अभी भी आप देख सकते हो कि वहां पर कोशिश थी मतलब एरर को बचाने के लिए बू आगे गए थे। देखिए ओवर एक्सटेंशन की कोशिश की थी, यहाँ पे टर्रेट उनको मिलेगा, फिर से एबिशल एरो दिया है। एबिशल एरो यहाँ पे बहुत परेशानी कर रहे हैं, सेलिना जी को रोकना पड़ेगा, बैक लाइन को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, लेकिन कौन पकड़ेगा बैक लाइनर को? एरर द टेरर नाम सुना होगा आप सबने, उनको पकड़ना पड़ेगा वो बैक लाइनर को, उनको तहस महस करना पड़ेगा सेलिना को। उससे पहले शिव शंभू जी यहाँ पर अपने त्रिशूल गाड़ दिए हैं दूसरे स्तंभ पर, वो आगे बढ़ते हुए, ब्लेसिंग्स अभी भी ऑन है। लक्ष्मण रेखा, क्या ये रावण जी जो है वो लक्ष्मण रेखा पार कर पाएंगे? लक्ष्मण रेखा पार करने से पहले उन्हें चोट मिली है। एबिशल एरो फिर से आया है, लेकिन जो इनिवेटर, जो पेस टरेट है, उसको थोड़ा सा खरोच तो आ चुका है। कहीं ना कहीं एलसीएफ को ये खरोच लगा है। खरोच तो काफी लगी है, ये चोट भी दिल की लगी है, गहरी चोट लगी है इनको। और दूसरी तरफ प्रसन्न हुए हैं टीम आईजीएन, और उनके फैंस में खुशी का माहौल जरूर है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक अंत नहीं होता है तब तक सेलिब्रेशन नहीं होता है। तो अभी भी यहाँ पे मैच के अंदर जिस तरह से कमबैक दिखे थे टीम आईजीएन के, हो सकता है कि टीम एलसीएफ के भी उस तरह के कमबैक देखने को मिले। थोड़ी देर के लिए विलंब जरूर लगेगा, फाइट के अंदर फाइट हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट कह रहा है विलंब नहीं दोस्त, विलंब को चलिए हम नमस्कार करते हैं। अराउंड द क्रिएटर वो किल निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन रोम कॉम वो जाते हुए किल निकालते हुए, पर किस कीमत पे? खुद का किल गवाते हुए। रिस्पेक्ट ने निकाला है एरर का किल, लेकिन उनको भी मारा जाएगा। तो ये मैच बराबरी का, किल बराबरी के, लेकिन बू के ऊपर ये सिचुएशन। जूजेन एक बार फिर क्या वो दिखा पाएंगे जी इनका बॉडी स्लैम? अभी के लिए इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। 51 सेकेंड्स का समय है एक बार फिर से सहनशाह एमएल को अवतरित होने में। वो जब अवतरित हो जाएंगे तब उसके आसपास ये फाइट होती हुई कहीं ना कहीं दिखेगी। तब तक इंतजार दोस्तों, इंतजार। जी हाँ, इंतजार का फल मीठा होगा आईजीएन के लिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त दिख रहे हैं टीम एलसीएफ।
थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं और कैरी को वो मिल चुका है, वो स्नोबॉल मिल चुका है जो उन्हें चाहिए था, वो लेट गेम आ चुका है। कैरी का दबदबा भी देखने को मिलेगा टीम एलसीएफ के ऊपर, लेकिन उसको रोक सकता है एरर द टेरर अगर वो बैकलाइन में जाके उस सेलिना को पकड़ता है, उस सेलिना को खत्म करता है और उसके जो भूतिया तीर जो छोड़े जा रहे हैं, एबिशल एरो जो छोड़े जा रहे हैं, उसको रोक सकता है। के बाद मजा आ जाएगा क्योंकि वो बहुत दिक्कत दे रही है अभी तक। जितने भी टीम फाइट्स अगर आप देखोगे, सेलिना को मारना मुश्किल हो रहा है और वो एक ही बार मरी है। 9 असिस्ट 219 विच अपना गेम प्ले दिखाते हुए, जैसे आपने बोला विराट कोहली यहाँ पर थला को रोक रहे, तो थला को यहाँ पे स्टंप करना पड़ेगा, विराट कोहली को मैदान से निकालना पड़ेगा, वरना जो रन चेज है, जो ये कम बैक चेस कर रही है आईजीएन, वो हो जाएगा उनकी तरफ से और हम 7वां मैच की ओर चले जाएंगे। और एलसीएफ ये कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, क्योंकि अभी भी दबदबा आईजीएन के ऊपर है, लेकिन इस मैच को चुराने के लिए उन्हें शिव शंभू जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, उन्हें शिव शंभू जी के साथ उस बेस की ओर जाना पड़ेगा और फिर उस बेस को तबाह करना पड़ेगा। अभी वो जो राह चाह वाली बात थी ना, अभी वो एलसीएफ के ऊपर ज्यादा आ रही है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ओपन पॉइंट उनको नहीं मिल रहा है, वो खुला हुआ रास्ता उनको नहीं दिख रहा है जहां पे वो वार कर सके, जहां पे वो अपना जो रणनीति है वो चला सके। लेकिन अभी भी कोशिश चल रही है आईजीएन की तरफ से। देखते हैं, लॉर्ड डांस शुरू हो चुका है, कौन लेता है, कौन प्रसन्न करता है शिव शंभू जी को, सब वही वेट कर रहे हैं, सब उसी चीज का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जरूर एक फाइट देखने को मिलेगा, कौन जीतेगा वो फाइट। बिल्कुल, जैसे आपने कहा 7वें नंबर की तरफ मैच जाएंगे तो फिर तो यार थाला फॉर रीजन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या वो रीजन तक पहुंच पाएंगे वो भी सवाल है, क्योंकि अब लॉर्ड डांस के आसपास टीम एलसीएफ जो है वो मंडराती हुई दिख रही है। दोनों टीम आ चुकी है सहनसा एमएल के इर्द गिर्द, वो आरती के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए दोनों टीम्स आएगी। लेकिन वो कहते हैं लास्ट हेड कौन लेके जाएगा, क्या घिरने में कामयाब हुए ज़ूज़ैन, कमाल कर दिखाया यहाँ पे। अरॉन द क्रिएटर एक और किल निकालने में कामयाबी हासिल करेंगे। वो अपनी टीम की उम्मीदें अभी भी जगाए रखना चाहते हैं। ज़ूज़ैन का किल उन्होंने निकाला है, बट रिस्पेक्ट के पास वो मौका है रटरी का, बट यहां से वो हीरो अपना योद्धा गंवाना नहीं चाहेंगे। थोड़ा सा इंतजार और रहेगा, कमाल एफर्ट्स थी उनकी तरफ से। अरॉन द क्रिएटर वो किल निकालने में कामयाबी हासिल कर चुके थे, बट आप गेम देखिए, यहाँ पे किल के बदले किल, मृत्यु के बदले मृत्यु वाला काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों टीम्स एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आप कैरी का पोजीशंस देखें, अराउंड द क्रिएटर का पोजीशन देखें, वो तो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके चंगुल में कोई आए, उनके इर्द गिर्द जो कोई है वो फंसते हुए दिख जाए, फिर जो है वो मजा चखाए उनको। लेकिन चलिए, लॉर्ड की आराधना करना स्टार्ट कर चुके हैं टीम एलसीएफ। थोड़े ही समय में उनके साथ टीम आईजीएन भी जो है जुड़ते हुए दिखेंगे। ज़ूज़ैन आ रहे हैं, उनकी निगाह नजरें किनके ऊपर रहने वाली, लेकिन इस बार उनको कमाल का स्टन देखने को मिला रूडी की तरफ से। क्या वो हिट लगेगा, लेकिन एरर ने लास्ट हिट निकालने में कामयाबी दिखा दी है। यहाँ पे मीरियो ने बू का किल निकाल लिया यार, द क्रिएटर ने रोम कोम का। एक बार ज़ूज़ैन कोशिश करना चाहते थे, बट एचपी उनकी कम, पीछे उनको हटना पड़ेगा। लॉर्ड आपने जीता है, बट किस कीमत के ऊपर, 2 योद्धा गंवाने के बाद एसटीजी। एक बंदा अभी भी खड़ा, एक बंदा अभी भी होप दे रहा है अपने टीम को। लॉर्ड चुराया इस बार, शिव शंभू जी को प्रसन्न किया एरर जी ने। और इतना ही नहीं, वहां पे नारियल तोड़ने के लिए ज़ूज़ैन आए थे, लेकिन ज़ूज़ैन को भी रोका था उन्होंने। साथ ही साथ शिव शंभू आगे बढ़ते हुए, क्यारी का जोरदार वाला डैमेज पड़ रहा है शिव शंभू जी को, और वो प्रसन्न करने में माहिर भी हो जाएंगे बहुत पहले, मतलब स्तंभ को छूने से पहले ही वो प्रसन्न कर दीजिए, कर लेंगे। देखिए आईजी ने कर भी लिया है प्रसन्न उन्हें। वर्तमान जो है वो बहुत मैटर कर रहा है आईजीएन के लिए, वो कोशिश बहुत कर रही है इस मैच में अपना बेस्ट देने के लिए, और वो दे भी रही है। लेकिन एक बंदा उनके सामने खड़ा है, एलसीएफ का एरर, जो चाणक्य है उनका, जो सोच रखता है उनके लिए, वो अभी मैदान में उतरा है। और वो मैदान में उतरा है तो वो कुछ करके दिखाना चाहता है, और वो दिखा भी रहा है इस मैच पे। देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भी देखिए वो काफी हद तक पीछे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कहाँ एक मोमेंटम मिले और हम लोग अटैक करें। लेकिन यहाँ पर अगर जीतना है आपको बैकलाइनर को मारना पड़ेगा, आपको कैरी और सेलिना को पहले डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप इजीली इस मैच को जीत सकोगे, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई होगा नहीं जो पीछे से डैमेज दे सके या फिर स्टन कर सके। बिल्कुल, बात तो आपने सही कही, लेकिन 18 मिनट का समय हो चुका है, तो गियर अप, इक्विपमेंट, आइटमाइजेशन जो है वो दोनों टीम्स की ऑलमोस्ट फुल होने वाली है। तो अब जो खेल है वो रह जाएगा गलतियों का। कहते हैं दोस्त, एक गलती और मैच यहाँ पे पलटी। अब गलती कौन करता है वो समय के साथ पता चलेगा, देखना बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अब 17 सेकेंड्स 70 अभी बचे हैं 65।
उसके बाद जो है लॉर्ड आएंगे, वो इवॉल्व रौद्र अवतार सर्वनाश करने की ताकत रखेंगे वो इस युद्ध भूमि को। तो कौन उनको प्रसन्न करने में कामयाब हो पाएगा, वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे देखने में के लिए मिलेगा। लेकिन वो जो रौद्र अवतार वाला लॉर्ड आएगा ना दोस्त, क्या उसको डिफेंस करने के लिए किसी के पास पावर है? क्या उनका वो रुद्र अभिषेक करके उनका प्रकोप को रोकने की क्षमता यहाँ पे रखता है? कोई होगा जरूर वहां पे विष्णु, जो वो करने के लिए शाखित होंगे। और ये आप एक चीज देख रहे हो कि आईजीएन इस गेम को जानबूझकर लेट ले रही है, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास लेट गेमर है, उनके पास कैरी है, वो डैमेज दे सकते हैं, वो टैंक किलर है, वो इजीली बदांग और फोबियस और फेडरिन को तहस महस कर सके, इसीलिए वो लेट गेम के लिए जा रहे हैं। लेकिन एरर अकेले वो शेर पे हुए सवार बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए यहाँ पे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको सेलिना को रोकना पड़ेगा, आपको बैकलाइनर को तहस महस करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ देखिए, जो रुद्र अवतार की बात कर रहे थे एसएम भाई, महाकाल अभी आ चुके हैं अपना काल दृष्टि डालने के लिए। तो क्या होगा, क्या इस काल दृष्टि से एलसीएफ तबाह होगी या फिर आईजीएन को एक नया जीवन मिलेगा? उसी के साथ देखिए लॉर्ड डैन स्टार्ट हो चुका है। जोजेन बहुत पीछे खड़े हैं, शायद कुछ सोच रहे हैं, लेट में एंट्री करेंगे। लेट एंट्री करने के बाद वो जो क्राउड कंट्रोलिंग दिखाएंगे वो देखने में मजा आ जाएगा। फाइट यहाँ पे शुरू हो चुका है, वेंजेंस ऑन हो गया है, लेकिन पीछे हटेंगे। यहाँ पर जोजेन अटैक करने की कोशिश किए थे, फिश टैग से स्वागत किया है, उनका अटैक गूंद दिया है। रोम को आगे बढ़ते हुए जोरदार वाला डैमेज देते हुए यहाँ पे कालिया का जो है शिकार कर लिया है। रोम कोम को भी जाना पड़ेगा स्वर के द्वार, डबल किल। राहु भाई ये क्या हो गया यहाँ पर, लूकस को जाना पड़ेगा स्वर के द्वार लॉर्ड के फाइट के बीच। तीसरा लॉर्ड, महाकाल की बात हो रही थी और जंगलर ही नहीं है, रिट्री नहीं है। एसएम भाई क्या ये खत्म है? देखिए देखते ही देखते यहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन एरॉन द क्रिएटर, सबकी निगाहें सबकी नजरें उनके ऊपर। वो सवाल, क्या एरॉन द क्रिएटर अभी भी अपनी टीम की उम्मीदें जगाए रखेंगे? क्या वो ये इवॉल्व लॉर्ड को, क्या ये रौद्र अवतार वाले लॉर्ड को डिफेंस करने में कामयाब हो पाएंगे? वहां पे जूजैन कोशिश अच्छी कर रहे थे, वो घेरना चाहते थे, लेकिन काबिल तारीफ गेम प्ले वहां पे देखने को मिला। और रूडी की तरफ से उनको घेरा, उनकी टीम का सही समय पे वहां पे हेल्प मिला। वो कहते हैं ना कि एक हाथ की पांचों उंगलियां जोरदार समय पे इकट्ठा हो गई। एक ताबड़तोड़ जो मुक्का है ना वो लगाया है, क्योंकि उस मुक्के के अंदर रिस्पेक्ट फंसे, रिस्पेक्ट मिल गई। फिर यहाँ पे टीम एलसीएफ को लॉर्ड मिल चुका है इवॉर्ड, बट उन्होंने लॉर्ड को चलिए छोड़ दिया है। प्रायोरिटी रखना चाहते हैं कि वो टावर जितने जल्दी हो सके निकाले जाए। वहां पे एरर जा रहे हैं टॉप लेन की तरफ, ऊपरी लेन की तरफ वो चाहते हैं कि टावर निकालें। बॉटम लेन से छोड़ दिया है लॉर्ड को, मिड लेन से रूडी आगे बढ़ते हुए। और कितना आगे जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड की एचपी जो है वो काफी ज्यादा है। जूजैन आगे आए, वो कोशिश करना चाहता है, लेकिन रॉम कोम उनको रोकने में कामयाबी हासिल करेंगे। मीरियो वो कोशिश कर रहे हैं लॉर्ड को जितना जल्दी हो सके रोक ले। लॉर्ड जो है अब ऐसी सिचुएशन पे लाके रख देंगे टीम आईजीएन को। क्रिस्टल जो है वो ओपन रहेगा। अब बॉटम लेन से जाते हैं तो क्रिस्टल तक सीधा पहुंच जाते हैं, टॉप लेन से जाते हैं तो भी उनका गढ़, उनका जो किला वो बचा है। तो अब तक का पलट थोड़ा सा हुआ है टीम एलसीएफ की तरफ से, कि वो विन परसेंटेज की बात करें तो 60-40 का सिचुएशन हो चुका है। अब ये मैच कमाल का है, मजेदार ये मुकाबला है। वो कहते हैं कि एक गलती और मैच पलटी। अब कौन करेगा गलती, वो देखने में काफी मजा आने वाला है। कहेंगे चमत्कार को नमस्कार। अब तक चमत्कार आईजीएन का था, पर वो चमत्कार पे क्या तमाचा मारने में कामयाबी हासिल करेगी टीम एलसीएफ। सुंदर सा प्रयोग किया लेन प्रेशर का। अगर आप बात करोगे तो एरर ने वहां पर टॉप लेन जाके पुश किया, तो लेन प्रेशर वहां पे डाला गया। उन्हें पता है कि लॉर्ड को मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये लुमिनस लॉर्ड था। तो लॉर्ड ने जो है इजीली इनोवेटर ले लिया। अब इससे बीच का एक स्तंभ खड़ा है, और ये बीच का एक स्तंभ जो है ना, ये आखिरी उम्मीद के जैसा खड़ा है आईजीएन के लिए, क्योंकि ये स्तंभ बहुत मायने रखेगा उनके लिए अभी भी, क्योंकि और एक लॉर्ड आने वाला है। कौन इस लॉर्ड को अपना बनाएगा देखने के लिए अभी भी हम लोग बेताब है उसके लिए। एलसीएफ आगे बढ़ रही है, अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आईजीएन पीछे हट रही है। उन्हें पता है अभी अटैक नहीं करना है, लेकिन जोजेन आगे बढ़ते हुए अभी भी इमोर्टलिटी उनके हाथों में। ब्लडी स्लैम मार दिया है उन्होंने, और उसी के साथ ये टीम फाइट का जो आगाज है वो कमाल का है। रूडी को चलिए नमस्कार कीजिए। रूडी काफी अच्छी कोशिश है, लेकिन एरॉन द क्रिएटर वो क्रिएट करते हुए अपनी टीम के लिए सपना, वो क्रिएट करते हुए अपनी टीम के लिए उम्मीद। रोमकोम आगे जाते हुए एरर के पास वो मौका बन सकता है,
लेकिन बू को वो खून लगा है, बू ने वो किल निकाला है। जुजैन का किल यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनके लिए, लेंटिन की ताकत दिखाना चाहते थे बट बचने में वो कामयाब हो जाएंगे। 4 योद्धा उनके, मीरियो यहाँ पे है नहीं तो उनकी टीम से डिफेंस करने के लिए कोई मौजूद होगा नहीं। ये अंत है क्या? ये क्या टीम एलसीएफ विजय रथ आगे लेके जा रही है? ये गेम देवी और सजनों कभी भी अंत हो सकता है। जुजैन आगे आते हुए एरर ने मेगा किल निकाल के मेगा मुकाबला खोल दिया अपनी टीम के लिए। वो विच का किल निकाला है उन्होंने, वो निर्णायक किल हो सकता है उनका। एरॉन द क्रिएटर, एरर द टेरर दोस्त, ट्रिपल किल उनका। वो रिकॉल नहीं था, वो था विजय गर्जना। ये थी एक चैंपियन की दहाड़। बन चुके हैं वो मोबा लेजेंड्स 5v5 कि सर्वश्रेष्ठ टीम का जो खिताब होता है, नंबर 1 टीम का जो खिताब होता है, वो लेके जाते हुए राइज ऑफ लेजेंड सीजन 3 के अंदर टीम एलसीएफ। कमाल की बारी। जहां बैटर बड़ा होता है वहां एरर द टेरर खड़ा होता है, और आज एरर द टेरर खड़ा होके दिखा दिया वहां पे कि मैं क्या कर सकता हूं। अकेले खड़े हुए, मैच एक टाइम पे पलट चुका था लेकिन उस मैच को, पलटी हुई मैच को भी पलटाया उन्होंने, और साथ ही साथ सिर्फ लॉर्ड नहीं बल्कि आईजीएन के उस स्तंभ को तोड़ा, उनके गुरूर को तोड़ा, और साथ ही साथ उनके वो जीतने की ख्वाहिश को भी आज तोड़ा है उन्होंने। एक छोटी बात करूंगा, मतलब अपना हीरो खेलना चाहिए, रेस्पेक्ट। यहां पे अगर जंगल अपना एसिन हीरो के साथ जाते तो कहीं हद तक अच्छा रहता वो मैच, क्योंकि वो लूकस है, उनका डैमेज बहुत अच्छा था, वो बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन आखिरी मोमेंट में जो है आपने देखा वो उनके हाथ से फिसलता गया, क्योंकि वो लॉर्ड फाइट के लिए जा नहीं पाए, क्योंकि वो हमेशा हम उन्हें देखते हैं वो सुयू असिन हीरोज के साथ जो है वो आगमन करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लूकस लिया। मैं मानता हूं, रेस्पेक्ट, वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के नहीं, इंडिया के टॉप 3 जंगलर में से एक जंगलर है, लेकिन आज वो काम नहीं दिया क्योंकि सामने थला खड़े थे, जैसे कि आपने बोला एरर द टेरर खड़े थे। रूट्स भाई आ चुके। रूट्स भाई क्या बोलेंगे आप? मैच कैसा लगा? क्या हुआ गलती टीम आईजीएन की तरफ से? इतनी अच्छी पोजीशन लाई थी आईजीएन, इतना अच्छा मैच खड़ा किया था अपने लिए, लेकिन 2 लुमिनस लॉर्ड और फिर बात खत्म। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एलसीएफ ने कर दिखाया, एक और बार दिखा दिया कि वो फिर भी लाइनअप बदल के भी इंडिया की सर्वश्रेष्ठ टीम जरूर कहला सकती है। एंड इसी के साथ आईजीएन के जो सपने थे कि वो एक कमबैक लाएंगे, अपनी लेगेसी फिर से बनाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, उन सबको पानी में जरूर डाल दिया। एंड इसी के साथ हम देख सकते हैं कि एलसीएफ बन चुकी है आज के अनडिफीटेड चैंपियन राइज ऑफ लेजेंड्स सीजन 3 के। एंड जो आपने बोला एसटीजी कि हाँ डेफिनेटली अगर रिस्पेक्ट अपने रिस्पेक्टेबल हीरोज खेलते, अपने असासिन्स खेलते, ऐसी जो पिक ऑफ कॉम्बिनेशन हमने देखी थी सलीना के साथ, तो शायद थोड़ा बेटर होता, क्योंकि जो मेन कहानी रही यहाँ पे दैट वाज कि उन्होंने क्लोज नहीं किया मैच को जब उनको करना चाहिए था। एक टाइम पे वो लोग काफी आगे थे, इनफैक्ट उनके पास 8K की गोल्ड लीड थी, उनके पास किल्स बहुत ज्यादा थे एलसीएफ से, एंड वो मैप पे भी डोमिनेंस अपना दबदबा बना के रखे थे। तो इसीलिए शायद कभी ना कभी हमें लगता है कि जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, उस पे आपको अपना वो रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, अपने आप पे भी बिलीव रखना चाहिए और उसी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। पर आईजीएन ने काफी अच्छी वापसी की। एसएम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा था आईजीएन का एफर्ट एंड एलसीएफ ने कैसा दिखाया अल्टीमेटली कि वो किंग्स कैसे है? देखिए, एफर्ट्स के लिए तो पूरे मार्क्स है। वो कहते हैं कि या तो आप जीतते हो या तो फिर आप सीखते हो। तो चलिए, सीख तो वो उनके पास यार काफी कुछ भरा पड़ा है, उनके जो पिटारे के अंदर सीख तो काफी सारी भरी पड़ी है, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हारना भी जरूरी होता है। तो आज उन्होंने एफर्ट्स काफी डाले हैं। बट टीम एलसीएफ, चलिए, कमाल का गेम प्ले उनकी तरफ से। आईजीएन की तारीफ वहां पे करनी पड़ेगी कि लगातार 3 मैच हारने के बाद कमबैक करना एक अपने आप में बड़ी जीत है, क्योंकि उस समय पे आपका जो मनोबल होता है ना, वो काफी टूट चुका होता है, बिखर चुका होता है। बट वहां से जो परिवर्तन करना, वहां से जो बदलाव करना, लगातार 2 मैच जीतना, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि तख्ता पलट हो गया जब वापस एंट्री मारी चाणक्य ने, जब एंट्री मारी एरिड द टेरर ने, तब आतंक आया, एक भूचाल आया। एंड लास्ट में जब वो कमाल की फाइट थी, आईजीएन लास्ट तक यही लग रहा था कि आईजीएन जीत रहे हैं, आईजीएन जीत रहे हैं, ये मुकाबला एक बार फिर आईजीएन के पास जाएगा, 3-3 का स्कोर हो जाएगा। बट वो
अंत में जाते-जाते जो तख्ता पलट किया है, वो पकड़ा वहाँ पे सीसी को, फिर वो सीसी को नहीं पकड़ा, वो गेम को पकड़ लिया। वो वाली सिचुएशन वहाँ पे उनके लिए आ गई कि फिर जो 4 योद्धा है ना, वो बस देखते ही रह गए क्योंकि सीसी आपके आगे जाके वेंजेंस के साथ डैमेज ले रहे थे, तो अच्छी कोशिश हो जा रही थी कि फिर किलिया वहाँ पे आ रहे थे उठा के, वो जोजेन है, उठक-पटक कर रहे थे, अच्छी खासी कोशिश हो रही थी। लेकिन चलिए, एक अच्छा गेम प्ले, मज़ेदार गेम प्ले, देखने में काफ़ी मज़ा आया, दर्शकों ने भी काफ़ी मज़ा किया। तो एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट मुकाबला था, क्योंकि चलिए ज़रूरी वही होता है कि एक अच्छे मुकाबले के साथ एंटरटेनिंग होना चाहिए। जी हाँ, एंटरटेनिंग तो बहुत था। आई थिंक आज के दर्शक जो अभी भी हमारा मैच देख रहे हैं, रात के 12:45 बजने वाले हैं, एंड अभी भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, तो जरूर एंटरटेनमेंट तो पूरा मिला होगा। एंड पैसा वसूली की बात तो ना ही करें, क्योंकि ये था पूरा आपके लिए बिना किसी हस्त कष्ट के। एंड इसी के साथ आई थिंक एक जो रूट मेजर भाई मुश्किल की बस एक आईजीएन ने, वो थी कि उन्होंने बार बार कालिया के साथ सुनामी जो मारी, वो एक वेंजेंस हीरो पे मारी और किसी और पे नहीं। तो यही शायद आईजीएन की दिमाग में एक चोट जरूर रहेगी, पर उन्होंने एक वैलियंट एफर्ट डाला कम बैक करने के लिए। फिलहाल के लिए आज के विजेता एलसीएफ जरूर रहेंगे लक्ष्मी चिट फंड अपने राइज ऑफ लेजेंड सीजन 3 के। एंड इसी के साथ मैं रूट आगे बढ़ भाई देना एक चाहूंगा चीज अपने शिनरू भाई का। हाँ जी एसटीजी भाई, आप बोलिए। फिलहाल वो मैं शिनरू भी हमें वो ज्वाइन मैं करने एक वाले चीज हैं। देख रहा था, मैंने एरर भाई के लिए मतलब उनकी गेम परफॉर्मेंस के लिए, उनकी जो एमवीपी के लिए उन्होंने बोला था कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के लिए, फेदर आर्केडिया के लिए, और आज वो ट्रेलर दिखाएंगे। तो आज उन्होंने ट्रेलर दिखाया था। बस उनके लिए दो शब्द है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसपे उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। और आज वो जीत की गूंज जो है एलसीएफ ने यहाँ पर ऐलान की है, और कल से प्लेऑफ स्टार्ट होने वाला है फेदर्स आर्केडिया का, वहां पे भी देखने को मिलेगा एलसीएफ की गूंज। लेकिन आईजीएन, हार से ज्यादा और कोई भी चीज नहीं होती है जिससे आप ज्यादा सीख सकते हो। जीतने से तो इतना आप सीख नहीं सकते, हार से जितना सीखने को मिलता है ना, वो कहीं और से सीखने को नहीं मिलता। लेकिन जरूर आप भी भारत के सबसे अच्छी टीम में से एक टीम हो, जरूर कभी कभार हो जाता है, दिन अच्छा नहीं होता है, पल अच्छा नहीं होता है। तो आज वो दिन अच्छा नहीं था, पल अच्छा नहीं था, लेकिन हमें अभी भी आप सब पे बहुत भरोसा है। खास करके मेरे फेवरेट एमएम प्लेयर जो कि एरन द गॉड है, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनके जैसा ग्रेंजर प्लेयर कोई है नहीं, और आज वो मौका मिला मुझे कि स्टार्क टीजी का ग्रेंजर और एरन द गॉड का ग्रेंजर देखने को मिला, एक साथ अगेंस्ट में देखने को मिला। बहुत ही मजा आया। इसी के साथ साथ मैंने बहुत टाइम खा लिया यहाँ पे। शिनरु भाई, आपको मुबारक हो आपकी होस्टिंग, प्लीज आ जाइए, संभाल लीजिए यहाँ पर। जी हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि इन सब के पीछे जो थे, वो उनमें से कुछ चुनिंदा स्टार्स जो थे, उनमें से एक है शिनरू, एक है गॉड्डा, एंड एक है हमारे प्राइम। एंड बाकी बहुत सारे मेंबर्स जरूर थे हमारे पीछे, जो बैक स्टेज में बहुत काम किए। अभी के लिए उनमें से एक को जरूर बुलाएंगे। शिनरू, कैन यू कम अप ऑन द स्टेज एंड गिव अस अ फ्यू वर्ड्स ऑफ योर ओपिनियंस। यो, थैंक यू सो मच। फिलहाल तो अभी यहाँ पे हिंदी बहुत चल रहा है, देखने में तो वही दिख रहा है अभी। एसटीजी भाई का हिंदी सुन के बहुत ही सब लोग मस्त है चैट पे, और एसएम भाई का तो कमाल ही है, उनको तो कुछ बोला नहीं जा सकता। और रूट्स को तो भाई, दो शब्द आपके लिए भी भैया, बहुत ही बढ़िया था आपका कास्टिंग, बहुत ही मजा आया आपका होस्टिंग सुनने पे। बट फिलहाल यहाँ पे एसटीसी का फेवरेट प्लेयर जो है, वन ऑफ द बेस्ट गोल्ड लेनर इंडिया पे, एरर द टेरर को दिखाया जा रहा है। तो ऐश, कुछ कहना चाहोगे तुम? वो देखने के लायक है, क्योंकि आप देखोगे तो ये मैच जो है 1v5 क्लच किया है उन्होंने। अगर आप देखोगे एक टाइम ऐसा था जहां पे आईजीएन जीतने के लिए कगार में थी, हम भी सोच रहे थे आईजीएन जीत रही है, लेकिन एरर बने रहे अपने टेरर के साथ। और मतलब पहले से मैं बोला था ना, जहां मैटर बड़ा होता है वहां एरर खड़ा होता है। जोजेन आके खड़े होने की कोशिश किए थे, लेकिन उनको ढकेल के एरर फिर से उस जगह पे खड़े हुए। तो आपने देखा वो क्लच जो था, पहले सीसी को निकाला फाइट से, उसके बाद लॉर्ड को चुराया, उसके बाद मैच को चुराया आईजीएन के हाथों से। तो वो एक मैटर ऑफ सेकंड्स की बात है, लेकिन वो दिमाग चाणक्य का चल रहा था। एक चाणक्य एवीएम में बैठा है, एक चाणक्य एलसीएफ में बैठा है। इन चाणक्य को पहले आपको रोकना पड़ेगा अगर आप इन टीमों को हराना चाहते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड देखो, मेरी हिंदी उतनी भी खास नहीं है, तो मैं इंग्लिश पे स्विच करने वाला हूँ। सॉरी गाइस। सो लाइक बिफोर आई
wrap up the entire thing, I really want to give a huge round of applause and even a huge round of thanks to each and every caster that was present here tonight. I mean, your contribution, your time, and your effort in making this event a much more impactful as well as more successful will not be forgotten. You guys have been wonderful addition to our team, and thanks to each and everyone on behalf of the entire Blank Esports family. I know the rest of the members are not here, but and I'm doing this on the behalf of everybody else. And even to all our lovely viewers, it was amazing. We had some kind of problem with the viewership in the between, but at the very end, we almost had 160 plus viewers. And props to all the caster for able to bring out that kind of viewership. So as well, and guys, it's with a heavy heart that we have to come to a close for this event and this tournament. However, we gotta give a big round of applause to the winners. That is gonna be Team LCF, and of course, the runners-up for this tournament was Team IGN, who had put a valiant and an amazing effort. So I think it's just like a very big congratulations to them. It's just a bit of tiny glitch you can see, guys. There is yeah, that now it's fixed. There's a magic that happens, and there's Team IGN as the runners-up, of course. Aaron the Creator, Rich, Respect, Zauzen, and Mirio. Amazing players, amazing set of talents. They have successfully reached the finals and showed us why they belong there and why they are one of the top teams in India. However, the main star of tonight would be Team LCF, the champion, your Rise of Legends rulers for tonight and for this season are gonna be Miraka, Stark, TZ, Boo, Raren, Rudy, and Romcom, along with Error, who also joined in as a sub for this match. So props to them and congratulations to each and every one of those players. And guys, of course, this tournament would not have been successful without our, sponsors. That is going to be Vista Gaming and us as well. The rest of the people who have collabed with us. That is Yama Esports as well as NXM Gaming Association. So a big round of applause and a big shout out to them as well. And of course, Blank Esports who have brought you this entire event. A huge you know success for them as well to be able to bring out such caliber tournaments. So with that, guys, we have to come to an end to what we have started. It had been a long night. There were some things that worked pretty well for us, and we are absolutely, startled and also happy that we reached here. And of course, it wouldn't have been a success without you guys. So thank you for joining in. And I guess my friend Roots have something to say before we wrap up, isn't it, Roots? I always have something a little bit to say. Well, to be honest, this is a dominance performance by LCF Lakshmi Chit Fund. Congratulations, you have once again proven to be the best team in India, and I think you are very well on your goal to reach the WFA finals and probably win it. But for now, I would like to thank everyone of the audience, everyone of the casters, everybody who has in some way supported us on our journey in big or small quantities because you are making dreams happen. You see these players are on the stage because of you guys. You see us, you hear our voices because you guys are supporting us. So keep the support rolling if you want bigger and better things to happen in esports. If you are a fan or if you are a player who wants to make it big, this is the opportunity. Thank you. Our heartfelt thanks to every one of you who joined in on the way. And definitely, this is just going to be a normal goodbye, but we are going to see you once again in another tournament, in another format, or maybe this is just going to be the Rise of Legends season 4 as well. Maybe, I mean, that's a spoiler. But till then, Man. we are going to see you. So, Absolutely, Shinra, man. Roots. Shin Yu, are you going to close it Mhm. out? Exactly. This is not the end. This is gonna be start of more amazing things because this things like this stage just gets bigger and better with each passing season. And of course, I just forgot about one very important person to whom we pay our heartfelt reverence, and he's the man who had been there from the day one. And without him, I guess a lot of people would not have been gathering here how we have. So it's gonna be God of Death, of course, the leader of Yama Sports, who has brought this
entire family together. So a Oh huge, yeah. props to him as well. Of course, we are, indeed thankful to him for being there, always supporting us, helping us, guiding us all the way for each and everything. So, guys, with that, a big shout out to Justin J4. He had been amazing throughout this, entire season. He had been streaming for 6-7 hours non-stop. Like, give that man some raise, guys. We need to talk to our team. Yes, Ash. So Even in casting. yes, even he was like part of the casting when the casters were like a bit behind on the schedule. So he had been doing each and everything. So a big shout out to him as well, and of course Jojo Edits for editing this entire thing, and of course the talents whose voices you have been hearing. I don't want to name anybody individually, but each and everyone, you know who you guys are. Amazing job. Thank you for joining in and being a part of the Blank family. And with that, guys, we will be coming to an end. Do stay tuned for the next season. Don't forget, don't miss out for the next season. Be there, be part of this amazing journey that we have started from season 1, and we are gonna end season 3 today here. But it's gonna be just a small goodbye, like Root said, and we'll be back with more action, more amazing set of tournament for you guys. So stay tuned and see you guys in the next season. Take care of yourself.